on epics of India. Indian epics like the Mahabharata and the Ramayana have shaped our cultural, literary, and philosophical thought for centuries. And this session will explore their grandeur, their impact across different linguistic traditions, and how oral storytelling has preserved and transformed them over time. We are honored to have amongst us Shri Gopal Bandhu Mishra ji as the chair guiding this discussion. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आप प्रोफेसर हैं. आपकी संस्कृत में 8 पुस्तकें, एक यात्रा वृत्तांत और 3 उपन्यास प्रकाशित हैं. इसके साथ ही आपके 39 शोध पत्र तथा विभिन्न पुस्तकों में शामिल 6 अध्याय भी प्रकाशित हैं. He has also edited 11 books, 4 Sanskrit short stories, a collection of 16 short Sanskrit plays, and translated 3 books into Sanskrit. The Hindi translation of his travelogue was published in 2019. आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं. हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गोपाल बंधु मिश्रा जी, आइए. इस सत्र में गोपाल बंधु मिश्रा जी, बहुत-बहुत स्वागत. बाल गणपति देवरकोंडा भी हमारे इस सत्र में अपने पेपर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अभी हमारे बीच वो उपस्थित नहीं है. तो जैसे ही आते हैं मंच पर हम उन्हें आमंत्रित करेंगे. हमारे साथ हैं श्री महेंद्र कुमार मिश्रा जी, प्रख्यात लोक साहित्य विशेषज्ञ हैं. डॉक्टर मिश्र को ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार से वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय पुरस्कार और कलेवाला संस्थान फिनलैंड के कलेवाला पुरस्कार प्राप्त हुआ है. He is the author of Oral Epic of Kalahandi and Ramakatha in Oral Tradition of Odisha. In 2023, UNESCO's International Mother Language Institute in Dhaka, Bangladesh, has conferred International Mother Language Award 2023. He is a National Advisor to MLE in Language and Learning Foundation, New Delhi. Shri Mahendra Kumar Mishra ji, आपका अभिनंदन. Joining us on panel is also Professor Seema Sharma, मुंबई विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं. Her areas of interest are American literature, African American literature, post-colonial literatures, translation studies, and Indian mythology, and she has published extensively in these fields. She has translated and published critical and creative works from Hindi into English. Her book, Articulating Resistance in African American Slave Narratives, was published in 2011. Seema Sharma was a Fulbright postdoctoral scholar at Stanford University. Seema Sharma ji, we welcome you on the dais. और सत्र को आरंभ करने के लिए मैं हमारे माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाबंधु मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ. वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित साहित्योत्सव के इस प्रसंग में राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय भारतीय साहित्यिक परंपराएं, विरासत और विकास, हेरिटेज एंड इवोल्यूशन,
इस विषय में इस सत्र में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साहित्य अकादमी की ओर से हमें इस प्रकार अवसर प्रदान किया गया। गौरव के साथ उत्तम विचार के लिए एक मंच प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए साहित्य अकादमी के अधिकारी और सभी जिसमें संलग्न हैं, कई अत्यंत श्रम और निष्ठा पूर्वक, उनको सभी को धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। हमारे साथ आज अभी विद्यमान दो वक्ता हैं, श्री महेंद्र कुमार मिश्र जी और सीमा शर्मा जी। एक वक्ता की प्रतीक्षा है, जब समय पर आ जाएं तो उनका भी स्वागत हम करेंगे। इसमें उपस्थित सभी कुलपति कालड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय की उपस्थित हैं और कुछ सुपरिचित नहीं है, लेकिन सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये जो महाकाव्य है, जिसको एपिक्स कहते हैं, महाकाव्य, इसमें महान शब्द है। यह महत्ता क्या है? जिस महत्ता के कारण ये दो महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण आदि काव्य और महर्षि व्यास रचित महाभारत, दो पूरे युगों में सभी साहित्यों को तथा संपूर्ण भारतीय जीवन को प्रभावित किया और उपजीव्य बने। उपजीव्य अर्थात जो दूसरे को जीवित करते हैं, उपजीव्य हैं। न केवल साहित्यों को, अपितु पूरी भारतीय जीवन पद्धति को, भारतीय संस्कृति को, और यूं कहा जाए तो उसके माध्यम से पूरे विश्व की संस्कृति को एक दिशा दर्शाई। तो इसकी महत्ता क्या है, जिसको संक्षेप में हम कह सकते हैं, महत्ता के बारे में मनुस्मृति में कहा है कि यह केवल पुराना है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। मनुस्मृति में कहा है कि न हायनैः न पलितैः न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयः चक्रे धर्मम। अधिक वर्ष गुजर गए, वृद्ध अधिक हो गए, अथवा अधिक वित्त मिल गए, अथवा अधिक बंधुजनों का समागम हो गया, इससे कोई महत्वपूर्ण और महान नहीं बनता है। अपितु योनुचान सनो महान, जो अनुचान है वही महान है, जो ज्ञान विज्ञान से पूर्ण है वही महान है। काव्य कवि की रचना है और महाकाव्य की जो महत्ता है वो कतिपय काव्यों के साथ जुड़ता है। रामायण और महाभारत दोनों उसमें सम्मिलित हैं। इसमें महत्ता इनकी अनुचानता में है, अर्थात ये दोनों पूरी मानव सभ्यता को, पूरे विश्व को एक मानकता का प्रसंग दर्शाने वाले हैं। इसलिए इनकी महत्ता यह विचारणीय है, जो इतने युगों से, इतने समय से अभी भी हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। रामायण को कहते हैं रम्या रामायणी कथा। रामायण कथा अत्यंत रम्य है। इसकी रम्यता क्या है, इसकी विभुता कितनी है, इतनी सहजता कितनी है, इसकी व्यापकता कितनी है कि आज भी
पूरे भारत में सब प्रत्येक भाषा में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ये रामायण कथा आज भी प्रचलित है, रामचरित है। एक ही चरित्र में इतनी सारी व्यापकता विशिष्टता को दर्शाया जाता है। तो इसमें भी विचार आज इस विरासत से और हमारा विकास से, इस विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं। अभी विकसित भारत में इस रामायण महाभारत का जो उपजीव्यत्व है वो कितना है, यह विचार का विषय हमारे जो वक्ता हैं वो करेंगे। और उसमें दो चार बिंदुओं को ये ध्यान में हम रखेंगे कि महाभारत में कहा है कि यद इहास्ति तदन्यत्र, और जो यहाँ नहीं है वो तद अन्यत्र नहीं है। जन्यहास्ति तन्न कदाच कुत्रचित, जो महाभारत में नहीं है अन्यत्र नहीं है। महाभारत की महत्ता इसमें है कि एक भी विषय, जीवन का कोई भी अंग इसमें अछूत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता भी उसी में है जो संपूर्ण विश्व को एक दिशा दर्शाती है आज भी। तो इसकी महत्ता के बारे में हम विचार करेंगे, इस सत्र में माननीय वक्तागण करेंगे। लवकुश ने गीत के रूप में भगवान राम के सामने रामायण गाया था। रामायण का गीत के माध्यम से प्रस्तुति हुई थी। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः, ये रामायण की उक्ति है। उसमें कैसे वह विशेष रूप से श्लोकों की वो गीत रूप में प्रस्तुत किया गया था, कितनी इसकी रम्यता है, इसके बारे में भी हम विचार करना चाहेंगे कि इससे ये जो हमें इसमें क्रमशः हमें प्राप्त हुआ है, इसी विशिष्टता का हम कितना देखेंगे, कितना महत्व इसका है। आज भी प्रासंगिकता क्यों है? आज भी हम कल्पना करते हैं कि हमारा राम राज्य हो, और कहते भी हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं। क्या विशिष्टता है कि आज भी विकास के प्रसंग में हम राम राज्य की बात करते हैं। राम में एक पुत्र का, एक भाई का, एक पति का, एक सामाजिक व्यक्ति का और राजा का, एक मित्र का, कितने गुणों का एक बार एकत्र समवाय है। ऐसा एक आदर्श रूप कैसे, इसलिए जब हम भवन बनाते हैं, एक कवि की रचना महाकाव्य एक माना जाए एक भवन है। इस भवन की रचना के साथ साथ भवन में रहने वाला व्यक्ति कैसा हो, उसके लिए भी हम विचार प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथ महाकाव्य उस भुवन के बारे में चर्चा करते हैं। भवन के साथ भुवन का निर्णय करना भी दोनों का उत्तरदायित्व है। इस भवन में रहने वाले कैसे हों, वो किस तरह से लोकाश्रित हों, लोग उनके ध्यान में हों। इसलिए कभी जब भी कहते हैं उसका लक्ष्य लोक होता है, अपनी प्रतिष्ठा नहीं है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है इस ओर मैंने थोड़ा संकेत किया है कि यह विरासत से जो प्राप्त है हमारे पास, यह दोनों महाकाव्य उपलब्ध हैं, आए हैं। उनकी आज की विकास धारा में विविध प्रकार भौतिक विकास में और आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास की धारा में और विविध चेतनाओं के जो स्तर का विकास है उसकी चर्चा में इन चरित्रों का, इन घटनाओं का और इन प्रसंगों का कितना औचित्य है, उसके बारे में, इनकी इतनी प्रासंगिकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वक्ताओं का स्वागत करता हूं। और पहले एक चरण में श्रीमान महेंद्र कुमार मिश्र जी का, जो स्वयं बड़े प्रसिद्ध हैं, कई पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं अपने विषय की प्रस्तुति करें। श्रीमान महेंद्र कुमार मिश्र जी। आज की सत्र के सभापति प्रोफेसर मिश्रा जी एवं शर्मा मैडम, और आप जितने विद्वान उपस्थित हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। यहाँ एपिक्स इन इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर या भारत में
काव्य की निर्माण और काव्य की भूमिका, सामाजिक भूमिका, धार्मिक भूमिका और साहित्यिक भूमिका, ये तीनों के बारे में चर्चा करने के लिए हमको कहा गया था। मैं इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालूंगा क्योंकि मैं लगभग 30 साल से लोक काव्य के ऊपर काम करता हूं, और जो लोक काव्य के ऊपर काम करता है, भारत में हो सकता है कि अब 24 भाषा में या 50 भाषा में कुछ लिखित साहित्य होगा, लेकिन भारत में ऐसे भी है 1500-1600 भाषा है जिसमें लिखित साहित्य नहीं है. There is no written literature in many parts of India, and the oral literature prevails upon the society. Therefore, my focus will be to speak on both the classical epics and oral epics, not much, very briefly, because of it is such a vast thing that you cannot put it within 30 minutes or 1 hour or something like that. तो किसी कवि को लिखने के लिए 50 साल, 30 साल, 20 साल लगा होगा. रामायण और महाभारत ऐसा है. और उसके बाद अगर आप प्रांतीय साहित्य, प्राकृत साहित्य और प्रांतीय भाषा की साहित्य कहेंगे तो उड़ीसा में जो सारला महाभारत 18 खंड पूरा लिखा गया है, कितना साल लगा होगा पता नहीं, और जो 400-500 साल पहले की बात है. तो भारत में जो रामायण और महाभारत, ये दोनों का एक स्थान और काल, ये दोनों को प्रभावित करते हैं. और एक काल चेतना रहता है कि स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदू रिलीजन के ऊपर कहते हैं कि ये 5500 साल की पुरानी है रामायण. उसके बाद फिर महाभारत आता है, और उसका प्रमाण भी वो रखते हैं कि ये क्यों इतना पुराना है. हम इसको ढूंढते हैं अयोध्या में कि कहाँ था, कौन सा ज्योग्राफी में क्या हुआ था. और ईरान भी जुड़ा हुआ था उसमें, तिब्बत जुड़ा हुआ था, बहुत सारे, चाइना जुड़ा हुआ था. उस समय की भारत और आज की भारत की भूमि का मानचित्र में से हम संस्कृति का निर्माण नहीं देख सकते हैं. उसका कुछ अंश है, लेकिन देयर इज ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेंचुरीज इन द इंडियन माइंड. भारतीय मानसिकता एक बहुत समय को समेट करके एक कलेक्टिव मेमोरी बनाया, एक सामूहिक स्मरण श्रुति बनाया है, जिस श्रुति में हम पहले कहते हैं कि फिलोसफी पहला आया. फिलोसफी कहाँ से आया? एक्सपीरियंस से आया, प्रत्यक्ष दर्शन में आया, और जो अप्रत्यक्ष अनुभव से आया. जो प्रत्यक्ष दर्शन और अप्रत्यक्ष अनुभव, ये दोनों को लेकर जिस फिलोसफी ने हमारे देश के ऋषि मुनियों ने नर्मदा नदी के किनारे या कहीं किसी नदी या किसी पर्वत के पास बैठ के चिंतन मनन करके अकेले इतने बड़े बड़े दर्शन लिखा, उसको लोगों के पास पहुंचाने के लिए ही ये कहानी है. रामायण एंड महाभारत आर द स्टोरी ऑफ टू डायनेस्टीज, दो वंश, एक सोलर, एक सूर्य वंश का, दूसरा है दूसरा है कुरु वंश का, और तीसरा है उसमें जुड़ा है यदु वंश का. तो राम और ये युधिष्ठिर और जो कौरव पांडव, और उसके बाद आते हैं यदुवंश. तो अगर सामाजिक स्तरीकरण में और क्षमता की परिस्थिति में देखा जाए तो ये राम और ये जो रामायण के सूर्य, क्या हुआ, ये बंद हो गया. हाँ, रामायण सोलर मिथोलॉजी और ये चंद्र वंश से लूनार मिथोलॉजी, चंद्र और सूर्य वंश से उद्भव दोनों रामायण और महाभारत की वंशानुक्रम है, वंशानुचरित है. और इस वंशानुचरित के जो कहानी का जो संरचना है, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी रिजेंबल्स विद द फैमिली, सोसाइटी एंड द स्टेट. अब किसी भी परिवार में आप रामायण भी देख सकते हैं, महाभारत को भी देख सकते हैं. तो इसमें एक निरंतरता है, चेतना की निरंतरता, जो दर्शन में था, फिलोसफी में था, वेद में, उपनिषद में. वैल्यूज क्या है कि सत्य, धर्म, दया, क्षमा, ये जो था ये एक है. और दूसरा है कि आपका सामाजिक संरचना,
एक तो फिलोसॉफिकल वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज, जो सत्य, शांति, दया, क्षमा, ये सब, अहिंसा, ये सब भारत का महान परंपरा है, महान वैल्यूज है, फिलोसॉफिकल वैल्यूज है। लेकिन इस वैल्यू को श्लोक में समझाना लोगों को संभव नहीं होता, उसको कहानी के रूप में दिया गया। देयरफॉर इट इज ए फिलोसॉफी पुट इनटू इमेजेस। द एपिक्स आर द फिलोसॉफी पुट इनटू इमेजेस थ्रू द स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंस, म्यूजिक, डांस एंड आर्ट फॉर्म। हम युग विभाजन करते हैं, कली युग, सत्य युग, त्रेता एवं द्वापर युग। आज भी भारत के लोग सत्य युग में भी हैं और त्रेता युग में भी हैं, मन में, समय में नहीं। मन में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये चारों जगह में चारों प्रकार के लोग हमारे भारतीय मानसिकता में देखने को मिलेगा। देयरफॉर इंडियन माइंड इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइम्स ओवर सेंचुरीज। उसके बाद शास्त्रीय कैसा बना, कहां से शास्त्रीय आई, ये भी एक बात है कि आप जैसे कि भारत, समग्र भारत एक नाग देश था, इसलिए अर्जुन के साथ जब सहस्रार्जुन का युद्ध होता है, खांडव दहन की बात किया जाता है। क्या है वो? जंगल में आर्यों का प्रवेश और वहां यज्ञ करके आग लगाना, इसको जो आदिवासी या जिसको द्राविड़ और अस्टिक कहते हैं, वो लोग कभी अलाउ नहीं करते थे। इसलिए आज भी कोई ब्राह्मण अपने बेटा बेटी का शादी करता है तो नाग पूजा करता है और परमिशन मांगता है कि मुझे ये विवाह और शादी करने के लिए, मुझे यज्ञ करने के लिए मुझे परमिशन दिया जाए। आज के ब्राह्मण पुरोहित वही करते हैं जो पहले करते थे। उसका प्रतीक क्या है, किसी ब्राह्मण पुरोहित को पूछो, नहीं बता पाएगा। लेकिन बात यह है कि जब भी कोई शादी होता है आर्य धर्म में, तो उसमें पहले नाग पूजा का परंपरा है। इसका मतलब है सारा देश नाग देश था एक समय में, और वो धीरे धीरे आर्य प्रवेश हुआ। जंगल को अलाउ नहीं करते थे नाग लोग, इसलिए अर्जुन के साथ खांडव बन दहन का एक जो परंपरा है, जो एक कहानी है, वो भी दर्शाता है कि आर्य और ये अनार्य का लड़ाई क्यों हुआ था। कि जंगल में जो संपत्ति था, उसी संपत्ति को अर्जुन को चाहिए था, इंद्र को चाहिए था, और नाग राजा उसको देना नहीं चाहता था। परीक्षित का केस तो आप जानते हैं, जब नाग राजा का मृत्यु हो गया, उसका बेटा परीक्षित को रिवेंज लेने के लिए एक फल के अंदर सांप बन के रहा था। ये कहानी क्या है? सिमिलर केस इज कालिया दलन, जहां कृष्ण और वो जो सागर के उस पर जो रहते थे नाग जाति के लोग, नागवाली जो कहते हैं, नाग कन्या देते, तो नाग राजा को जो मारा, नाग राजा को कृष्ण ने दमन किया, तो कालिया दलन उसका एक प्रतीक है। सारे सामाजिक संरचना, सामाजिक संघर्ष और सामाजिक सहावस्थान की कहानी रामायण और महाभारत में भरती है, तो हमको उसको देखना होगा। तो ये सब काव्य जब बनता है तो प्रकृति, समाज और संस्कृति को लेकर ही कवि काव्य बनाता है। एक परिदृश्यमान जगत है, विजुअल वर्ल्ड है, वहाँ के सोसाइटी के लोग हैं, वो एक वैल्यूज को जीते हैं, और उसी वैल्यूज को कहानी में लाने के लिए व फिलोसॉफी को इमेज बनाने के लिए काव्य बनता है, नाटक बनता है। तो शास्त्रीय काव्य में काफी लौकिकता है, और जब शास्त्रीय काव्य लिखित हो जाता है, वो कथित के रूप में कहीं ना कहीं मंदिर के जरिए हो, कहानीकार के जरिए हो, या पुराण बोलने वाले पंडित के जरिए हो, लिखित से मौखिक होता है। और मौखिक जब होता है, लोग सुनते हैं बड़ा ध्यान से, और उसको साहित्य के आधार पर नहीं देखते लोग उसको धार्मिक आधार पर देखते हैं। इसलिए मंदिर के साथ रामायण महाभारत जुड़ा हुआ था। जब धार्मिक आधार पर देखा जाता है, हमारा एक साल को देखो, एक साल में राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, रावण के ऊपर, कंस के ऊपर और हनुमान के ऊपर कौन कौन सा दिन छुट्टी लिया जाता है, सरकारी छुट्टी, ये भी देख लो। और उसके बाद भी देखो कि उनका सामाजिक और धार्मिक जीवन में हनुमान जयंती, श्री राम नवमी, कृष्ण जन्म, शिव विवाह, क्या क्या नहीं होता है। अब देखा जाए तो 365 दिन में 33 कोटि देवता के लिए जगह है। छुट्टी मिलेगा कि नहीं अलग बात है लेकिन ये जो लिविंग ट्रेडिशन इंडियन एपिक्स का है, ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता है सारा दुनिया में।
यहाँ हमारे साहित्य का 3 भूमिका है। एक सामाजिक भूमिका है, दूसरा धार्मिक भूमिका है और तीसरा साहित्यकार सौंदर्य तात्विक भूमिका है। उसमें हम सोशियोलॉजी को देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, सौंदर्य शास्त्र को देखते हैं। ये भारत में ही संभव है, बाकी देश के काव्य यूनिवर्सिटी में सीमित रह गया है। यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ते हैं, इलियड और ओडेसी को यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें मोरलिटी लेते हैं, उसमें मैनेजमेंट पढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भारत की महाकाव्य लोगों का जीवन में, लोगों की घर में और लोगों की समाज में पूरा जीवंत है। उसी कारण उसको हम चाहे ऐतिहासिक या कोई रिसर्च करने वाले राम काल्पनिक है या राम एक आदमी थे या देवता थे, इसके ऊपर काफी रिसर्च करते हैं। लेकिन आस्था और विश्वास में साहित्य जीता है, आस्था और विश्वास में समाज जीता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता राम ईरान के थे या राम भारत के थे या राम तिब्बत से आए। अगर आप मनास, किर्गिज का एपिक मनास नाम का एक काव्य है, उसी काव्य में पढ़ेंगे, उसी काव्य का जो मोटिव है रामायण का मोटिव से पूरा पुत्रार्थ है। पुत्र के लिए यज्ञ किया जाता है, दशरथ पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं और उसके बाद उनका वंशानु विस्तार होता है। तो काव्य का जो 4 गुण है, जो धर्म अर्थ काम मुख्य, ये 4 चीज भारतीय काव्य का मूल कथा है। लेकिन इतना काफी नहीं है। ये काव्य विस्तार कैसा हुआ सारे देश में? देश का तो सामाजिक संरचना बड़ा विचित्र है। इस देश में कई जाति, कई धर्म, कई पंथा, कई भाषा के लोग होते हैं। उसका एससी मलिक ने, एंथ्रोपोलॉजी, चिकागो यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर थे, अभी दिल्ली में है, कपिला बादशाह जी की बहन है, भाई है। उसने संस्कृत से एक क्लू लिया। संस्कृत में हमारे देश के सांस्कृतिक आचार को 4 विभाग में विभक्त किया गया है। एक है कुलाचार, परिवार में जो कुल की आचार होता है, आचार में आचरण, कुल की आचरण को लेकर कुलाचार, जिसमें कुल का नीति नियम घर की। उसके बाद आता है लोकाचार, कितने कुल मिलने से एक लोकाचार होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा रहने से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के बाद जो संस्कृति निर्मित होता है उसको लोकाचार कहते हैं। उसके बाद आता है देशाचार, जब एक देश बना, देश में 500 देश था भारत में या 600 देश था, छोटा बड़ा मिला के ज्यादा भी होंगे, लेकिन एक एक देश का अपना अपना एक सांस्कृतिक आचरण था। जैसे केरल, चोल, उत्कल, नेपाल, ऐसा कितने सब हैं। वो सब देश को अगर देखा जाए, इधर गुर्जर था, उधर महाराष्ट्र था, उधर बंगाल था, सब आज की नाम नहीं, उसी समय का जो संस्कृत और प्राकृत का जो परंपरा चल रही थी, उसी समय का भूमि का विभाजन भाषा के नाम पर होता था या संस्कृति के नाम पर होता था। लेकिन बात एक था कि वो देशाचार उसको कहते हैं। उसके ऊपर आता है शिष्टाचार। शिष्टाचार बोलने से भारत की ऐसा कौन कौन सा मूल्यबोध है जिस मूल्यबोध को सारे ऊपर से नीचे तक देशाचार, शिष्टाचार एक, जैसे कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत को शिष्टाचार माना जाए, उसके आधार पर उच्च भाषा को भी शिष्टाचार माना जाए, संस्कृत को शिष्टाचार माना जाए। उसके बाद जब देशाचार आ जाते हैं तो प्राकृत भाषा में उसी काव्य, उसी उपनिषद, सारे चीज अपनी अपनी भाषा में लिखा जाता है और वो देशाचार को आ जाता है सारे देश में। आसाम में भी आपको उपनिषद मिलेगा, केरल में गीत गोविंद मिलेगा, वहां गाने की शैली ललित लवंग लता परिशीलन करेंगे। उड़िया में जब गाएंगे तो ललित लवंग लता परिशीलन कहेंगे। लेकिन संस्कृत श्लोक है, एक संस्कृत 13-14 लिपि में लिखा जाता है। तो संस्कृति एक है, मूल्यबोध एक है, भाषा अनेक है। तो ये जो शिष्टाचार का जो एक सार्वजनीन भारतीय मूल्यबोध है, उसी मूल्यबोध देशाचार को विकृत हुआ और देशाचार के साथ वो लोकाचार को आया, लोकाचार के बाद वो कुलाचार को आया। लेकिन इसके भीतर अंतर संबंध कैसा बना? अंतर संबंध बनने का अर्थ यही है कि जो कुलाचार और देशाचार, कुलाचार और लोकाचार और देशाचार में था, वो शिष्टाचार को पहुंचा और शिष्टाचार का जो साहित्य वो फिर लोकाचार को आया, देशाचार को आया, एंड ये ओरल और रिटन फॉर्म में आया। So it is a very complex thing that to understand that how there is a configurational attribute between the शिष्टाचार, देशाचार,
लोकाचार एंड कुलाचार। ये चारों को अगर आप एक डिवीजन के हिसाब से लेना चाहेंगे तो आई विल टेल दैट ए विलेज इज द फॉर्मेशन ऑफ लोकाचार। इन द विलेज द पीपल, देयर आर मेनी कास्ट्स, they are called kulachar, and then comes the desachar. A block or territory, a culture area or a linguistic area is called desachar. And then when most of the desas, जितना भी देश थे, अंग बंग कलिंग सौराष्ट्र मगध, ये सारे देश एक संस्कृति का और मूल्यबोध का निर्माण को पालन करते हुए अपना राष्ट्र धर्म में, अपना समाज धर्म में और अपना गार्हस्थ धर्म में और व्यक्तिगत जीवन में, ये चारों स्टेज में जब मिलके एक भारतीय संस्कृति को बचने का, जीने का एक राह बनाते हैं, वो बनता है भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति। लेकिन मूल्यबोध एक, भाषा अनेक। इसलिए मैं गुजरात से जब साहित्य पढ़ता हूँ उसमें मेरे को उड़ीसा दिखाई देता है। उड़ीसा का कुछ लोग कुछ पढ़ते हैं तो मिथिला और भोजपुर दिखाई देता है, बंगाल और असम दिखाई देता है। सो दैट इज द थिंग। तो ये क्लासिकल, इसका भी एक मूल्यबोध जो है वो, लेकिन एक चीज हुआ, संस्कृत से मुक्त होकर जब भारतीय साहित्य प्रांतीय साहित्य में बना, तो प्रांतीय साहित्य का जो अनुभव है, जो सर्जन है, जो क्रिएटिविटी है, वो बहुत मुक्त रूप से संस्कृत से फ्रेमवर्क को लिया, फ्रेमवर्क को संस्कृत से लिया, लेकिन उसका जो अभिव्यक्ति है, जैसे सारला महाभारत की बात कहते हैं हम, सारला महाभारत में कम से कम भी 350-400 लोक कथाएं और कम से कम भी 1000 ऐसे मुहावरे हैं। कर्ण मरने से 5, अर्जुन मरने से 5, यही कहते हैं जो मुहावरे हैं। तो ये जितने भी मुहावरे हैं, कहानी है, मिथोलॉजी है, ये सारे चीज आए हैं। युधिष्ठिर जाके उड़ीसा में एक 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 जो साहू है, हरीश साहू, उसकी बेटी को शादी किए हैं। ये सब कहाँ मूल महाभारत में कहाँ मिलेगा? और वो जो उड़ीसा की महाभारत को अगर आप चर्चा करेंगे, वो 500 साल पहले की लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो वर्णन है आपको लगेगा कि उसमें साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोलॉजी है, रसोई करने का तौर तरीका है, युद्ध है, अस्त्र शस्त्र है, राज्य शासन का कूटनीति है, धर्मनीति है, सब कुछ है। उसको आप कैसे देख सकते हैं कि एक जो शिष्टाचार था, एक रामायण महाभारत की एक जो कहानी था, वो कई तरीके से, कितने रूप से वो अपना जीवन को बचाए। अब महाभारत की गोंडी कहानी, जब काव्य लिखित नहीं होता है, काव्य जब कथित होता है, तो कथित काव्य कैसे बनता है, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप सीता की अग्नि परीक्षा लिखित काव्य में पाएंगे, लेकिन लक्ष्मण की अग्नि परीक्षा गोंडी रामायण में मिलेगा, कथित रामायण में। वहां सीता की अग्नि परीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ी, लक्ष्मण की पड़ी। टाइम कम है, उस कहानी में नहीं कह रहा हूं। देयर आर मेनी सच स्टोरीज। सत्य आंब उपाख्यान नाम का एक उड़िया में, आंब माने मैंगो, आम, एक सत्य आम जो दुर्योधन वनवास के समय में युधिष्ठिर और अर्जुन के पास भेजा है एक ब्राह्मण को, और बोला कि उनसे तुम आविष्कार करके लाओ, वो कहाँ है, हमको जानना चाहिए। तो ये ब्राह्मण के रूप में जाके बोला कि मुझे आज आम खाने का मन हो रहा है, मुझे को आम खिलाओ। तो उस आम का सीजन ही नहीं था, तो आम कैसे खिलाते? तो उसके बाद वो ब्राह्मण बोला, तुम 6 आदमी हो यहाँ, पंचु पांडव और द्रौपदी, तुम लोग अगर अपनी मन की सच बोल दोगे तो आम का पेड़ से आम उगेगा। सब लोग एक आम का पेड़ लगाए और अपने सच सच बोलने लगे। बात आई द्रौपदी की, द्रौपदी को सच बोलने की है, नहीं तो आम उगेगी नहीं। आम का फल और आम का फूल भी पकड़ चुका है, केवल फल बल निकलना बाकी है, और द्रौपदी सच कहेगी तो आम फलेगा। द्रौपदी बोली, मेरा 5 पति है, फिर भी मेरे करने के प्रति थोड़ा सा कमजोरी है। आम फला। आम फलने के बाद वो आम को ब्राह्मण लेके जाके तालाब के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद वो जब नहाने शुरू किया था, तो श्री कृष्ण को पता चल गया कि ये ब्राह्मण मायावी, ये आके दुर्योधन को जाके कहेगा कि यहाँ वो पांडव लोग रहे हैं। उसके बाद उनका फिर से 12 साल सजा हो जाएगा, 12 साल फिर एक्साइल हो जाएगा, 12 साल फिर वनवास होगा। अगर 12 साल के अंदर कोई जो दंड दिया है वो अगर उसको आविष्कार कर पाए तो आपको छुप के रहना पड़ेगा 12 साल। ऐसा व्यवस्था था। तो कृष्ण आए और ब्राह्मण को बोले, क्या पकड़े हो? वो बोला, नहीं कुछ नहीं है। बोले, नहीं दिखाओ ना।
वो भी ब्राह्मण के वेश में आए थे और दिखाए तो आप बोले एक आम है। तो कहाँ से लाया ये? नहीं इधर इधर गया था, ये सब कहा हो। अच्छा तो ये सत्य आम है? बोला हाँ। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं अगर कुछ झूठ कह दूं तो ये आम उभान हो जाएगा, आम अंतर्धान हो जाएगा। कृष्ण ने 100 झूठ कहा उनके सामने, उसी ब्राह्मण के सामने आम को पकड़ के कृष्ण ने 100 झूठ कहा, और जब 100 झूठ कह दिया आम गायब हो गया। अभी वो ब्राह्मण क्या लेके जाएगा? तो महाभारत में ऐसे 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 घटना है, आप यकीन नहीं करेंगे। ऐसे रोज घटना जो सब सामाजिक जीवन का बीत हो गया। हाँ हाँ, मैं भी इतना समय सोचता था कि 12 बजे 11 बजे तक हो गया। तो इतने घटना है, लगभग आपको ऐसे 500 लोकल घटना मिलेगा जो कि महाभारत में है और महाभारत में नहीं है। आप महाभारत का कोई प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन महाभारत के साथ प्रासंगिकता लोकल जुड़ के करते हैं, और वो जुड़ के करने के अर्थ होता है क्रिएटिविटी, सर्जनशीलता। वो सर्जनशीलता और एक वास्तविकता और यौक्तिकता, लॉजिक क्या है, क्यों इस कहानी को बनाया, वो लॉजिक जो बनाते हैं, वो लॉजिक कवि का सबसे बड़ा क्रिएटिविटी है। चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, एक ब्रेन जो होता है, जो कविता नहीं लिखता, जो काव्य नहीं लिखता, उसको हम साहित्यकार नहीं बोलते हैं। एकदम एकदम झूठ है। इस देश का सारे लोग साहित्यकार है। जो 100 के चिंता करता है वो भी साहित्यकार है, जो कहीं कुछ नहीं कहता है वो भी साहित्यकार है, कुछ कहता है तो मौखिक साहित्य का साहित्यकार है, और कुछ लिखता है तो साहित्यकार है ही। नमस्कार। वेरी नाइस। बहुत अच्छा आपने आर्य और आचार, शिष्टाचार, मूल्यबोध और प्रत्येक लेखन के साथ एक जो सामाजिकता और लौकिकता, प्रासंगिकता जुड़ी है, इसके आधार में रामायण महाभारत है। उसमें मैं अभी दूसरी वक्ता जो हैं सीमा शर्मा जी से निवेदन करता हूँ, अप्रोप्रिएशन ऑफ एपिक्स इन द फोक एंड फेमिनिस्ट डोमेन के विषय में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सीमा शर्मा जी। Good morning to everybody present here. Thank you to Sahitya Academy for inviting me for this festival, which provides a very intellectually stimulating atmosphere. I'm honored to share the dais with such eminent scholars like Gopabandhu Mishra and Mahendra Kumar Mishra. It's really an honor. Thank you, sir. The title of my paper is Appropriation of Epics in Various Domains. The common thread that we find in almost all the works in ancient India are the epics of Ramayana and Mahabharata. The Ramayana, which is older of the two, existed in the oral tradition perhaps as far back as 1500 BC, but is generally accepted to have been composed in Sanskrit in the 4th century BC. Even at a very early stage, most Indian languages have their version of epic rewritten by a prominent poet of the region. In fact, its influence is not confined to just India, but all of Southeast Asia. Valmiki's text is believed to be one of the many Ramayans that deal with the same storyline. Since literature was mainly orally transmitted, the idea of accuracy in conveying the literary works to another languages could not be sustained. These retellings were often influenced by the worldview of the group that was doing the translation or adaptation. The Indian historian Romila Thapar notes, the appropriation of the story by a multiplicity of group means a multiplicity of versions through which the social aspirations and ideological concerns of each group were articulated. The story of these versions included significant variations, which changed the conceptualization of character, event, and meaning. Close quotes. Some of the renderings of Ramayana, Tulsidasa's Ramcharitramanas in Hindi, Kambant's Ram Avtaram in Tamil, Adhyatmak Ramayana in Malayalam, Kritivasa's Ramayana in Bengali. The language of these regional variations is the common man's language as opposed to Sanskrit. The same is true of the other epic Mahabharata too.
Both Ramayana and Mahabharata continue to be retold in different mediums, encompassing novels, comics, TV series, animations, and films. The practice of retelling the epic is not a recent phenomena in Indian culture and literature. One can find in Indian literary history a number of adaptations of both Mahabharata and Ramayana. For example, Bhishma Pitame by Suryakant Tripathi Nirala, Andha Yug by Dharamveer Bharti, Mahaprasthan by Naresh Mehta, Pandavpuram by Sethu Madhavan, and so many others, the illustrated retellings by Devdutt Patnaik, and many others. Certainly, the text mentioned above do not cover the complete archive that exists across different cultures, dialects, and languages. The epic's continued and wide relevance is also evidenced by the huge popularity of the television versions in the late 1980s and early 1990s. Their centrality in the Indian culture makes it possible to appropriate them in disparate contexts, ranging from Gandhi's recasting of Sita to persuade women to join the freedom struggle, to the creation of the Sita figure as a touchstone of ideal Indian womanhood, and to a feminist appropriation of Sita and Draupadi to question the entrenched patriarchal norms of the society. This paper makes the case for the fluidity and dynamism of the epic tradition in oral folk tradition as well as in regional literary interpretations, including those with a feminist agenda. The reworkings of the epic continue the dynamic tradition of the Ramayana and Mahabharata while also using the epics to work through and enunciate the ongoing and evolving concerns of contemporary India. I would be exploring the appropriation of Sita by rural women in their folk songs and stories. Both women's folk tradition and literary renderings as early as the 16th century have retold the Ramayana from Sita's perspective. Research on women's Ramayana folk songs and stories in a few Indian languages provides a glimpse at the ways in which women have appropriated the epic at the ground level and in doing so offered alternative interpretations. Women's oral tradition of the Ramayana in different Indian languages foregrounds their own sentiments and preoccupations while using Sita as the vehicle of that voice. The women hone in on episodes from two books, Balkhanda and Uttarkhand, whose contents relate to Sita's birth, marriage, and her return to Ayodhya after the war with Ravan. These two books focus on her ordeals and sufferings, and they're central to women's concerns and incorporated in their works and their ritual songs and stories. Women's shared sense of suffering with Sita comes through most intensely when they sing of Ram's testing of her through the Agni Pariksha, his banishment of Sita to the forest, his demand that she undergoes a second fire ordeal to prove her chastity, and Sita's final act of asking her mother Earth to take her back. They detail every aspect of Sita's physical and emotional hardship and are direct in their condemnation of Ram. In the classical versions, Ram is considered exemplary for putting his kingly duty before his love for Sita. Upon hearing rumblings of dissatisfaction from his subjects because he has taken back a quote unquote tainted Sita, he is forced to abandon her. In the women's song, however, the blame is placed on Ram as a jealous husband. In the folk tales of the Godavari region, one such version of Sita's expulsion to the forest is very popular among the women of that area. In this version, the story is told by an elderly village woman to her female co workers in the paddy field. To recount the story in brief, the story runs like that Ram has come back from Ayodhya, but Shurpanakha has still not given up on Ram and she torments Sita. So wherever Sita is sitting, a painting of Ram floats in front of her. And Sita is worried that Ram might think something else about it. So she destroys the paintings. But once the painting comes floating to Sita when Ram is with her.
And Ram gets very angry. He interprets it as his wife's fondness for Ravan, and he gets very angry. The story ends with the narrator's observation, I quote, since he was king, he banished Sita to the forest. That too when she was carrying her first child. So, what do you make of Ram's decision? The story then becomes a tale of injustice suffered by Sita rather than a celebration of Ram as an ideal hero. It injects a moral ambiguity in the character of Ram, uh, who has otherwise been projected as heroic and morally upright in the dominant versions of Ramayana. Now, recently, in 2003, a comic house decided to publish this story. The story which is told by in the Godavari region by the women. So this is the publishing house is called Vivalok Foundation. It's a Delhi-based publish house, and it published this story in a comic format in a collection called the Godavari Tales. Now, I have a handout. I think you could see it like this handout. This is from the comic Vivalok Comics Godavari Tales. And if you see here, it's very different from the kind of Ramayana we have been used to reading in Amar Chitra Katha, where you have, the emphasis is on Ram's exploits, and it ends with the last the comic box is the coronation of Ram. It ends at the coronation of Ram. Similarly, the presentation of Ram, it's very Aryan. He's blue tinged, the color of divinity, very martial, very Aryan features. Sita is very fair skinned. But if you see in this handout, Ram looks like a Telugu guy. So it's it is appropriation of the the appropriation to the region, and he looks like. And when he sees the painting, he's actually, you can see steam coming out of his ears. He's actually very angry. So in this, he has very Dravidian features. And the in an interview, the founder of Ivalok Foundation, Rukmini Shekhar, she said that we try to consciously deconstruct physiognomy in all our stories. Look here, look at Ram in Sita Banished. He's a local Telugu guy. Look at his hair, his skin tone. He does not wear a sacred thread. He has a subaltern appearance. You see, image is very popular in representing diversity. I can't stress this enough. I next take up Mahashweta Devi's appropriation of Mahabharata in a short story. Mahashweta Devi does not make an overt use of the narrative except for the name of the protagonist, which is Draupadi, a corruption of Draupadi. Still, the echo of the epic reverberates in the mind of the readers. The story Draupadi is about a tribal woman turned revolutionary named Draupadi who suffers the atrocities of the police. The strength of the story lies in the manner in which Mahashweta Devi adapts the episode of the disrobing of Draupadi in the original Mahabharata into a scene of contemporary political assault. Instead of Kauravas, it is the local army soldiers this time who strip Draupadi of her clothes in the name of legal interrogation. Unlike the Chirharan of Draupadi in the original epic, not only do the soldiers come out successful in their attempts of stripping Draupadi, they also brutally rape her one by one. In the next morning, when the guard comes to bring her to the army office, she tears her clothes herself with her teeth and walks towards the officer in the bright sunlight, naked and bleeding, with her head held high. She comes close to the Sena Nayak and stands with her hand on her hip, laughs, and says to him, I quote, the object of your search, Draupadi Mahajan. You asked them to make me up. Don't you want to see how they made me? I will not put my cloth on me. What more can you do? Come on, counter me. And then Draupadi pushes the dumbfolded Senanayak with her breast. The event takes the reader aback because Draupadi does not even once try to invoke any person or divinity to save her modesty. Her dignity remains intact even if she's violated, nor is she embarrassed of a naked body. In Devi's story, Draupadi tears off her clothes herself and establishes the point that she is in no way like the mythical Draupadi, as she does not have a Lord Krishna as a savior. She has found her own way of resistance.
The creative inversion of the Draupadi disrobing episode by Devi shows the potential of the epics to be appropriated to link the concerns of the mainstream feminist movement with caste, class, and tribal peoples' struggles. To conclude, while feminist appropriations dip into an already existing pool of associations and sympathies, they provide inflection to certain aspects of the women characters that accord with current feminist sensibilities and develop certain aspects of the narrative that were only incipient in the classical versions or in the popular domain. For example, many readers see Sita's final act of renunciation by entering the earth as a protest against injustice. But it is also the case that Sita is often held up as a role model of wifely devotion, chastity, and patience. By amplifying the aspects of Sita that show the injustices of a male dominated society, the feminist appropriations attempt to bring together certain chains of meanings while unhinging others. Draupadi offers a different beginning point because she's more and less available as a signifier. She's more available in the sense that there are fewer already existing associations and balances deeply embedded into the popular psyche, and less available because feminists cannot tap into a wide sympathy and admiration for her in the same way as they can with Sita. The approach of a number of feminist creations, therefore, has been to demonstrate the uniqueness and strengths of Draupadi in terms of her articulateness, forthrightness, and propensity to question the importance of her husbands in the face of multiple attempts to assault her sexually. Many of these feminist interpretations also highlight the psychological pain that Draupadi experiences as a pawn in the designs of a male king and by the Kshatriya moral and ethical code. Feminist appropriations built on the folk and classical versions of the epics by sharpening the critique of patriarchy as embedded in the ethical codes of earlier eras. By doing so, feminist critics unhinge classical interpretations of the epics while at the same time using the epics to enunciate feminist concerns and elaborate on the meaning of feminisms in the current context. These feminist appropriations also unravel the deeper meanings of the responses that the women characters make to the suffering inflicted upon them, thus attempting to recuperate the agency of women characters in the epic. Thank you. Thank you very much, Simaji, for presentation regarding the appropriation of epics. Appropriation. I would like to just not to remark, but to say something differently. Sometimes the appropriation, to find out an appropriation everywhere, we do something wrong also. That means taken it as granted that it is inappropriate. So it is also an absolutism. I think that absolutism is never represented in our epics. It is always relative. It was also. For example, जब रावण का वध हो जाता है, तब विभीषण से भगवान राम कहते हैं रामायण में कि इनका संस्कार किया जाए। तो विभीषण कहते हैं ये आपके शत्रु हैं, आपने इतना कष्ट करके सेतुबंध बनाया और यहाँ आकर उनका संहार किया, ये आपके शत्रु हैं, इनका संस्कार क्यों? तो राम क्या कहते हैं कि ये
जो शत्रुता है, मरणांतानि वैराणि निर्वृत्तं न प्रयोजनम क्रियताम अस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तब। इस पिंड से मेरा कोई द्रोह नहीं है। इसमें जो असत्य था, अनाचार, अनुचित कर्म, उसी से विरोध था। अब वह उसको निकालने के लिए, अनुचित को निकालने के लिए मैंने अंत तक प्रयास किया, अंगत को भेजकर जैसे भी हो। अगर वह अंत तक भी सीता को फिर समर्पित कर देते तो मैं, इनके शरीर से मेरा क्या द्रोह है। मरणांतानि वैराणि, शत्रुता तो मरण तक है, पिंड से क्या शत्रुता है। शत्रु के रूप उन्होंने फिर कहा कि आप संस्कार नहीं करेंगे, जथा ममाप्येष था तब, जैसे आपके लिए हैं ऐसे मेरे लिए भी हैं। अब पिंड भर हैं, आपका यह कृत्य बनता है कि आप संस्कार करें। आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा। यहाँ एब्सोल्यूटिज्म नहीं है। शत्रुता किसी तरह से अंत तक, आज तो ऐसी शत्रुता निभाई जाती है कि डेड बॉडी के साथ भी क्या क्या कर लेते हैं शत्रु के नाम पर। वह भी कई उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसा उदाहरण वह भगवान राम चाहते तो क्या क्या नहीं कर लेते, उसको पोस्टमार्टम कर लेते, क्या क्या नहीं कर लेते, नहीं किया। दूसरा, जब स्वर्णमयी लंका को जीता, उन्होंने उनसे कहा गया कि आप तो जो जीतता है वही विजेता बनता है, आपका राज्य है, ये आप ले सकते हैं। ऐसा ही इतिहास कहता है, सारे विश्व का इतिहास ऐसे कहता है। लेकिन भगवान ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी। मैं लंका को जीतने नहीं आया था, मैं सत्य को, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत के लिए इतना श्रम किया। वह अनाचार का, वह सत्य की जीत हो गई, मेरा काम संपन्न हुआ। लंका से मेरा कोई तात्पर्य नहीं, चाहे स्वर्णमय क्यों ना हो जाए। दूसरा, सीता जी के कई उदाहरण ऐसे, जब दंडकारण्य में राम निकलते हैं वह खरदूषण आदि की वध करने के लिए, तब सीता कहती हैं रामायण में कि आप राक्षस जाति के नाम पर वध न करें, आप क्षत्रिय हैं, आपका यह धर्म नहीं कहता है कि कोई किसी जाति का नाश करे। आपके पास धनु है, तीर है, मार सकते हैं, बलवान है। बलवान का यह अर्थ नहीं है कि किसी निर्बल को दुर्बल को मारे। और राक्षस जाति विशेष है, कोई दुष्ट नहीं है। केवल दुष्ट राक्षस जो यज्ञ का संहार कर रहे हैं, मुनियों ऋषियों को तब कष्ट दे रहे हैं, उन्हीं का संहार करें, उन्हीं का नाश करें। दुष्टता शिष्टता सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि राक्षस में भी शिष्ट लोग नहीं है। जाति मात्र में द्रोह ना करें, ये सीता का उपदेश भगवान राम के लिए है। वह सीता का के प्रसंग को हम कितना जानते हैं। जिस सीता ने उपदेश दिया था भगवान राम को, उस मुहूर्त में जब सीता जी, वो सभी प्रसंग तो जानते हैं, शूर्पणखा आदि प्रसंग है, किसी ऐसे हुआ। लेकिन यह प्रसंग भी है जिन्होंने सीता जी ने उपदेश दिया कि आप जाति के नाम पर किसी का संहार न करें। आपके पास बल है तो उसका दुर्बल को सताने के लिए नहीं है। अतत्राणाय शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी, महाकवि कालिदास ने कहा है। ये जो शस्त्र हैं क्षत्रिय के साथ हाथ में अस्त्र, ये आत्मत्राण के लिए हैं, दुर्बल के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं है। यह हमारा साहित्य कहता है ऐसा। सीता जी के साथ हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कहा कि आप चाहें तो मेरी शक्ति है, ये सारे शत्रु राक्षसों को मारकर मैं अभी आपको यहाँ से लेकर सीधे भगवान राम के पास लौट सकता हूँ, तो आप आज्ञा दें। सीता जी कहती है, नहीं, मैं किसी दैवी शक्ति, मैं भी कर सकती हूँ, मेरे पास भी शक्ति है, मैं किसी दैवी शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान राम की जो इसको लीला कहिए, जो भी कहिए, ये मानवीय शक्ति की जीत हो, मानव की जीत हो, मानव में निहित जो धर्म है, जो पुरुषार्थ है, उसकी जीत हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ की जीत हो। मैं चाहती हूँ कि धर्म मानवीय शक्ति से ही जीत हो। मानव में यह शक्ति है, जिसी मूल्यबोध के बारे में मिश्र जी ने, महेंद्र जी ने बताया कि मूल्य की जीत हो, किसी दैवी शक्ति की जीत नहीं हो। हम देखें कि हमारे इन साहित्यों में, इसमें रामायण में, महाभारत में भगवान ईश्वर चाहते तो क्या क्या चक्र चलाकर क्या कहीं नहीं कर लेते। उनको इतना कष्ट, इतनी परेशानी और ऐसे ऐसे रूप वो क्या क्या नहीं किया। भगवान कृष्ण जाकर वहां जूठन करते हैं, क्या क्या उपदेश, कैसे कैसे सामना नहीं किया। तात्पर्य यह है कि
भगवान भी कल एक इसमें गोष्ठी में चित्तरंजन मिश्र जी ने बताया, अच्छा लगा कि भगवान यहाँ सीधे दैवी शक्ति से अवतरित नहीं होते हैं। रामायण में भी, महाभारत में भी, श्रीमद् भागवत में भी, पुराणों में भी भगवान कवि के उसमें अयोध्या के और वृंदावन के उसमें पालने में पाले जाते हैं। भगवान को भी उस पालने में कवि के द्वारा रचित जो वर्णन के भीतर वह उनको उसी से शिशु होकर ऐसे शिशु लीला करके आना पड़ता है। अर्थात यह पूरी दैवी मानवीय जो परंपरा है, जो संस्कृति की रक्षा के लिए मानव के भीतर जो चेतना का विकास करने की पूरी क्षमता देकर ईश्वर ने भेजा है, उसकी मानवता सिद्ध करने के लिए अवतार, तो आप अवतार माने या ना माने, जो ये बात हुई है इसमें यही दर्शाया गया है कि इसमें सभी के साथ भगवान राम चाहते तो क्या नहीं कर लेते, जिसको बाद में रामचरितमानस में उन्होंने कहा, लेकिन कहा कि यह सिया राम में सब जग जानी कहा, लेकिन भगवान राम ने उनका कोई दैवी प्रयोग का उपयोग नहीं किया। वह किरातों से मिले, वानरों से मिले, वनवासियों से मिले, सबरी के यहाँ गए, वो सेतु बंधवाना चाहते तो क्या नहीं कर लेते। भगवान इसको हम लोग कदाचित लीला का आख्यान देते हैं एक, और लेकिन मूलतः वह मानव में जो क्षमता, जो वैश्विकता, जो सर्वजन ग्राह्यता, सर्व समावेशिता जैसे दैवी गुण है, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सूरी मता, जिसका उल्लेख भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अभयं सत्व संशुद्ध ज्ञान व्यवस्थित ही, जो दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सूरी मता, सारी विद्याएं विमुक्ति के लिए हैं। अर्थात ये जो हमारा देह का बंधन है, देह के अभिमान का बंधन है, उससे मुक्त होने के लिए ही मानव को इतनी क्षमता देकर ईश्वर भेजते हैं। इसलिए उसका विकास करने के लिए रामायण में, महाभारत में सारी घटनाएं विद्यमान है, उसमें कही गई हैं। इसलिए केवल रम्यता उसमें, उस सभी को लेकर चलने में वह जो भगवान राम की का प्रसंग है उसको भी हम उल्लेख करें। इसलिए अप्रोप्रिएशन की जब बात हम करें तो भी उनके भीतर जो उसमें अप्रोप्रिएटिव नेचर है उसको भी हम उल्लेख जरूर करें। कदाचित कदाचित क्षमा करें, कदाचित हम किसी घटना विशेष को उल्लेख करके हुए एक द्रौपदी, एक कैरेक्टर, उनके साथ क्या एक लेखक ने, बड़े प्रसिद्ध लेखक सब जानते होंगे, डॉक्टर मनोज दास जी, यहाँ साहित्य अकादमी के बड़े अवार्डी, बड़े अब तो नहीं रहे, उन्होंने लिखा कि हम अपने घर में अपने जिनको हमने नहीं देखा, मेरे दादा परदादा के स्वरूप और उनकी कार्यशैली, जीवन पद्धति, उनके गुण, उनमें निर्लोभता, अलोलुप्तता, अभय आदि, उस समय अंग्रेजों के या उससे पूर्व मुगल के समय में भी कैसे रहते थे, उसका एक स्केच, सामान्य एक रूप रेखा बनाने में भी पूछा जाए, आज हमारी असमर्थता है, हम कल्पना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ऐसे साधनों के बीच में हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे रहते थे, वो कैसी सच्चाई से जी रहे थे, और जो हमारे भीतर जो धमनी में जो सच्चाई थोड़ी बहुत आई है वो हमारी नहीं है, वो विरासत है। आज विरासत की बात हो रही है, वो विरासत से प्राप्त है। सत्य, धर्म, अस्तेय, परिग्रह, तप, स्वाध्याय, इसके प्रति जो हमारी थोड़ी सी अगर प्रवृत्ति है तो उसी से उनसे प्राप्त हुई है, लेकिन हम उनके बारे में भी कल्पना करना हमारे लिए दुरूह हो जाता है। अपने घर के, अपने दादा परदादा, हजारों वर्ष पहले जो घटनाएं हुई है उसको एक पिक एंड चूज करके एक अंश लेकर हम उस पर टिप्पणी करते हैं। आज की दृष्टि में, आज के समय से उस समय को देखने की कितनी हमारे पास क्षमता, इतनी कैसे क्षमता आ जा सकती है, हम अपने बारे में भी जान नहीं पाते हैं। इसलिए हम पढ़ें, फिर से उसको देखें। श्री विद्यानिवास मिश्र, आई एम कंक्लूडिंग माई स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट विद्यानिवास मिश्र जी ने एक बार कहा कि रामानंद सागर ने रामायण की रचना, रामायण को दर्शाया। रामानंद सागर रिसर्चर हैं, उन्होंने बड़े श्रम किया, बहुत सारे रामायणों को पढ़ा, बहुत अध्ययन किया। नाना रामचरितमानस भी कहते हैं, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत रामायणे निगदितं क्वचिदंत नन्यतोपि। हमने क्या क्या नहीं देखा और कैसे लिखा, लिखा क्यों? स्वांतः सुखाय, स्वांतः सुख के लिए लिखा। स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, स्वंतः सुखाय। लेकिन उनका अंतःकरण बड़ा विशाल था,
सर्व सर्व समावेशी था, पूरे विश्व के पूरे मानव सभ्यता के लिए ही था। जिस प्रकार का की विशालता महर्षि वाल्मीकि के हृदय में था, अगर वह क्रौंच द्वंद्व वियोगत्थ शोक नहीं होता तो ये रामायण की रचना नहीं होती। शोक श्लोकत्व मागत, ये शोक है अर्थात अंत जो समाज में एक कहा कि शोक, किसी को शोक, किसको शोक हुआ, ये शोक कहाँ तीर लगा, किसने मारा, और रावण ने सीता का अपहरण किया, जो वह भी संकेत वहां करता है शोक श्लोक तो शोक 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 में बदल गया। और इसलिए हमारी सारी अवधारणाएं, सारी कल्पनाएं वह लोकाश्रित हैं। इसलिए पहला प्रश्न करते हैं नारदम, नारदम परिप्रप्रच्छ तपस्वाध्याय निरतम, वाल्मीकि वाग्विदंबरम नारदम परिप्रप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। ये जो तपः स्वाध्याय निरत हैं जो नारद, उन्हीं से वाल्मीकि प्रश्न करते हैं मैं क्या करूं। फिर वह कहते हैं कोन्योस्ति सदृश, क्या पूछते हैं। मैं अंतिम कारण करता हूं कि रामायण की रचना से पहले वाल्मीकि का प्रश्न नारद के लिए है। पहला प्रश्न है, इस संसार में आप बताएं कोनु अस्मिन लोके, इस लोक में, दैव की बात नहीं है, देवता क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, लोक में कौन चरित्र से युक्त हैं, सत्यवाक्य हैं, गुणवान हैं, बीर्यवान हैं, धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, दृढ़व्रत हैं, चरित्र से युक्त हैं, सर्वभूत के हित का चिंतन करने वाला है, कोई समर्थ है, विद्वान है, कौन है, प्रिय दर्शन है, ऐसा बताइए। अर्थात ये सारे हमारे मानक रूप हैं, रूप से भी गुण से भी कौन मानक हैं, मानकता की खोज किसके लिए, संपूर्ण विश्व मानव के लिए, सबके लिए, अपने लिए नहीं। ये ऐसी ऐसी खोज में कभी निकलता है और वो मिलते हैं, उनका वर्णन करते हैं। मैं ये विरासत से हमको प्राप्त है, विकास की धारा में भी विरासत से जो क्वालिटी हमारे धमनी में प्रवाहित हैं उसको विकसित करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। हम कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि कितने रामानंद सागर आएंगे, विद्या निवास का लेख है, रामानंद सागर इज रिसर्चर, रामचरितमानस के तुलसीदास भी रिसर्चर है, वो स्वतः सुखा लिखते रहेंगे, करते रहेंगे, बहुत सारी चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन मूल धारा जैसे इक्षु दंड है, दंड टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इक्षु का जो रस है वह स्वतः स्वाभाविक सहज उसी मिच्छास के साथ प्रवाहित होता रहेगा। ये रामायण और महाभारत की जो महाकाव्यता है, जो महत्ता है, जो विशिष्टता है, जो विभुता है, जो व्यापकता है, जो सर्वजन समावेशिता है, वो जो मानकता है, संपूर्ण मानव के लिए मानक रूप प्रस्तुत करने की क्षमता है, वह अंतस्यूत है, वो भीतर से फल्गु के भीतर रहने वाली धारावत है, उसकी हम रक्षा करें। इसलिए विकास के क्रम में उस विरासत से जो प्राप्त जो राशि है, जो विभुत्व है, जो व्यापकता है, जो संपूर्ण विश्व को चकित करके, अब एक और भगवान राम का तुम्हारा है, भरत कहे तुम्हारा है, कैसा दृश्य है, ऐसा दृश्य कहीं नहीं है। अर्थात अनेक प्रकार के ऐसे हैं जिससे हम विरासत से प्राप्त मान सकते हैं। विकास की धारा में हम उनको उदाहरणों को अप्रोप्रिएटिवनेस को देखें कि कैसे अप्रोप्रिएट से चलते थे। क्यों राम कुछ चाहते तो कुछ भी कर लेते, लेकिन जब भरद्वाज के आश्रम में लक्ष्मण पहुंचते हैं और माता कैकेयी के बारे में बहुत कुछ बोलने लगते हैं, उनके बारे बड़ा क्रोध था, तो भरद्वाज समझाते हैं, ये प्रयाग, यही कुंभ के उसमें क्षेत्र में प्रयाग में कहते हैं, आप न समझेंगे लक्ष्मण जी, राम प्रव्रजनं महत्, राम का घर से निकलना बहुत बड़े काम के लिए है, घर से निकलने वनवास मात्र नहीं है, ये वनवास नहीं है, ये केवल 14 वर्ष की पूर्ति वनवास में जाकर रहना है, ये इसलिए नहीं है। राम प्रव्रजनं महत्, आप इसलिए माता की अधिक निंदा न करें। इसलिए हम सावधान रहें, जब कैकेयी का औचित्य दर्शाते अनुचित अप्रोप्रिएशन दर्शाते समय हम कहीं चूक जाते हैं, ऐसा नहीं है। कैकेयी का वचन, कैकेयी की दृष्टि, कैकेयी का जो अभिनिवेश, वो उसका भी महत्व है, उसको भी हम समझने का प्रयास करें। धन्यवाद, आपने समय दिया इसलिए। हम भारतीय महाकाव्य के इस सत्र के सभी माननीय वक्ताओं, सम्मानित अध्यक्ष का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी के बहुमूल्य योगदान ने इस चर्चा को अत्यंत समृद्ध बनाया
और आपके समय और ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो अगला सत्र है आज का, उसमें धर्म लिटरेचर फ्लेम फॉर ऑल एजेस। Our eminent scholars will expand and enumerate on this topic in our next session at 12. So please join us back at 12. We now break for tea. Thank you once again. टीम का ले लीजिए। पार्टी मेरे आप नहीं आएगी क्या? हमारे बिरादरी के हो भाई, आप तो हमको पहचान दे रहे हो। नेहा, you come. नहीं, you come here. मेरा कल है। सामने करते हैं, परिचित पंडित को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बैग पकड़ लो। नहीं चले गए, वो रहने दो ना, वो चलते हैं 10 साल से आते हैं, चल जाते हैं। ये मेरा एक प्रश्न है।
Namaskar and welcome back. This time to the second session of the day, Dharma Literature, Flame for All Ages. Dharma has been a central pillar of Indian philosophy, shaping legal, ethical, and moral discourse for centuries. Through literature, it has been explored as both a guiding principle and a dynamic force that evolves with time. So, this session will delve into the intersection of dharma, law, justice, and its relevance in contemporary society. We are honored to have amongst us Sri H.S. Shivaprakash as the chair of this session. And I will also be inviting our esteemed speakers on stage one by one. श्री H.S. शिवप्रकाश प्रख्यात कन्नड़ और अंग्रेजी लेखक हैं। कविता, नाटक और आलोचनात्मक कृतियों सहित आपकी 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। He served as the editor of Sahitya Academy's bi-monthly journal on Indian literature and is former director of the Tagore Center, Berlin, Germany. He is a recipient of Sahitya Academy Award, Sangeet Natak Academy Award, Rajyotsav Award from Karnataka government, Karnataka Sahitya Academy Award, Kuvempu Bhasha Bharati Translation Award, among many, many others. It's a great honor to have him here as chair. I request you, sir, to kindly join us on the dais. I'd also like to introduce Sri Om Dwivedi. He is Associate Professor of English Literature and the author of Representations of Precarity in South Asian Literature in English, Re-Orientalism and Writing in English, and Tracing the New India Diaspora. His latest publication includes a special issue of the Journal of Commonwealth Literature on Partition 75 Years On, and a special issue of Metacritic Journal on Hope and Utopia in Global South Literature. He is the Vice Chair of the International Research Group Challenging Precarity. Please welcome on days. We will also be joined by Sri T.S. Krishnanji, Pratishthit Tamil Lekhak or he has written many articles and books in the field of Tamil inscriptions and literature, with particular emphasis on Sangam literature. Some of his notable books include Chera, Chola, Pandya inscriptions. He has also translated some notable books into Tamil, which include Thomas R. Trotman's Arthashastram and Kanakalata Mukund's Merchant of Tamil Nadu. Some of his articles on Tamil literature have also been published in English. Sri T.S. Krishnanji will be joining on the days. Over to the chair, Sri H.S. Shivaprakash ji. Do you want a mic? So without any more ado, I would request the speakers to start the presentation. And we have time, I'm told, till 4:30, because one of the speakers is missing. So if the two speakers can complete the presentation within 20 minutes, then we can have a short question and answer session if anybody asks a question. And I'll speak for about 5-10 minutes. So I first call upon Dr. Om Dwivedi to speak. Namaskar. It's a pleasure to be here, particularly in the company of my spiritual guru, Professor H.S. Shivaprakash sir. And the theme of this seminar, the theme of this session in particular, is quite wide-ranging. Dharma literature,
flame for all ages. It is so wide-ranging, in fact, that multiple seminars we organized on this particular thematic session. Therefore, when I was trying to formulate some commonalities that I could address through this limited time frame that I have on my hand, the question that came to my mind was, what is the dharma of literature that could be the flame for all ages? Or why is this dharma of literature as a flame for all ages essential? And the answer then I got is, of course, the essentiality of life and life forms, which in our Vedic age was defined by the concept of rit, that is order. It becomes more vital to address this issue in the wake of this heightening form of climate catastrophe. And therefore, I have deviated from the title assigned to me by the Academy, and I will be talking primarily on the issue of planetary precarity and future habitability. And to do so, I would primarily be discussing about literature, the role of literature, and essential to it, the acts of reading and critique. These are times when acidification of water, chemicalization of soil, and weaponization of air have already been made possible. And these are also times when we are having this discussion around the sixth massive extinction of the planet. So we are living in the age of the Anthropocene, that is to say, where the sixth massive extinction of the planet has already not just been imagined, but we are heading towards it. Whether it happens or not, that is another matter. But of course, the thing that is central to our imaginative gauge is the idea of how or through what frameworks we can mitigate those the ongoing climate catastrophe. In so doing, what becomes essential is the idea of the interconnectedness of life. It is not that literature has not addressed this idea of interconnectedness of life, but the fact remains that we are not willing to listen to it or to engage with this idea of interconnectedness. Life as we know it and as we understand it, it arrived before we human beings arrived on this planet, which essentially summarizes the fact that life was already there when we humans arrived, and therefore it becomes our dharmic duty to preserve those life order for the future generations to come. And how do we do that? We do that through the tool of literature, because literature acts as a bridge between the present and the future, and as a bridge between being and becoming. So when we read, we become fellow travelers. And in this very act of literature, what is possible is the act of not just the cognitive mapping of our collective solidarities, but also emotive mapping of our future pathways. In so doing, literature provides us new ways of looking at the world. It is through words that we can make the world. Of course, words need to be accompanied with actions. Otherwise, it will essentially boil down to the same idea that what Troilus and in the play, Troilus and Cressida, in Shakespeare, Troilus addressing to Cressida, he says that words, 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 no matter from the heart. And he tears the letter and throws the letter away. So words, to make sure that those words match with our actions, the point that I'm trying to make is the point that reading and critique are two activities which need to be integrally tied in our quotidian practices. The idea of interconnectedness is the idea that humans cannot live this life in isolation, and that all forms of life
on this planet are interconnected. Life, in fact, arrived on this planet as a series of interactions and engagements between visible and invisible organisms. This idea has been advanced and also it prefigures in not just the Vedic literature, but also in contemporary writers. For example, in Rig Veda, there is a passage, beautiful passage, which says that this, that अंतरिक्ष से पहले सत नहीं था, असत नहीं था, क्या था, कहाँ, किसने ढका था, उस समय तो आकाश अतल जल भी नहीं था. This can be tied very beautifully with the idea of the Panchbhuta Siddhant, which foregrounds the view that from the space from the Brahman, arises the space, from space arises air, from air arises fire, from fire arises water, and from water arises earth, the earth that we inhabit. This is also prefigured in one of the beautiful passages written by Tavish Khair, which I will be quoting in this talk, in which Khair goes on to say, and this comes in his latest novel, that is The Body by the Shore. And Khair, and I quote, and beyond that, beyond what we conveniently call singularity, which is the point where human thoughts and equations stop. Or take this smaller and seemingly easier trail. Your human cells hold up to 25,000 genes. But there are at least 12 million other genes inside you too. They belong to the microbes in your body. Some microbes are useful to us, all except 100 or so are harmless. Now, what story out of those 12 million and 25,000 possible stories do you want to tell me as your individual story? So this idea of individuality, it has been, downplayed in this notion and framework of interconnectedness. Therefore, to renew our dharmic relationship with this planet, I argue that it is vital to turn our gaze to literature at times when denialism and populism are at the peak. And there are various incidences of denialism and populism. For example, Trump's recent instance where he has, openly went on to claim that there is no such thing as climate change, just ignoring the claim of 11,000 scientists made just a few years ago that climate change is happening and it is a real fact. And there have been numerous evidences which suggest that we are heading towards a massive collapse in terms of the health of the planet. There was recently an advertisement by the mobile company in Sweden, which puts forth very candidly that there is no such thing. So carbon dioxide, this is what it goes on to say, that carbon dioxide is not responsible for the environmental degradation. And then to prove it, there were multiple ad campaigns which followed. In the same way, Nestlé's CEO, a few years back, he goes on to say, he went on to say that water needs to be privatized. So, and when we talk about this ongoing COPs, which happens everywhere, each year in different parts of the world, which the aim of which is to reduce the overall temperature of the planet by 1.5 degrees centigrade, you'll find that 33,000 dossier document, it consists of 33,000 dossier document, and not a single instance you will come across where it mentions where it acknowledges the ongoing climate catastrophe. So these are the silences which need to be addressed, and it could only be addressed through literature and, of course, through acts of our reading and critique. Reading and critique are instances where we, not just engage with the present moment, but we also, in so doing, we remediate the past and reshape the future. Reading and critique are also acts through which we agree to disagree.
These are acts which are very important for us in ways to acknowledge the alternative frameworks and also the fact that all life forms are important. A point that is very powerfully evoked by Donna Haraway in her latest book, Kinship. So I therefore argue that reading, if we see reading as an act of breathing in, then critique becomes an act of breathing out. This inhalation and exhalation is the order of this cosmos. And therefore, it is through reading and critique that we can not just challenge the ongoing or the pervasive structures of extractive regimes, but also uh, remap a better way of collective solidarities. At times, when listening, seeing, even witnessing are collapsing in remarkable ways, it is equally important to renew our, analytical framework, because this collapse in our imaginative framework also marks a collapse in our epistemological values of truth, freedom, collective futures, so on and so forth. It becomes a so reading and critique become a kind of an exercise in which there is always a kind of an ongoing transaction or ongoing engagement with the living and contemporary reality. This is exactly what Mikhail Bakhtin argues in his book, The Dialogic Imagination of 1967, in which he goes on to suggest that the novel genre has a strong bond with the continuing, ongoing processes. It is never, it never reaches a fixed moment. So when I'm talking about reading and critique as the flames of our, the future of this planet, it is also very important to examine this thesis of futurity, which is ingrained with this acts of reading and critique. Because when we read and when we critique, we also get to know, we also get to, uh, have a cognizant understanding of the fact that there are other ways of belongingness as well. So I will stop it here, and I think I'm happy to take up questions at the end. So 20 minutes. Yeah. Thank you for keeping to time. Now I'll request Mr. Krishna to make his presentation. Good afternoon. Hello. Is it okay? Yeah. So good afternoon, everyone, and respected Chair Dr. H.S. Shivprakash ji, fellow panel member Om Tiwari ji, and friends. We have heard about the literature and its importance from an environment perspective. Now, I will probably take it a bit further more and look at the importance of the dharmic literature in specific in the contemporary world, right? Beyond the realm of environment from an overall perspective. Now, before proceeding with that, dharma has multiple definitions and interpretations. So, from a modern society perspective, let us look at what is dharma. There are various words which is actually describing dharma. It is a moral code of conduct. It's a righteousness, duty of every citizen, and it's a framework for ethical and moral living, etc. So among this plethora of definitions, I'll probably take one which is easier for me to sort of understand and follow, which actually says dharma means doing what is right and refraining from doing what is not right. It's very simple. It's like a do's and don't, that I have to do what is right and I have to refrain from doing what is not right. Now the question comes, how do we know what is right and what is wrong?
So because right and wrong are relative terms, what is right for me may not be right for you, and vice versa. So this is where I think the dharmic literatures which we are blessed in our country comes into help. We have got dharmic literature cutting across all the Indic religions, be it Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, starting from Vedas, Vedangas, Puranas, Itihatas, Jain Agamas, Buddhist canons, Guru Granth Sahib. You can take any of those Indic religions. We have got a number of dharmic literature from there, which gives some sort of a principle or a guidance of what is right and what is wrong. And all we need to do is just follow that. And that is where the dharmic literature is applicable to life in any parts of the history. Now, coming into the contemporary world, right, we need to probably understand how these literature, right, if you take the latest of them, it is 800 years old. Now, if you go beyond that, 1000, 2500, it actually goes beyond the antiquity. Now, in a world where even a book which is written about 50, 60 years before is getting obsolete, how can we say that these literatures which are written more than 1000 years back, how we can say that they are actually important, relevant? Can they not be obsolete? So I'm actually trying to find some answers to this question in this particular small time which I have been given. Now, if I look at the modern world, the contemporary world of the 21st century, compared to what we were earlier, what I can see is that we have made tremendous development, especially in the field of science, technology, medicines. Take any field, there is a lot of development which actually makes the human life easier. Take medicine, for example. Every day there are new medicines which are coming into the market, which resolves or cures more no, complex diseases which the human race have seen. On technology front, there are a lot of innovations which have come. Latest, if you can take the artificial intelligence, which is the buzzword, it is not only restricted to technology, but you take any of the fields, right? Be it medical, academic, writing, manufacturing, and even transportation. The artificial intelligence as an innovation is actually making people not to think. The earlier innovations were making people not to physically move, but the newer innovations are making people not even mentally move. Even 500 600 pages book can be summarized by this particular tool in some few pages, and it can even tell you, it is verbally, not even you have to read. So that is the kind of innovations we are seeing in the modern world. Now all these things will actually make the human life easier and make the human a very comfortable one. But is it the case? If you look at it, on the other side of the spectrum, we have seen the modern life is getting more and more stressful. The lifestyle, the sedentary lifestyle is adding into more diseases. While there are more medicines coming in the medicinal field, the diseases on the other hand is also increasing, both mental and physical, which makes a human being vulnerable to many issues. That is on the lifestyle. Secondly, the violence is increasing. If you look at the crime rate, even in small places, the violence rate is alarmingly high, especially violence against women, folk, children, road rage. If you look at the number of newses which is coming in our papers and magazine, which is quite alarming. The anger of a particular individual, which is influenced by stress, is going beyond redemption now, right? Now, all these things lead to social disharmony. We are connected technologically. We have got a very small instrument called as cell phone, which connects anybody anywhere in the corner of the world. But physically, they are all disconnected. The social harmony is totally lost, right? We have got no more and more. Now we are getting into more and more materialistic life, profit driven. And even if you look at the noble professions, as we call it, teachers, doctors, etc., they are also getting commercialized and profit minded, right? Environment degradation, our friend Om Divedi ji has actually elucidated it very clearly. We have got a number of issues due to human interventions, be it deforestation, be it extreme weather happenings like heavy rains,
floods, etc., which is not seen in the earlier years, which is having a lot of frequency today, right? So we have got environment which is degrading day by day, right? So if you look at the overall contemporary society, there are a number of challenges, both from an individualistic perspective as well as from the social perspective. Now this is where I think the dharmic literature come into play to enhance the life of an individual as well as the society in a number of ways. If I have to go through the entire list, it will take more than a week or so. So I'll probably touch upon 2-3 examples of how dharmic literature at sort of takes care of these things, which is actually plaguing the modern society. Let us look at stress first, right? Um, the study says that the chronic stress today is the most life threatening disease, more than a cancer or a heart attack, right? The chronic stress is impacting individual and then creating lot of health hazard. Now, what is the answer from a dharmic literature perspective? I probably quote something which is very well known from Bhagavad Gita, which is Karmanyeva Adhikaraste Ma Paleshu Kadachana. You have right to perform your duties and not the fruits of your action. In a simplified way, you do your duty, don't attach much importance to your results. Now, the stress comes in because the expectations are high, but what is achieved in the actual is not meeting the expectations. So there is a big gap between the expectations and the actions, so the individual getting stressed. If we can take this cue from the Bhagavad Gita, which says that do your duty without attachment, then probably half of the issues can get resolved, because at the end of the day, you are not getting stressed about what is going to come at the end of your duty, right? So other thing which the scripture says that you practice meditation, which brings a lot of focus to you. It says that samam kaya shriyo grivam dharayan achalam stiraha. Keep your body, head and neck straight, steady and still, and then focus on what you need to do. The focus brings a lot of calmness to your mind, which helps you to face situations which are more stressful. It's not only our the Hindu scriptures which talks about that. The Buddhist suttas, for example, Satipatthana Sutta, which gives lot of importance to the mindfulness. Mindfulness means be there in whatever you are doing. People are doing something, but their mind is elsewhere. So our scriptures talk about how do we actually align these two to bring the mind and action together. And in fact, these are all used by the modern technology. Mindfulness based stress reduction programs uses these to bring in a lot of mindfulness which the corporates conduct. And talking about violence, which is basically coming out of anger, again Bhagavad Gita has a recipe. It says that krodhat sammohat smriti vipramaha smriti brahmshat buddhinaso buddhinashat pranasyati. Ultimately, if you have anger, it will ruin you, it says. So control your anger. It is very, very important that the anger is controlled, so that you don't get into violence and then ruin yourself. So we can take a clue out of it. Now, this is on the mind side. On the physical side also, our scriptures have a lot of things to do. We all know about yoga, the Patanjali's Yoga Sutras, which actually talks about how do you make physically active. Again, we know that we have a very, very sedentary life. Most of the time we sit, spending our time sitting, our walking is gone. Medical studies says that about 4 to 5 miles of walk is essential for a human being, but that is gone now. So we need to resort to forcible physical exercises, and that is where I think the yoga comes into picture. Apart from yoga, our literature also has something known as Ayurveda, which I think you all know. So Ayurveda talks about how to prevent diseases. It actually has a prescription for every season, every rutu. So for hot season, this is actually the food you need to take. For a cold season, this is the food you can take. So it prescribes the food as a medicine, which prevents most of the diseases which is actually faced by the modern world. Now, both physical and mental aspects is something an individual is taken care. Is that all? Is that all that we need to take care of ourselves? No. Our literature goes beyond that. It talks about the extended world,
starting from the parents. Now we have seen that the old age homes are increasing, which is bringing a lot of conflicts and stress into the family because the support system is lost. The moment you start throwing your parents outside, I've seen news items where they are just dumped in the roadside like a waste commodity. What happens at the end of the day is your support system, apart from the moral and ethical responsibility of taking care of the parents, the support system is lost, because of which a lot of issues are happening at the family level. So probably the matru devo bhava, pitru devo bhava, which our scriptures say, is something we need to remember and then bring it back. Next, apart from the parents, it talks about the friends and relatives. Our scriptures, which says Aditi Devo Bhava, is another example which I wanted to quote, which emphasize that we need to take care of our friends and relatives. It's not that we need to socialize by going into a party, but bringing them, getting that connect also enhances our social life beyond the life of a family. So that is another aspect of the literature which actually gives a lot of importance to our extended family. Now we talk about law and justice and then the workplace, right? The Dharma Sastras or the literature has a number of recipes on that, both from an organizational perspective and the individual who are working in our organizations. Now take Arthasastra, which says that leaders must appoint people based on their skills and ethical standings. So it gives two key things as very, very important. One is the skills are important, apart from the fact that the ethical standards which they are bringing into an organization is also important, which is very, very relevant in the contemporary world. Because the modern management theory says that the moment you hire a right person, 50% of the issues are resolved. Then the rest is in terms of training and then imparting the skills, etc. So like what the Astasastra says, take the right people, hire the right people, which actually goes beyond saying this. It says that you need to conduct a fourfold test and then put the person in the right place. It says that people who are successful in the Dharmopada, you put them as a judges and commissioners. People who are good in Arthopada, put them as your treasurer, finance minister, etc. And then from people who are good in Kamopada, put them as god frontiers, etc. And then Bhayopada as the king's household name. While it may not be exactly relevant today, it is important to assess the skill of an individual and then put at the right place, which is in fact confirmed by our number of literature, including Niti Sara. Then project management today talks about planning, execution, resource management, etc. It's not new. It's there in our Sastra. Arthasastra again, book 1 says that a minister should focus on planning, resource management, risk management, and execution. This is again, now if you look at any of the modern management book, they talk about all these things. They talk about the importance of risk management, the project management techniques, such as resource management. Everything is covered in our dharmic scriptures. Then we'll talk about the ethical practices of work, because we see that now everything is getting commercialized, everything is money minded. But our scripture says that process over outcome. Mahabharata, for example, says that you have to have a proper reason duty rather than blindly imitating others in what you are doing. You need to be truthful. Arthasastra actually says that you need to provide fair wages to workers. You need to have ethical profit. It's not the sake of profit. Profit is encouraged when they earn through just and means and used responsibly. Then you can create wealth, but do create the wealth following the righteousness path. Don't swindle money for the sake of it. And when it comes to conflict and crisis management, providing law and justice, it's not that you need to be only follow a very strict process. You also follow kindness. It actually emphasizes on situational leadership, which again is one of the modern management mantra, which tells leaders when we go through training, etc., saying that you need to have the balance between strictness and mindfulness, which is coming from our Manusmriti. So we talked about the relevance of Shastras for an individual, for an extended society, relevance at the workplace.
I'll probably now go into the overall societal contributions as a group. There are now we talk about corporate social responsibility, where there are big companies which allocates millions of dollars for giving back to the society. But again, this is something which is followed here based on our Dharma Shastra. I can quote a couple of examples. We have got a community called as Nagarattar in Tamil Nadu, where they are all attached to a particular temple as a group. So it is mandatory for every person in the group to contribute a fixed percentage of their income towards a common trust, and then the money from the trust is spent on the social activities to do whatever is the dharmic activities they perform. We have heard about Langar, which is providing free meals at gurudwaras, and that came into help in pandemics such as COVID. So there is a lot of social responsibility attached to the various societal groups. Again, coming back to the environment, I would like to quote the verses from the Bhu Suktam, which actually tells us how our Shastras gave importance to the overall environment. I'll just read that. It says, Mother Earth, whatever is within you, whatever is within your womb, whatever food emerges from your body, grant those to us. My Mother Earth, I am your son. They say that, Mother Earth, you are my mother. So how do I harm you? The rivers that flow constantly, both day and night, equally without fail, may that earth, filled with various divisions, grant us wealth and shower all blessings upon us. Mother Earth, whatever we plant in you, may it go swiftly. O purifier, may we not destroy your hidden or sacred parts. Let enmity cease between humans. May the platforms, valleys, and plains, whatever powers hold the roots of various energies, may that earth grant us the vast land abundant with riches. So it is basically a prayer towards earth. So we need to be conscious of what we are doing to earth, without which we can't live in the world for long. So finally, I'll probably quote this verse from Maha Upanishad, which says that Ayam Nijaha Paroveti Ganana Laguchetasam Udayacharitanam tu Vasudaiva Kutumbakam. It is our dharmic scriptures which gave the word Vasudaiva Kutumbakam. This is mine, that is his. Say the small minded. The wise believe that the entire world is a family. There is a verse in the Tamil Sangam text Purananuru which actually says more or less the same thing. Yadum Mure Yavarum Kelir, which means that the entire world is my place and everybody is my relative. In this world which is fraught with conflicts, wars, battles, ego clashes, constant fights between nations, it is very, very important to remember these words from our dharmic literature, which talks about the entire world as their own family. With that word, I thank Sahitya Academy for giving me this opportunity. Thanks a lot. Bye. Are there any questions from the audience? Both of the speakers talked about dharma, and this title of the session is also that. The first speaker talked about COP. It is a About little what? COP summit. He mentioned COP. Okay. The very people who are violating this, they have withdrawn from the COP summit. The US particularly. So where is the road ahead when total violation of the dharma is taking place? Whatever you told, total violation is taking place. So where we are heading to when it is not applied now? I made it very clear, I think, that there is a acute sense of denialism ongoing in these acts of demagoguery that we are seeing. So I also mentioned that Trump has denied that there is any such thing known as climate change.
In fact, US, as you also just now pointed out, that it has withdrew itself from this climate signing of this treaty, right? So I don't think I need to say anything, because you are just saying the same thing what I have already advanced. Over at the But what is the way ahead? If you point out, I have also said about it that the way ahead lies in dismantling the structures of denialism. That this is a world of information. Information is available everywhere. But the way the platforms are being used, in these information can be controlled and also manipulated, and this is exactly what is happening around the world in all forms of institutions. So the way ahead, of course, lies in re-engaging with the re-engaging with the a kind of uh, or I would say the way ahead lies in our engagement with the information that is available around us, and then also be brave enough to critique those structures of regimes that are ongoing. Critique is central to the whole idea of my presentation, because critique only comes when you are willing to engage with the kind of denialism that is ongoing. So critique, of course, it creates a pathway for the future, because if you agree with the power structure, or if you become a part of the echo chamber, then there is hardly anything new going to come out. So I think the way ahead lies in a dialogical method of thinking. And the second speaker talked about the appointments at various status. Our PM Saab talks about Parivarvad. Okay, he's little bit, he's avoiding that in his category of appointments. But here also some pattern is approached, Gujarativad and all, you can understand. So where is the dharma here also? Yeah, actually, the prescription is to bring in those criteria. What is there is a different issue. The idea is we need to go back to our roots and then look at the principles and concepts of what is our dharmic literature talks about, and then bringing them back. Because if you look at it, if you look at any corporate, the HR training book talk about all these things. They said that you need to be impartial, you shouldn't have any bias while recruiting, because that will eventually impact the overall organizational ability to do the business. So we need to probably relook at the way we are doing it and then change the way. I think that is the only way we can probably improve from a hiring perspective. Any other question? Okay. So no more questions. It's very safe not to ask any questions. The two speakers, in different ways, have talked about the dilemmas, dharmic dilemmas. In the Indian languages, we have the word dharma sankata. And one of the reasons why dharma sankata, crisis of dharma, has occurred is because the enormous confusion about the meaning of the word of dharma. And literature always tries to seek the meaning of dharma. It does not oversimplify what dharma means. The Mahabharata, for example,
In the scene of Draupadi Vastrabharana, the molestation of Draupadi by Dushasana, Pandavas have lost the game. They become the slaves of Kauravas. And now Draupadi is the wife of Pancha Pandavas. She is the slave of slaves. So Dushasana drags her into the open court. She asks, addresses the whole audience, Sabha, is this in keeping with Dharma? Nobody answers the question. Then in the Mahabharata, the whole of Mahabharata, the greatest authority and the idea of Dharma is supposed to be Bhishma. Impeccable character. Supposed to be. She goes and asks him, Pitamaha, please tell me, is this in keeping with Dharma? Even Bhishma has no clear answer. There is a long silence. Then he gives a reply of sorts, which saves the situation. He says, your husbands have lost the game of dice, so they become the slaves of Kauravas. And you are their wife, and it's your duty to serve them. You are their slave. So, Kauravas are the masters of your masters. You're a double slave. So, what he is doing is not in contravention of Dharma. Well, how the situation resolved, all of us know. In one version of the Mahabharata, in Suptanka's edition, for example, Lord Krishna does not appear. There is the hooting of owls, signs of some bad omens. Then they get afraid and stop this strip show. But in the Bhagavata period, Krishna appears and he blesses Draupadi with so many saris. So Dushasana pulls them, gets tired. He gives up. Now, I want you to consider this episode very carefully. Was this according to Dharma? Bhishma says yes. But the question that Draupadi is asking is not whether this is right according to relative concept of Dharma. One of the meanings of the word Dharma is duty. Just changes from time to time. Praja Dharma, Raja Dharma. When there is no Raja, where is Raja Dharma? Stri Dharma, to obey the husband. When the earning woman comes, the whole scenario changes. Kula Dharma, Jati Dharma, and then Apad Dharma. Some people are given the privilege, they can do anything. That's cut out, Apad Dharma.
In times of difficulty, you can do anything. These are the limited meanings of the word dharma, which are time bound and space bound. But within Sanskrit, we say, dharmo rakshati rakshita. Which dharma do we mean? Do we mean dharma in this relative sense? When Buddha gave his first sermon at Saranath, Dhamma Chakka Pabbatta Suttang, Dhamma as Buddha used, was this in this sense. Buddha used the word Dhamma in the sense of cosmic law. Sabbe Dhamma Anatta. The whole cosmos is without a permanent soul. Yes, Buddha Anusasanam. This is the Shastra, Lord Buddha. In Sufism, for example, they talk about two levels of truth. Al-Haq and Al-Hakika. Al-Hakika is the realm of relative truth, whereas Al-Haq is the eternal truth. So when Buddha talks about Dhamma, it's about the eternal truth. These days, certain forms of limited versions of Dharma are being used as eternal, as if they mean eternal Dharma. This is the greatest confusion that we are living through at present. Because the two speakers have talked about the crisis of contemporary times, let me go further back in history. Because the problems of the contemporary world we have inherited from the past. And one of the biggest historical fault lines in the modern times in India is that we translated the Eurocentric Judo-Christian term religion into dharma. We talk about Bauddha dharma, Jaina dharma. Buddha never taught Bauddha dharma, he taught Dhamma, which is irrespective of any place, time, condition, is the truth. And what are those truths? Chaturi Ariya Satchadi, four noble truths, which are inviolable. In the Vedas, there was a word for the cosmic order, which was called Rita, from which root comes the word Ritu, seasons. Like the cycles of seasons, unchanging. Cycles of diurnal cycles, day and night, unchanging. Cycles of life, Jara Dukkha, Janma Dukkha, Jara Dukkha, Marana Dukkha, being born, aging, and dying, all Dukkha. Dukkha Satcha, the sorrow is the eternal truth, which is the first noble truth. So what is the relationship between literature and dharma? This I want to focus on a little bit. T.S. Eliot considered Bhagavad Gita not a great work of religion, but a great work of poetry.
Because he says that great poetry does not endorse a pre-given faith, a belief system. It gives you the experience of what it feels like to believe, to have a belief system. This is what great Greek drama does. This is what Shakespeare does in his plays. There was something called the Elizabethan World Order, where the royal succession was biological. But the first sentence by Edmund the Bastard is, why should bastards rule the world? Why only legitimately born people? So that was the new ethics being born of bourgeois culture, what we call capitalism. So the changing dimension of dharma in the limited sense is questioned and re-questioned and explored and examined in great literary works. Natya Shastra tells us, Kavi Vibhavasa tells us, and the first Kannada book of poetics, Kaviraja Marga, talks about it. Kavya is the exploration of Chaturvida Purusharthas, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Apart from other poetic aspects, the first Kannada poet, Pampa, is Adi Purana, which is the biography of Adinatha Tirthankara, great Jain, the first Jaina Tirthankara. He says, Bedaguvinelli Dharmabhavam, Kavya Dharmabhavam. I am eliminating here Dharma, the eternal truth, Jida Dharma, and Kavya Dharma. Poetry has its own. So he says in his story, out of his two works, Adi Purana, the Jaina epic, is the exploration of Dharma in that sense. Whereas his Jaina version of the Mahabharata is the exploration of Dharma in the limited sense. So we should be clear about what precisely do we mean by the word Dharma. Otherwise, just anything can be Dharma. How can Dharma prevail in a society in the age of globalization, where profit is the be-all and end-all of things? The extraction of surplus value is the meaning of all meanings. So we have to see, and I think the greatness of a literary work depends on addressing such questions. Surprisingly, in the Tamil tradition, at first, only 3 Purusharthas are mentioned. In Tirukkural is Aram, that is Dharma, that is duty in the limited sense, not in the Buddhist sense. Porul, Artha, Inbam, that is Kama. Kama, not in the sense of sex, but in the sense of love.
which does not exclude erotic relationship. In fact, the third part of Tirukkural is a series of very beautiful erotic poems. But the Purushartha of Moksha comes later with the spread of Jainism and Buddhism. In Silapadigaram, during the journey from Puhar to Madurai, Kandagi and her husband Kovalan are accompanied by a Jain nun, Kovindi Adigal, who represents Dharma, the cosmic, on the way. And when the story has this tragic denouement, some people who read only Sanskrit literature say that there is no tragedy in Indian literature. They should read Silapadigaram. Silapadigaram was not only a narrative piece, it was also it was a stage piece. It was staged. So when Kovalan, the tragic hero, the protagonist, is subjected to this unjust death sentence, Kovindiyadigal says, this is the result of his past karmas. So karma, so the release from this cycle of births, that is the Chaturtha Purushartha, Moksha. In Adi Purana, for example, the two sons of Prutu Chakravarti, the Adidata Titankara, Bharata goes around conquering the world, that is Kshatra Dharma, is exercising Kshatra Dharma. Whereas Bahubali, his father, who goes into Samyas, he is ascending towards Moksha Samrajya. So two Purusharthas are depicted parallelly, and there is a similar structure in Kalidasa's Raghuvamsha. The worldly triumph coupled with juxtaposed with the other kind of the spiritual triumph. But these were traditional Purusharthas, but the Bhakti period brings another value, which is none of these, which is just the surrender to the divine. Before I conclude, I'd like to take a look at the concept of Dharma and its relation to literature by invoking some technical terms from Buddhist philosophy. Because Buddhist scriptures give elaborate description of these terms. What is Uttadharma? Sahaja. Things, river, water flows down. That is Uttadharma. And it's something that's the opposite of this, called Bija Dhamma. When the seed sprouts and becomes a tree, this is Bija Dhamma. And then there is another kind of Dhamma. And this Bija Dhamma is also life order, nature. And then human consciousness as another kind of Dhamma is called Chitta Dhamma. And this Chitta Dhamma is determined by what is called Kamma Dhamma. Buddha talks about Kusala Kamma, Akusala Kamma, good deeds and bad deeds, which
determine the nature of our thoughts, which shape our experience. And how to release Chitta Dharma from Kamma Dhamma and attain Nirvana is Dhamma Dhamma. This is also called Abhidhamma. One of the tripartite divisions of Buddhist scriptures is called Abhidharma, the higher form of Dharma. That is Dhamma Dhamma. I think literature predominantly examines the relationship between Chitta Dhamma and Kamma Dhamma and its impact on human beings. Though the spiritually oriented works, for example, Kalidasa in his plays, poetry, is doing this, whereas Ashwagosha, the first Buddhist poet, is exploring Moksha Dhamma, the Dhamma Dhamma in his work. So we must be clear and make it clear to others what is being meant by Dharma, by whom, whether in the limited sense or the broadest sense. And the basic meaning of the all kinds of the broader sense of Dharma is the order, where the word religion does not have these connotations. It comes from the Latin word religare, which is also the name of an insurance company, by the way, which means to bind, to tie, is the duty. The emphasis is bondage. So in Judeo-Christian traditions, commandments are important. And commandments are absolute. Whereas ethics in Buddhism and other Indian traditions is valid only when it's based on the cosmic order. Basavada says, how can there be Jai Dharmada Moolamaya? Compassion is the basis of all dharma. Kabir also talks about this. Without daya, how can there be dharma? So we have to reflect on these things, and very happy I think we organize this session on Dharma literature, though the phrasing of the session is somewhat ambiguous, ambivalent. I hope we have tried to, lessen that ambiguity to a little bit in this brief session. And thank you all for listening to us patiently and mostly unquestioningly. Thank you. With that, we extend our heartfelt gratitude to our esteemed chair and distinguished speakers for this enlightening session, for their deep insights and thought-provoking perspectives. And thanks to all the participants among the audience. And thank you also for raising few questions, though there were few. So now we'll take a short lunch break. We invite you all to reassemble for our third session of the day, that is going to be on medieval Bhakti literature, Force of Unity. And this session will explore how Bhakti literature transcended social barriers, fostering unity and devotion across communities. So that will be at 2:30. So please let's reassemble at 2:30 for the third session. Thank you so much once again. Thank you.
Namaskar and welcome to the post-lunch session. Medieval Bhakti Literature, Force of Unity. Bhakti literature has been a unifying force in Indian literary and spiritual traditions, breaking social barriers and fostering a deep sense of devotion and inclusivity. Through poetry, music, and philosophical discourse, Bhakti saints challenged hierarchies and brought people together in the spirit of love and peace. We are honored to have amongst us Sri Surya Prasad Dikshit ji as the chair of this session, as well as our other esteemed speakers who I'll be inviting one by one on stage. Shri Surya Prasad Dikshit ji प्रख्यात हिंदी लेखक और विद्वान हैं। आपकी 100 से अधिक पुस्तकें तथा लगभग 1000 शोध आलेख प्रकाशित हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वहीं के पत्रकारिता विभाग के संस्थापक तथा अन्य 12 विश्वविद्यालयों के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं तथा के बिरला फाउंडेशन के व्यास सम्मान समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। He is a recipient of Sahitya Bhushan by Hindi Sahitya Sansthan, Deen Dayal Upadhyay Hindi Samman, Sahitya Vachaspati, International Man of the Year UK, and so many other awards. It's a great pleasure to welcome on stage the chair, Shri Surya Prasad Dikshit ji. I would now call upon K.K. Geeta Kumari ji. She is a professor of Sanskrit. Her research interests include Sanskrit literature, philosophy, English literature, and ancient scripts. She is the head of the Department of Sanskrit at the University of Calicut and has several publications to her credit. आप भारत शिक्षा रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार सहित अनेक अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं। श्रीमती के गीता कुमारी। Joining us on the dais now is Shri Pradeep Jyoti Mahanta, प्रसिद्ध असमिया विद्वान हैं जो असम और इसके पड़ोसी क्षेत्रों के सांस्कृतिक इतिहास, प्राचीन असमिया साहित्य, महाकाव्य और भक्ति परंपराओं आदि पर अपने कार्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। He has authored more than 10 published books in English and Assamese, besides a good volume of research publications in various journals and anthologies. He is currently associated with Royal Global University, Guwahati, as a professor at Royal School of Languages. Shri Pradeep Jyoti Mahanta ji. अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुधा शेषयन को, former Vice Chancellor from the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Chennai, has been a medical doctor, teacher, administrator for over 30 years. She has more than 30 titles to her credit in literature, spirituality, history, biography, and social values. She writes regular columns in popular Tamil magazines, has edited a textbook of anatomy in 3 volumes, has compiled the translated version of the Britannica Concise Encyclopedia in Tamil, and a few quiz books, has translated former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam's book into Tamil, which was also released by him. To start the session, I now hand over the mic to Shri Surya Prasad Dikshit ji. मित्रों, आज के विषय से आप सुपरिचित हैं। मुख्य विचारणीय विषय यह है कि मध्यकालीन भारतीय काव्य, उसमें एकता की कितनी बातें की गई हैं। हम लोग लोकोक्ति में, मुहावरे में तो कहते ही हैं कि एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है, यूनिटी इज पावर। इसको कवियों ने किस रूप में कहा है, क्या समस्याएं उठाई हैं, इसी पर विचार करने के लिए हम सब यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। मेरा ख्याल है कि 4 विद्वान वक्ता हैं, 1.5 घंटे का समय है, उसमें औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए
आपके प्रश्नोत्तर के लिए भी समय रखते हुए औसत 15-15 मिनट का समय हम लोगों के हिस्से में आ रहा है। और चूंकि विद्वानों के बीच बात करनी है, इसलिए सूत्र संकेत भी पर्याप्त होते हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि हम लोग अपने समय का ध्यान रखते हुए इस विषय में पुनरावृत्ति से बचते हुए अपने जो नए उद्गार व्यक्त करने हैं और चिंतन के जो नए सूत्र देने हैं वो प्रबुद्ध श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहले प्रार्थना मैं कर रहा हूँ ज्योति जी से, वे इस विषय का शुभारंभ करें। गीता कुमारी जी से। Distinguished dignitaries on the stage and off the stage, it's a beginning. So, and regarding Bhakti movement, Bhakti is the subject. So today I am fever and not good throat, yet also I want to begin with a shloka. Balam nitya nibhananam, balam nitya nibhananam, trinayanam, balenduna bhushidam, नीलाकार सुकुन्दलां सुललितां नित्यन्नदानप्रदाम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतिं सारस्वतार्थप्रदाम् ताम्बालां त्रिपुरां शिवेन सहितां ध्यायामि 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 मूकाम्बिकां ताम्बालां त्रिपुरां शिवेन सहिता ध्यायामि मूकाम्बिकाम्. Dear friends and teachers, I am presenting on the emancipation through love and bhakti, a path to the women's empowerment. And we can, when we are going through the bhakti movement, we can find out so many female saints who are used the devotion and love, pure love, as the tool for emancipation and empowerment of women. So that was the content area. And I know that the time is very limited, time and we delayed to start. So I know about the shortage of time. So I will just go through very quickly. The Bhakti movement originated during the 6th, 7th century in South India as a literary and ideological paradigm with a religious basis that later spread all over the country. The word Bhakti itself means devotion in general in Sanskrit, thus emphasizing on forming deep and personal connections with God. This movement, which started off as a counter movement to the excessive system of Brahmanical dominance, primarily questioned the caste system, feudal system, and Sanskrit supremacy. Regardless of the caste and class barrier, one of the major features which united everyone in this movement was spirituality. Although centered on Shiva, Vishnu, or Devi, the Bhakti movement varied across different regions with their own pain and rituals, spin or on rituals and traditions. Several factors influenced the emergence of the Bhakti movement, including the influence of the Sufi traditions in Islam, the downfall of Jainism and Buddhism, the fragmented nature of the state, qualms about heterodox religions, that is Buddhism or Jainism, and inequality in the society. People from various backgrounds, including peasants, artisans, blacksmiths, gardeners, and the literate and the non-literate, participated in the movement. They also believed in the concept of personal God and devotion rather than on rituals as the pathway to redemption. Most bhaktas, followers or believers of the Bhakti movement, choose their own gurus in order to
create a report between religions. They used vernacular languages like Tamil, Kannada, Telugu, and Hindi to write write and communicate as opposed to Sanskrit. Also, they traveled across India. Vishnu across India. Preaching infinite love, loyalty, and submission to the Lord. Guru Nanak and Guru Ramdev had covered long distances spreading their messages. Their aim was to create an egalitarian society, and religion became a secondary factor. However, the South Indian Bhakti movement had its downsides. They did not make conscious efforts to eliminate Brahmanical supremacy, nor did they try to overthrow the traditional Hindu rituals. When the movement ended during the 10th century, the composite groups combined with their Hindu castes in the end. However, they did succeed in making Brahmins accept the right of lower caste people to speak up. Some of the early Bhakti saints were Ramanuja, Ramadeva, Kabir, Mirabai, Vidyapati, etc. Many, including Raidas, Kabir, Nanak, and Tukaram, were from lower levels of the society. The South Indian saints can be classified into two categories: the Alvars, who were Vishnu devotees, and the Nayanars, who were Shiva devotees. They wrote hymns in Tamil. The collection of the work of the Alvars is called Divya Prabandham, and that of the Nayanars, Tevaram. The North India, there was an influence of Sufi tradition. They were classified as Nirguna Bhakti and Saguna Bhakti. Nirguna Bhakti is the devotion to God with form like Vishnu, Krishna, or Rama. Tulsidas, Mirabai, and Surdas were part of this group. Saguna Bhakti followed, prayed to the formless abstract God. They believed that God is philosophical and beyond human imagination. Kabir, Guru Nanak, and Guru Dadu Dayal followed this school of thought. He opposed, as opposed to Manusmriti, in the Bhakti movement, male saints did not have particular privileges compared to women. The Manu, the female is subordinate to the male and outcast of the to the upper caste. But in the lives of the Bhakti saints, the last shall be first. Men wish to renounce their masculinity and became as woman. Upper caste males wish to renounce pride, privilege, and wealth, seek dishonor and self-abasement, and learn from the untouchable devotee. Romance was the recurring theme in Bhakti poems. Jain says romance is often accompanied by surrender of will, erasure of separateness, and a total appropriation of or the by another. And the moment subverts the function of the romance from a means of possession, subordination, and sedation to one of merger, total oneness, and the equal reciprocal relationship. The theme of the romance with the towards God can also be seen in works of male poets, Sufi saints, and Bhaktas. The male and female devotees take the role of woman in the romantic relationship, and God is the lover. According to Ramanujan, one of the last things they overcome in these traditions is maleness itself. Unlike other historical events which failed to record the contribution of women, the Bhakti movement extensively documented the contributions of women saints. They were really different women saints in the Bhakti movement. Some of them were relatives of male saints, and other who rebelled against the social norms. The context in which the Bhakti movement started was when the society riddled with the tradition like the sati, parda system. Women were easily exploited due to lack of education and freedom. Therefore, the works of female saints such as Mirabai, Akka Mahadevi, Andal, Janabai, etc., focus on challenging the patriarchal norms and their spiritual connection with God. Hence, their literature also reflects the surge of love to love towards devotion to God. In the following paragraphs, let us look at the position of women in the Bhakti movement, how it helped with the emancipation of women, and analyze some women saints who were celebrated during the time and their contribution to empowerment of women. Compared to men,
why were women were heavily influenced by the Bhakti movement? That is a question. To answer this question, one needs to deliver deeper into oppression and just injustice faced by them. During medieval India, the marriageable age of for girls had been reduced to 8. Widow in Gobira the Grihya Sutra, we can find out that Nagniga Shrestha. When a girl must have to be get married, then Nagniga, when she is sitting in the mud and when she is playing with the mud, at that time is the marriageable age. Like so, reduction of the age and widow marriage were prohibited, and sati was common in the communities like the Kshatriyas. Girls were considered as an economic loss because of the huge dowry payments. So they preferred sons over daughters, and female infanticides was frequent. Simultaneously, Devadas is the so-called prostitutes enjoyed freedom, financial or otherwise. Women were to exist in a form of useful to men, wife, other mother or prostitute. Even though the Parda system managed to survive among the North Indians for a while, it had little to no influence in the South. The Bhakti movement started soon after the decline of Buddhism. After the Vedic period, it is the Buddhist period that is usually highlighted due to the inclusion of women. Though Buddhism did not treat women anywhere equal to men, women enjoyed only slightly better status than in Hinduism. But it did shine light on the fact that women have higher affinity towards spirituality than men, and that they can express their emotions, feelings, and options through this devotion. That is how emancipation through love by. Uh, comes by. They use literature as a form of uh, catharsis to escape from reality, and the catharsis means the purgation, which was used in Greek mythology, and escape from reality and the question the existing oppressive structures. The recurrent themes in their poems were sexuality issues at a home, family problems, pointless household chorus, constraints of marriage and subjugation due to their marital status. But it took a long time for people to recognize their works. In addition, they had to write anonymously to avoid repercussions from society. Yeah, I will go to the that is, so I have to write so many because they challenged the social setup of that time, and the Mirabai, Akama Devi, and so many women saints are there. I am going to the conclusion that I think that is the better. Okay, then when tracing back the history of women and feminist movement in India compared to the Vedic period and the Buddhist period, the Bhakti movement does not receive enough attention. Every revolution happened with the help of powerful writers and their literature. Wollstonecraft's Vindication of Rights of Women in 1792 and Simone de Beauvoir's The Second Sex in 1947 opened a way to first and second wave feminisms. The discourse of feminist thought recollected every author and theoreticians who contributed to the emancipation of women. The Bhakti movement offered a significant number of female saints who preached love and peace instead of the bloodshed going around that time. Instead of political unity, which failed to bring people together, religion succeeded somewhat in bringing harmony. Another crucial factor to note is that regardless of the way they were treated in the society, these women had a freedom of choice. They chose to escape their abusive life from parents and husband and lived in their own terms. When they started their spiritual life, they had no burden of household chores, maintained a social life, pleasing their partner, child rearing, etc., which are normally the clipping aspects of a woman's life. By choosing the deity as their partner and husband, they only have to live up that imaginary version. This God they are praying to does not disappoint them or abuse them. These saints also had the opportunity to live
among their female saints who had the same ideologies. However, compared to male saints, they had to have faced some injustice and backlashes from the society they lived in. Despite their efforts, after the 16th century, the movement slowly came to an end. It took a few more decades for historians to dig up the works of female saints. The issues they had raised about gender roles, feudalism, Brahmanical dominance, and the caste system prevalent for many more centuries. To sum up, the Bhakti movement advocated for love and peace through devotion. Their love was intense and personal. It allowed women to bypass the constraints set by society and establish their own relationship. This love was unconditional and a form of liberation. The peace in the movement was spiritual and communal. They sought inner peace through ultimate surrender to the Lord without the division of class, and race. To formed a community of humans, and women were able to be part of this and create their own lifestyle free from expectations and limitations. Thank you very much. Okay. धन्यवाद गीता कुमारी जी, आपने दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन की बड़ी अच्छी जानकारी दी। अब मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय ज्योतिमंता जी से, जो उत्तर पूर्व भारत के भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालेंगे। Respected Chair, my colleagues in the panel, and distinguished Vidwans, I thank Sahitya Academy for inviting me to be a part of this great celebration of letters. In this particular session, what I have been assigned to talk about Bhakti literature and social unity. Devotion to the Supreme Lord in whatever form, a universal phenomenon across all religious traditions, is a unifying force that holds a community socially, emotionally, and even politically, bringing a distinct collective cultural identity to it. Devotion or bhakti, as we all know, is however a different discourse altogether in myriad forms or manifestations, conjured with religious philosophical meaning, both as a tattva and an adarsha, enduring over millennium of years till today in the civilizational history of India. Being the love for the divine, unflinching, unmotivated, sensuous, and sublime Paranurakti, Bhakti and its pravaha found revealing expositions in a huge mass of literatures, Vedic, Upanishadic, epic, and Puranic texts, and other scriptural authorities, not to speak of myths and mysteries and memories around it. The Sahasra Sirsha Purusha of the Purusha Sukta in the Rig Veda came to be conceptualized in a more concrete way. The Sitasodar Upanishad as Tamha Devatma Buddhi Prakasham Mumurkshuvai Sharanam Prapadde, focusing on the idea of Sharana or surrender to the Lord. The Brahma Sutra ascribes to Badrayana in celebrating the Leela of the Brahman Parameswara. Parameswaraisa Leelaiva Kaivallam brought a new turn to bhakti in which generations of poets and composers, ascetics and philosophers rejoiced and regaled thousands of commoners down the ages. These philosophical literatures, multiplied by scriptural works, despite the divergence of thoughts and expressions, sang a bhakti testifying to its unifying power and emotional impulse
if not on a wider social plane. Bhakti resonating in the air around the manifestation of the Lord as Vishnu and Shiva, worked as an impulse under a different social context with underpinnings of aristocracy and temple-centric ritual as well as caste rigor, stirred the minds of the Alvars and the Nairmas in the south during the early Christian centuries to sing of their love for Lord Vishnu, Krishna, and Shiva, and espousing its cause outside the doctrinal authorities. The Nalariya Prabandham, being the hymns of the bardic singers, the Alvars, restored and compiled by Nathamuni in the 11th century and instituted as the Tamil Veda in the Srirangam temple, appeared to be the precursors of an unsurpassable treasure of bhakti literature in the Bhasha, flowering all over India in the wake of the medieval bhakti movement. While the ideal of bhakti transmitted from the earlier philosophical treatises, epics and Puranas, inspired poets and composers and sastrakars to sing soulfully of bhakti in diverse ways, the treasure coming of their pain and singing, mostly poetry and music, reached to the Lokayata, both lettered and unlettered, and worked as a motivational force in arousing bhakti in the larger public psyche. The philosophical canons ushered in by the knowledge society of the ancient years trickled down to a larger social plane, even with a more intense and emotional appeal that brought about a newer knowledge society across the land informed and ordained by the idiom of bhakti. The bhakti movement, as often euphemistically called so, was in a sense not linear and monolithic, but conspicuous by its plurality with a series of movements in different regions contemporaneously. Initiated and sustained by saintly minds, many of whom were poets, composers, musicians, scholars, theologians, reformist leaders, emerging almost in an unending procession, inspired generations of common people, including social exteriors, raised them as takers of the precepts of bhakti with individual freedom, braving oppositions coming from the established theocratic structure. In no other period of India's cultural history, so many illustrious figures, including those coming from the lower strata of the society, illumined the firmament of Indian religion and culture, empowering the commonest among the common. The polyphony of voices imbued with bhakti in course of the movement brought about an efflorescence of bhakti literature in each of the regions, touched and fertilized by waves of bhakti ranging from the south to the north, west to the west, east, extending to the farthest northeast. In each of the regions, these movements mostly centered around the lordship of Krishna, Vishnu, and Rama, with exceptions of Guru Nanak and Sant Kabir espousing Nirguna Bhakti. The poets and composers rooted themselves to the soil and choosing to write and sing in the language of the people. Came a resurgence in the literature of the languages concerned, unprecedented in literary histories of those regions. The Bhakti composers beat around the Saptagiri and the Nilgiri ranges, the Deccan, the Gangetic Valley, the Punjab and the adjacent areas, the East and the Brahmaputra Valley, adopted the language spoken by the large public despite their erudition and familiarity with Sanskrit, not alone to vindicate their creative desire or to express their devotions for the Lord or to reach out to the masses with the message of bhakti, but with a deep sense of belongingness to the language as well as the people, aiming at bringing spiritual unity in the social fabric. The translation and adaptation of the two epics, the Bhagavata and the Vishnu Purana, in many of the languages, intensely interwoven with the surge of bhakti,
had a profound impact on the flowering of the Bhasa literature as well as contributing to the spiritual unity among the populace. The Ramayana of Kamban in Tamil, the Adhyatma Ramayana of Education Bharatamala, the Bhagavatam, and the Ramayana of the Kannasan group of poets in Malayalam, the Mahabharata by Nanya and Tikkana, the Ramayana by Buddha Reddy and Bhaskara in Telugu, the Saptakanda Ramayana of Madhav Gandoli in Assam, the Bhagavata and the two other epics narratives, 6 plays by Shankaradeva, the Mahabharata by Ram Saraswati, the Bhagavata and the Bhagavad Gita in prose by Bhattadeva in Assam. Thus, we can go on giving examples of the treasure of compositions that came up during that period of the Bhakti movement in almost practically all languages of India. What spell had Krishna as a supreme lord with his Leela, both as a human and transcendental figure, drawn upon the elegant poetry of the Bhagavata Purana, exercised on the Indian psyche, bringing in a matchless treasure of poetry and music intertwined with several other art forms. Although manifestations of the Lord are varied from region to region, poet to poet, the spirit of unity permeates through all. The emotional appeal of the Harikatha in the south, Abhangs and Haveli Kirtan, the hymns of Namdeva, Tukaram, the Kirtana and Borgits of Shankardeva and Madhavdeva, the Nagara Sankirtan of Chaitanya Deva, the Bhagans of Kabir and Surdas, and Gurbanis of the Gurdwaras draw crowds and crowds to sit with a sense of social camaraderie under the Kalpavriksha of Bhakti. Likewise, the devotional outpourings to Lord Krishna around his Vatsalya Leela, as portrayed by Purandara Dasa and Kanakadasa in Kannada, Shankardeva and Madhavdeva in Assamese, in their hymns are on the one hand souls tiring with love, compassion, and prayer. On the other hand, touch the layman and cognoscenti alike with their music and philosophical import. These compositions, including those of the Carnatic Trinity, Tyagaraja, Dikshitar, and Shamasastri, through the ages have enduringly walked as sources of blissful joy, inspiration, and agency of social cohesion and harmony. Amid the awe-inspiring inventory of Bhakti literature, with its ever-abiding appeal, drama and theatre also played a seminal role in bringing about social unity. The play tradition introduced by Shankardeva 1449-1568. The many-splendored personality of medieval India and fountainhead of the Bhakti movement in Assam, saint and preacher, poet and playwright, philosopher and reformer, artist and composer, all rolled into one. Beginning with the China Jatra, a lyrico-dramatic spectacle with subtle combination of music, dance, and drama, and painting also. Shankardeva wrote 6 other full-fledged plays in prose, interspersed with poetry, amounting to a major contribution to the emergence of medieval Indian theatre, supplemented by 6 other plays by his principal apostle Madhavdeva, 1460-86, 1596. Another prodigy in the realm of Bhakti literature, these plays and their performances known as Ankiyanat and Bhavna initiated a vibrant theatre movement in the valley, which tremendously worked as an ingenious contrivance in propounding bhakti among the people of mixed denominations. The Ankiya Bhavana was an innovative and audiovisual stratagem in consolidating people of all hue under the blissful shade of bhakti. In summing up my discussion, I would like to cite 2 other examples from Shankardeva's creative oeuvre, extended to all prevailing genres, striking a note of social harmony. In his poetry and plays,
On many occasions, Shankaradeva and his apostolate too, instead of addressing the netizens of his own land as his target audience, invoked the humanity, Oba Naraloka Manushya Lokata, and upheld human life. Even the short-lived human body did not skip his mind and vision. In his Kirtana Guha and the Bhagavata, he soulfully sings of the great Mohima of the human body, which even the mind cannot fathom its limits. Another revealing note of Shankardeva's compositions, comparatively an exception in the realm of bhakti literature, is his invoking the glory of Bharatavarsha and feeling blessed to be born in this Punya Bhumi, found to be spread across the extensive corpus. Moreover, in his treatise on bhakti entitled Bhakti Ratnakara, redacting material drawn from various sources with due acknowledgement and his own commentaries in Sanskrit, he dedicated one complete chapter as Bharata Bhu Prasangsa, with verses culled from a variety of sources, including the Bhagavad Purana, supplemented by his own commentaries. Thus, we can go on how the entire range of medieval literature practically brought about a sense of spiritual unity, a sense of social cohesion in the entire period of the Bhakti movement in medieval India. Thank you so much. धन्यवाद भंता जी। और अब सुधा जी से प्रार्थना है वो अपनी बात कहें। Shri Gurubhyo Namaha. Respected chairman of the session, my senior colleagues on the dais, and members of the audience. The assigned topic to me is Bhakti literature, touching the stars and shackling the fetters. Since my senior colleagues have touched upon Bhakti, movement of Bhakti across the country, I would restrict myself to the South Indian literary landscape. The Alvars and Nayanmars were mentioned by my senior colleagues. One of the Nayanmars, by name Thirunavukarasar, fondly called Appar, meaning the father, was cast into a lime kiln for 7 days, and at such temperatures of 900 and 1000 degrees Celsius, no human can survive. After 7 days, the closures were opened, and there sat Saint Thirunavukarasar or Appar, singing in bliss the praises of Lord Shiva. He went on to say, blemishless melody of the veena, the early evening moan, the pleasant southern breeze, the splendid spring, the cool pond where the bees hum around, shelter at the feet of my Lord is all these. Subsequently, the same saint was tied to a stone and thrown into the sea. The very stone that was intended to drown him down became the raft, and Appar surfed afloat. He sang the glory of the 5-lettered mantra Nama Shivaya, Nama Shivaya. And he said, even if I were tied to a stone and dropped in the ocean, Katrunai Putiyor Kadalil Paichinum, Nama Shivaya would be my help. Sitting on the plank in the lime kiln and drifting afloat on the sea waves, Appar was not only shackling the fetters of material life, but also holding the pole star of spiritual freedom. The message of bhakti is loud and clear. True bhakti shackles the fetters and touches the stars. Much has been told about the Nayanmars and Alvars. However, I would like to reiterate
that these saint poets of the Tamil land are among the earliest exponents of Bhakti literature. The Nayanmars were devoted to Lord Shiva and the Alvars to Lord Vishnu. They composed hymns that emphasize unconditional surrender and unwavering devotion. Thevaram, Tiruvachagam, Panniru Tirumurai, which are all the works of these Nayanmars, the hymns explore the theme of breaking free from earthly attachment. We do find a lot of glimpses of these in several of the hymns, and Tirnavukarasar, Tirnyana Sambandar hymns being classic examples of such. They frequently invoke the imagery of chains and shackles, urging the devotees to renounce ego. Lines like Namarkum Kudiyallom and Eesan Yendai Inayadi Nidale are categorical examples of touching the stars while shackling the earthly fetters. The hymns of the Alvars are no different. Andal's Tirupavai, a beautiful example, is well known, where she expresses her desire to shackle the fetters of worldly life and unite with Lord Krishna. Her verses are filled with metaphors of bondage and liberation, illustrating the soul's journey towards a divine communion. Tirumalizai Alvar was one of the 12 Alvars, and I may be kindly permitted to quote a particular incident from his life. He was a great poet and a scholar. He is said to have composed thousands and thousands of soulful hymns dedicated to Lord Vishnu. However, not being attached to name and fame, words and the like, this Alvar threw all the palm leaf manuscripts of his hymns into the river Kaveri. The Lord Vishnu probably willed otherwise. Some of the manuscripts came back, they sailed back to the banks, and what we have today of Tirumalizai Alvar in the Nalayira Divya Prabandham, namely the Tiruchanda Virutham and the Nanmugan Tiruvandadi, are those that served back. The same Alvar was traveling to various talas on the Kaveri land. When he was at the temple of Perumpuliyur, which is a small hamlet near Kumbakonam, and was preparing to offer worship, it is said that the Lord inside the sanctum sanctorum repeatedly turned towards the Alvar and attempted to behold the Alvar. Perumpuliyur Adigal, a sage and a scholar of that hamlet, was performing a yajna in the same village. When he heard of this incident of the Lord turning around to look at his bhakta, Adigal approached, the same bhakta approached the Alvar and requested him to come to the Yagashala. When he came to the Yagashala, Perumpuliyur Adigal offered the Agra Puja, or the primacy of the Yajna concourse. However, some of the priests and others resented to this privilege, and they were condemning it. At the request of the Adigal, and in a bid to reveal liberation from the fetters, Alvar decided to exhibit the presence of the divine within his own physical body. He sang, permit me to quote in Tamil, "Akkarangal akkarangal endrumaavadenkolo, இக்குறும்பை நீக்கி என்னை ஈசனாக்க வல்லையேல் சக்கரங்கொள் கையனே ஷடங்கர்வாய் அடக்கிட உட்கிடந்த வண்ணமே புறம் பொசிந்து காட்டிட." A free translation of this verse is as follows: what is the use of you having those resplendent hands if you cannot remove the idiosyncrasy of these ignorant folk and make me powerful in their midst? O Lord, with a divine discourse, teach these fools a lesson by showing how you dwell inside me. And true to the command,
Lord Vishnu shone from inside the physical body of Tirumarisai Alvar in his reclining form. Manikavachagar, who's supposed to have lived in the 2nd or the 3rd century Common Era, describes the fettered plight of the average individual. I, Willie One, dwell in short-lived house of worms, where false illusions ever growing press, is the pitiful wail of the chained soul. Manikavachagar's Tiruvachagam dwells into the soul's struggle to overcome the fetters of ignorance and ego. The hymns are a profound exploration of the inner journey towards self-realization and divine communion. With an enchanting lyrical beauty and a fathomless philosophical depth, they offer a rich blend of spiritual insights. Tirumular, one of the Shaivite 63 and a Siddha of repute, portrays a sorrowful picture. This is a sorrowful picture, but a paradoxical one. A man is dead. His kith and kin stand around and cry. This is all is the scene. A man is dead. His kith and kin stand around and cry. However, the ultimate picture emerges sorrowful, not to those who stand and cry, but to that pitiful soul that has just departed. And the verse goes as follows: The neighbors gathered, wailing loud and long, denied him now a name, called him a corpse, and bore him to the burning ghat, and the body burnt. Then a ceremonial dip, and memory dies as the hours lapse. All that pomp and glory the physical body nurtured are now gone. The same body that hosted a famous name is made anonymous and eventually termed a corpse. That body is consigned to flames, and after a while, memories of its existence forgotten. Name and fame, praises and popularity, celebrations and grandeur are mere fetters that entangle the soul into deeper trenches, and these fetters have no value at the altar of the divine. In the Kannada speaking area, the 12th century poet Saint Basavanna and his followers initiated the Vachana movement, which emphasized direct personal devotion to Lord Shiva. Basavanna's famous Vachana, the rich will make temples for Shiva. What shall I, a poor man, do? My legs are pillars, the body the shrine, the head a cupola of gold. Basavanna's contemporary, Akka Mahadevi, is another prominent figure in the Vachana movement. Akka Mahadevi's poetry is characterized by its intense emotional fervor and mystical insights based on the Madhurya Marga, which my senior colleague Dr. Geeta Kumari was emphasizing, offering a powerful vision of spiritual freedom. Akka speaks, I have no pride of caste. I have no vairagya of boastful thinking. I have dispensed away with the conceit of wealth and possession, and have no achievement of knowledge. Nothing of such esteem and regard will come near me, since, O Mallikarjuna, you have elevated me by your grace. Society, respect, fame, honor, appearance, image, none of such fetters could control or subdue. Akka Mahadevi has the ultimate voice and the ultimate choice. She says, if hungry, alms would help. If I'm hungry, alms would help. If thirsty, there are wells, ponds, and streams. When sleepy, there are the temple mandaps. And if I need company, you're available, Channa Mallikarjuna. In the Telugu land, the same sentiments were reflected by any number of them. And to conclude, it is the same question that Tyagaraja asked. Nidhi chala sukama, Ramuni sannudhi seva sukama. O mind, tell me truthfully, is it wealth that is comforting, or the service to Lord that is comforting? Are curd, butter, and milk tasty,
or the nectarine juice of meditation that is tasty? Is a bath in the holy Ganga of self-control and tranquility comforting, or a bath in the filthy well of senses and sense objects? Is extolling human beings bound by egotism comforting, or singing songs of the pure Lord comforting? And there, bhakti literature shackles the fetters, but does not merely touch the stars, it embraces the stars. Thank you very much. मंच पर सभासीन मेरे मित्रों और सभागार में शोभायमान सज्जनों, देवियों, आपने अब तक 3 व्याख्यान या आलेख सुने हैं, पढ़े हैं और भक्ति आंदोलन के विभिन्न रूपों से काफी कुछ अवगत भी हुए। मुख्य विषय है मध्यकालीन भारत और भक्ति आंदोलन में एकता को बल क्यों माना गया, एकता पर जोर क्यों दिया गया। दरअसल आप देखें, यह देश विविधता का रहा है, इसमें इतनी अनेक रूपता रही है, इतनी भाषाएं, इतनी उपासना पद्धतियां, इतने दार्शनिक संप्रदाय, इतने प्रकार के समाज, एक विभिन्न भूगोल, अलग अलग तरह के इतिहास, पर उस डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे खोजी जाए, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे राष्ट्र नायकों के सामने रही है। इन सेमेटिक धर्मों को आप छोड़ दीजिए, जहां एक किताब है, एक देशदूत है, देवदूत, एक उपासना पद्धति है, एक उपासना पद्धति और स्थान है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं को सब मिलाकर 35 कोटि देवताओं की कल्पना की गई है। एक एक देवता के न जाने कितने कितने अंतर रूप और अवतार होते रहे हैं। अब जैसे वैष्णव समाज में ले लीजिए, 24 अवतार हैं या 10 अवतार है, शिव जी के 11 रुद्र अवतार है, शक्ति के 51 शक्तिपीठियां हैं, 9 दुर्गाओं की पूजा आप करते हैं, गणेश के बहुत सारे रूप हैं, सूर्य उपासना के बहुत सारे रूप हैं, ऐसे ही दक्षिण में भूतकुंड के बहुत सारे रूप और बहुत सारी उपासना प्रणालियां। कहने के तात्पर्य कि वैविध्य बहुत है। इसलिए बहुत है क्योंकि यहाँ पर अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया था, हर व्यक्ति को सोचने का अधिकार है, उपासना का अधिकार है। इसलिए मंडे मंडे मुतरि भिन्ना, जितने भी मस्तिष्क होंगे उतनी ही विचार तरंगे भी होंगी, पर इस मतभेद के साथ मनभेद नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत जोर दिया गया। आप सुनते हैं, वेदों में भी यही उपदेश दिए गए, यही बराबर निर्देश दिया जाता रहा है, संगच्छुद्धम संबद्धम, आओ हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोले, सहनो भुनक्ति सहो विभक्ति, हम साथ साथ भोजन करें, हम साथ साथ विचार करें। यही कामना की जाती रही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। ये केवल एक देश नहीं है, एक घर नहीं है, ये तो विश्व मानवता का क्षेत्र है। ये तो कुल मिलाकर एक विश्व बंधुत्व का, अयम निजः परो वेद गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये बाहुल्य का, विविधता का देश रहा है। लेकिन इस बहुलता का एक कुपरिणाम ये हुआ, आपकी प्राचीन संस्कृत तक तो हम सुरक्षित रहे, मध्यकाल में जब दूसरी प्रजातियों के आक्रमण शुरू हो गए तो उन्होंने हमारे इस भेदभाव का दुरुपयोग किया, हमको आपस में तोड़ा, हमको आपस में लड़ाया और कुल मिलाकर पूरी संस्कृति को, पूरे साहित्य को, पूरी सामाजिक व्यवस्था को इतना छिन्न भिन्न कर दिया कि हमारे मध्यकालीन भारतीय कवियों की सबसे बड़ी समस्या यही हुई कि किस तरह हम आपस में जुड़े, किस तरह एक सामूहिक शक्ति बनाएं, किस तरह इनका प्रतिरोध करें। इसलिए सभी भक्तों ने मिल करके
आपसी सारे मतभेदों को भुला करके एक हो जाने का प्रबोध दिया। अब देखिए तुलसीदास का जो समन्वय सिद्धांत है, उस समय की उपासना पद्धति में जितने प्रकार के मतभेद प्रचलित थे, जैसे शैव अलग थे, वैष्णव अलग थे। आपने सुन रखा है दक्षिण में एक मधुराकांक्षी थी, एक विष्णुकांची थी, और शिवकांची विष्णुकांची में परस्पर संघर्ष हो रहा। ऐसे ही जो विष्णु के अवतार है उनमें भी मतभेद पैदा हो गया था। कोई केवल रामोपासक था, दूसरा केवल कृष्णोपासक था। शक्ति के रूपों को लेकर के भ्रम हो रहा था। गोस्वामी जी का सबसे बड़ा श्रेय है कि उन्होंने इन सारे उपास्य देवों के बीच अंत संबंध स्थापित किया। रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, आप देखिए उसमें राम और शिव, एक विष्णु के अवतार है, एक शिव जी है, दोनों एक दूसरे के उपास्य है और उपासक है। श्री राम कहते हैं गुरु पितु मातु महेश भवानी, ये हमारे माई बाप है, और शिव जी उनकी कथा कह रहे हैं, माने स्वयं गायक हैं, वे चरित्र नायक हैं। तो दोनों के भीतर ऐसा उपास्य उपासक संबंध स्थापित किया कि वैष्णव मत और शैव मत का विरोध सदैव के लिए समाप्त हो गया। उसी तरह निर्गुण और सगुण दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक वर्ग मानता था कि ईश्वर निराकार है, दूसरा मानता था कि नहीं, वो अवतार लेता है, भिन्न भिन्न रूपों में हमारे साथ रहता है, मनुष्यवत आचरण करता है। इसको लेकर बड़ा अंतर विरोध हो रहा था। सारे संतों ने, सारे सूफी भक्तों ने, इस सब ने निर्गुण का समर्थन किया। जो रामोपासक थे, जो कृष्णोपासक थे, जो अवतारवाद से विमुक्त थे, ये सब सगुण के समर्थक थे। गोस्वामी जी ने इन सबका समाहार करते हुए, सबका समन्वय करते हुए एक मार्ग निकाला। उन्होंने कहा गुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं होता है। जब आप चिंतन कर रहे होते हैं उस समय ब्रह्म निर्गुण रहता है, और जब चित्रण कर रहे होते हैं तो आपकी आंखों के सामने आ जाता है एक मॉडल के रूप में, ध्यान करते हुए, उस मूर्ति का ध्यान करते हुए। हम मानते हैं कि मूर्ति में ईश्वर नहीं है, लेकिन मूर्ति के माध्यम से उस तत्व तक पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से निर्गुण और सगुण साधना दोनों में एक सहमति, एक समन्वय का भाव पैदा हुआ। यही ज्ञान और भक्ति को लेकर विवाद पैदा हुआ था। ज्ञान बड़ा है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, या भक्ति बड़ी है। इन कवियों ने कहा कि नहीं, ज्ञान के बिना भी काम नहीं चलता, भक्ति के बिना भी काम नहीं चलता, ज्ञान नहीं भक्त ही कछु नहीं भेदा। इसी तरह से लोक और वेद को लेकर विवाद हुआ कि शास्त्र बड़ा है कि लोक बड़ा है। कुछ लोग लोकवादी थे, लोकायत संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और कुछ जो सवर्ण अभिजात वर्ग के थे वे शास्त्र की दुहाई दिया करते थे। इन दोनों को भेद समाप्त किया। भाषाओं में देखिए, संस्कृत को देववाणी कहा गया था, ब्रज भाषा काव्य की भाषा थी। दक्षिण में बहुत सारी भाषाएं, भाषा बहुल राष्ट्र है हमारा, 24 तो आपकी अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये लगभग 1500 का परिवार है जिसको भारतीय भाषा परिवार कहते हैं। इसमें बहुत सारी विभाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। हिंदी जिन जिन बोलियों में भी भाषाओं में लिखी गई, वो ब्रज भाषा भी है, भोजपुरी भी है, बुंदेली भी है, मैथिली भी है, राजस्थानी भी है। ऐसे 19-20 बड़ी महत्वपूर्ण बोलियां हैं। इन सबके बीच कैसे सहसंबंध स्थापित किया जाए, ये इनकी चिंता है। और आप भक्त कवियों में विचार कीजिए, अलग अलग क्षेत्रों से न जाने कितने कवि हुए। कोई ब्रजभाषा का कवि है, कोई बुंदेली का कवि है, मैथिली के विद्यापति हैं, बुंदेली के केशवदास हैं, राजस्थान के बहुत सारे हैं, ऐसे पूर्वांचल के बहुत सारे हैं। तो सब मिला करके जो पंचदेवोपासना शुरू की, ये शुरू करने का प्रबोध दिया, और उसी के साथ साथ यह उपदेश दिया कि मैं और मोर तोर सब माया। ये जो मैं और तोर तेरा का भाव रहता है, ये माया है, ये मिथ्या है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही उसका कुटुंब है। यहाँ से एकता की शुरुआत होती। इस एकता पर मैंने कहा कि जोर इसलिए दिया गया कि मुगलों ने, जैसा शासन की सत्ता की नीति होती है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, तो बांटो और राज करो के उद्देश्य से उन्होंने सबसे पहले इस देश में जाति प्रथा स्थापित की। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जाति नहीं थी। जब तक विदेशी आक्रमण नहीं हुए तब तक जाति प्रथा नहीं आई थी। उन्होंने पहले जातियों में बांटा, और इतनी जातियां कर दी। कहावत है कि जो केले के पात में पात, पात में पात, तो हिंदू की जाति में जाति, जाति में जात। आज तक कोई गणना नहीं कर पाया कि कितने दलित में होते हैं, कितने पिछड़े वर्ग में होते हैं, कितने सवर्ण में होते हैं। हर राज्य की बड़ी भारी समस्या है।
न जाने कितने आयोग बने, सब फेल हो गए, अंतिम रूप से सूची नहीं तैयार हो पाई। इतनी जातियां प्रजातियां पैदा हो गई। किस तरह से इस देश को जाति मुक्त किया जाए, ये मध्यकालीन भक्त कवियों की बहुत बड़ी समस्या थी। इन सारे कवियों ने जोर देकर घोषणा की कि देखो जाति पाति छोड़ो। कबीर ने कहा किसी भी साधु को जाति के आधार न पूछो, मोल करो तलवार का पड़ा रहे दो बयान, जाति न पूछो साधु की। नानक ने कहा कोई जाति नहीं होती है और जन्म से तो कोई जाति विशेष के साथ आवंटित नहीं किया जा सकता। वर्ण जो पहले जन्माश्रित न होकर कर्माश्रित माना जाता था, यानी जैसी आपकी कर्म प्रवृत्ति होगी उसके अनुसार वर्ण दे दिया जाता था, वही स्थायी विधा है और उसी को लेकर के इन कवियों ने बराबर जोर दिया। जैसे तुलसीदास बराबर कहते रहे कि मोरी कोई जाति पाति नहीं है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, जो आपकी इच्छा हो मुझको कह दीजिए। साहब को गोत गोत है गुलाम को, हमारे जो साहब है आराध्य देव श्री राम, उनका जो गोत्र है वही मेरा गोत्र है, बस इतनी ही जाति है, बाकी और दूसरी कोई जाति उपजाति। रैदास ने यही कहा कि जन्म के कारण कभी किसी जाति की नहीं पूछनी चाहिए। तो उदाहरण बहुत है, लेकिन संक्षेप में केवल संकेत करता हुआ मैं चल रहा हूँ, समय का ध्यान रखते हुए। इन कवियों का सबसे बड़ा अभियान ये बना कि एक जाति विहीन समाज बने। इसलिए आप देखिए कि रामानंद जी ने अपना जो संप्रदाय शुरू किया, रामावत संप्रदाय, श्री संप्रदाय, उसी से वैष्णव संप्रदाय फिर आगे बढ़ा, उसमें 10 महत्वपूर्ण शिष्य अपने साथ रखे। अब वो सब विभिन्न जातियों के शिष्य हैं। उनके साथ भक्ति आंदोलन में जुड़े हुए जो विभिन्न महत्वपूर्ण कवि लेखक हैं, आप अगर जाति के आधार पर विचार करें तो पाएंगे कि नानक दास गुरु नानक देव और दूसरे मलूक दास, ये भी संत कवि थे, ये दो खत्री जाति के थे। कबीर जुलाहा जाति के थे, सेन नाई थे, सधना कसाई थे, बखना मुस्लिम मजदूर थे, नाभादास, रायदास, कृष्णदास, जिनको आज दुर्भाग्य से अछूत कहा जाता है, उस वर्ग के थे। इसी में धन्ना जाट थे, किसान थे, सींगा अहीर थे, ग्वाले थे, दूध का काम करते थे, रज्जब लोहार थे, बुल्ला साहब कुर्मी थे, नामदेव दरिया दर्जी थे, रामानंद स्वयं ब्राह्मण थे, सूर्य तुलसी ब्राह्मण थे, जम्भो जो बिश्नोई संप्रदाय के संपादक थे ये क्षत्रिय थे, पीपा राज परिवार के थे, सुंदरदास धर्मदास वैश्य परिवार के थे। अब इसमें सारी जातियां आ गई और यही सब भक्ति आंदोलन चला रहे थे। तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से किसी जाति का वर्चस्व भक्ति आंदोलन में नहीं रहा। इसमें तथाकथित अवर्ण भी है, सवर्ण भी है, इसमें शास्त्रवादी भी है, इसमें लोकवादी भी है, इसमें स्त्री है, पुरुष भी है, क्योंकि विभाजन जिस आधार पर होता है समाज में, ये विखंडन, ये विभाजन जो दिखाई देता है वो या तो जाति के आधार पर है, या संप्रदाय के आधार पर है, या क्षेत्र के आधार पर है कि आप दक्षिण के हैं, हम उत्तर के हैं, ये पूरब के हैं, वो पश्चिम के हैं। अलग अलग राज्यों के क्षेत्र बन गए हैं, उनके भी अलग अलग उप क्षेत्र बन गए हैं। या फिर भेद, लिंगी भेद होता है, जेंडर के अंतर्गत तो कौन छोटा कौन बड़ा, भाषा का भेद होता है, वर्ग भेद होता है, आप हाई इनकम ग्रुप है या लोअर इनकम ग्रुप है। तो ऐसे जो विभेद पैदा किए जाते हैं, ये हमारा भक्ति काव्य इन सारे विभेदों के ऊपर है। इसमें न कोई लिंगगत भेद दिखाई देता है, न कोई संप्रदायगत विचारगत धारा, जैसे संप्रदाय का बहुत बड़ा अंतर था। चूंकि इस्लाम एकेश्वरवादी था, एक ही ईश्वर की, ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, मूर्ति पूजा किसी प्रकार अलाउड नहीं थी, मंदिर किसी प्रकार अलाउड नहीं था, बुत परस्ती से बहुत घृणा थी। इसलिए मंदिर और मूर्ति तोड़ना उनके धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था। तो उससे भयभीत होकर हमारे बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग संप्रदाय बना लिए, जो समझ में ना हुए कि हिंदू है कि गैर हिंदू है। उत्तरी भारत की संत परंपरा एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है परशुराम चतुर्वेदी का, उसमें उन्होंने विस्तार से पूरा विवरण दिया है। 270 संप्रदाय उत्तर भारत में बने थे मध्यकाल के भीतर। वे सब किसी न किसी रूप में सनातन से ही जुड़े हुए थे, लेकिन अपने को निर्गुण कहते थे और निर्गुण के साथ साथ निराकार की भी उपासना करते थे। क्योंकि मुसलमान शासक चूंकि
मूर्ति पूजा को लेकर आक्रमण कर रहे थे, उससे ज्यादा नाराज थे, तो इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया, लेकिन भीतर भीतर पूजा भी करते रहे, उसका समर्थन भी करते रहे। निर्गुण कहे जाने वाले इन कवियों पर आप सूक्ष्मतापूर्वक विचार कीजिए। रैदास निर्गुण पंथी है, लेकिन चतुर्भुज विष्णु की पूजा करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, उसमें बहुत सारे छंद हैं। कबीर भी एक स्तर पर पहुंचकर कहते हैं कि निर्गुण सरगुण ते परे तहा हमारा ध्यान। अब हम निर्गुण सरगुण की चिंता नहीं करते, जो भी ईश्वर है सबका ध्यान करते हैं। तो कहने के तात्पर्य है कि मिला जुला रूप निर्गुण का, सगुण का, और ऐसे ही राम का, कृष्ण का, शिव का, विष्णु का, ये जितने मतभेद थे, इनका एक मिला जुला रूप इन्होंने बनाया और एक नवधा उपासना नई तरह की शुरू की। वैष्णव उपासना में जिसको नवधा भक्ति कहते हैं, उसको रामानंद जी ने दशधा भक्ति बना दिया, और उसमें पादबंजन, नैवेद्य, अर्चन इत्यादि छोड़ करके दया, परोपकार और अहिंसा और सत्य, जो मानवीय गुण हैं, इनको उपासना पद्धति बना दिया। तो ये बहुलतावादी दृष्टि आई, जिससे संत भी, सूफी भी, वैष्णव भी, यही नहीं बौद्ध और जैन भी एक हो गए। बौद्धों में महात्मा गौतम बुद्ध, जिनके नाम पर अलग संप्रदाय बना, पर उनको वैष्णवों ने वैष्णव धर्म से जोड़ लिया। वे राम के ही वंशज हैं, वे दशावतारों में से एक हैं, और इस रूप में बौद्ध धर्म से बहुत सारे लक्षण जो मिलते जुलते लक्षण थे, वो वैष्णवता में भर गए। यही स्थिति जैन संप्रदाय की थी। जैन संप्रदाय बौद्ध धर्म से भी ज्यादा प्राचीन है, लेकिन इसके आरंभिक 3 जो तीर्थंकर हैं, वो वैष्णव मत से जुड़े हुए। ऋषभदेव भी वैष्णव हैं, अयोध्या से जुड़े हुए। अभिनंदन दास भी अयोध्या से जुड़े हुए। ये भी इक्ष्वाकु वंशी हैं, जिस वंश में श्री राम का जन्म हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि बौद्ध भी, जैन भी, हाँ, सिखों को उसके साथ जोड़ा, उनमें और वो सनातनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। सिख मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन मंदिर के पूजक है, ग्रंथ को ही ईश्वर मान करके उसकी उपासना करते हैं और सादगी को पसंद करते हैं। तो ऐसे जिस संप्रदाय में या जिस उपासना पद्धति में जो अच्छा गुण दिखाई दिया, वो ले लिया। जैसे जैनियों में अपरिग्रह का भाव है, सब कुछ को त्याग देने का, वो ग्रहण कर लिया। अहिंसा को ग्रहण कर लिया, क्षमा को ग्रहण कर लिया। उनके यहाँ क्षमामणि होती है, क्षमा बहुत बड़ा गुण माना गया। आर्जव माने शुद्धता, ऋजुता, सीधापन और कल्याणक लक्षण की जो साधना जैनियों में की जाती है, उन सबको अपनाकर इन्होंने वैष्णव धर्म को एक परिपूर्ण धर्म बनाने की कोशिश की। ऐसे ही सिखों में चाहे अकाली हो, चाहे उदासी हो, चाहे निहंग हो, चाहे खालसा हो, उन सब से कुछ न कुछ गुण लेकर के एक उनकी विशेषता को विशेष रूप से उजागर किया, और वह है सिखों में पहले संत हैं जो योद्धा संत बने, जिन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र धारण किया। शस्त्र और शास्त्र दोनों का निर्वाह करते हुए अपनी धर्म की जो रक्षा का अभियान उन्होंने चलाया, तो ये गुण उनसे प्राप्त कर लिया। और इस तरह है जो हमारे यहाँ कहा गया, संघे शक्ति कलियुगो, कलियुग में सबसे बड़ी शक्ति होती है संघ की। संघ माने संगठन की। यूनाइटेड वी स्टैंड। अगर बट जाएंगे तो गिर जाएंगे, कट जाएंगे। संगठित होना सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा बल है। तो इस वजह से इन्होंने जो संप्रदाय, जो अभियान चलाया, उनको भी नाम दिया। कोई पांचरात्र है, हिंदी में अष्टछाप कवि है, उड़ीसा में ही अष्टसखा हैं, पंचसखा हैं, तेलुगु में ये अष्टदिग्गज हो जाते हैं, ऐसे ही पूर्वोत्तर में ये बाउल बन जाते हैं, वहां नव वैष्णववाद शुरू होता है। तो अलग अलग नाम है, लेकिन भाव यही है कि सबको मिला करके चलना है। दर्शन के क्षेत्र में भी जो विवाद यहाँ थे, जैसे शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन की व्याख्या करते हुए अद्वैत की बड़ी गहरी मीमांसा की, उसके फिर अलग तरह के प्रतिवाद बने, कोई शुद्धाद्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, कोई रसाद्वैत। इन कवियों ने उन सारे अद्वैतों के, यानी सारे भेदों के फिर अभेद स्थापित किए। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं विनय पत्रिका में, को कह सत्य झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल को माने। शंकराचार्य ने ही कहा था ना कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, को कह सत्य, झूठ कह कोऊ और जुगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहर 3 भ्रम, ये तीनों भ्रम है, ब्रह्म सत्य है या जगत सत्य है या जगत मिथ्या है। बस भक्ति ही एकमात्र सत्र है, पुनि आपुनि पहचान है। और ये वही मान सकता है जिसको आत्मबोध हो गया हो
जो अपने को पहचानता। तो दर्शन के आधार पर जो यह लॉजिक प्रबल हो गई थी, दर्शन में तर्कशास्त्र जो व्याकुल हो गया था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। और इसीलिए कबीर ने कहा कि एक से दूसरी नाहीं, भीतर बाहर सूझ ले। बस एक ही है, वो अंतर्यामी है। और निर्गुण सगुण का सारा भेद मिटाते हुए एक जन दर्शन बना लिया। किताबी दर्शन के बजाय एक जन दर्शन, एक लोक दर्शन बनाया, एक सोशल फिलॉसफी बनाई। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो इस प्रकार आप देखें, तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवादी होते हुए भी, सूरदास शुद्धाद्वैतवादी होते भी, जैसी एक वो तसव्वुफ के समर्थक थे सूफी मत, दूसरी ओर योग विद्या के समर्थक थे, नाथ सिद्धांत पे बहुत सहमत थे। उन सब का मिला जुला रूप। मीरा निर्गुण भी है, सगुण भी है। एक और कृष्ण की भक्त है, दूसरी ओर निर्गुण का ध्यान कर रही है। रविदास के साथ भी यही स्थिति है। तो इन सारे कवियों में आप पाएंगे इनकी मेल पद्धति है। कोई एकाकी दुराग्रह नहीं है, कोई एक एकल विचारधारा और उसकी कट्टरता आपको इनमें नहीं दिखाई देती है। इन्होंने नीति पर ज्यादा जोर दिया। समाज को रास्ते पर लाने के लिए नीति और एथिक्स की बड़ी आवश्यकता होती है। तो एकता संबंधी कथन आप इनके साहित्य में ढूंढें। जैसे रहीम कहते हैं कि रूठे सो जन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर गोहिए, टूटे मुक्ताहार। जैसे मोती की माला टूट गई हो, चाहे कितनी बार टूटे, लेकिन जोड़ जोड़ करके उसको मिलाइए, बड़ी कीमती चीज है। ऐसे ही अपने स्वजन अगर रूठ गए हो, यानी एकता पर जोर देते हुए करें। एक कवि ठाकुर नाम के कवि हुए हैं मध्यकाल में, बड़ी अच्छी पंक्ति उनकी है, बड़ा अच्छा छंद है वो, कि चारि जने चारि हु कोसाते, चारि कोन गई, उम्र को उठावे तो सुबेरु उठ जाए। चार लोग अगर चार कोनों से जोर लगा करके उठाए तो सुमेर पर्वत वो भी उठ जाएगी। यानी चार में बड़ा बल होता है, बशर्ते एक साथ अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का वो उपयोग करे। यही बात गंग कवि ने आपस की फूट कहो कौन की भली भई, यही बात नानक ने अपने ढंग से कही है। बहुत सारे उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने अपने नीति वचनों द्वारा जनता को यही प्रबोधित किया कि सब लोग मिलजुल कर करो, एक साथ चलो, एक साथ सोचो, और तभी तुम्हारी एकता में बल आएगा, और तभी इस विदेशी आक्रमण से तुम अपने धर्म की अस्तित्व रक्षा कर पाओगे, अपना वजूद बचा पाओगे। यही बात उनके सामाजिक चिंतन में भी दिखाई देती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक ऐसे राज्य की कल्पना की जिसको राम राज्य कहा जाता है। उस राम राज्य की विशेषता क्या थी, उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि सब जन कर ही परस्पर प्रीति। इस राम राज्य की एक विशेषता यह है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं होती है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, भाईचारे का भाव है, बड़ी एकता है, बड़ा साम्य है। राम प्रताप विषमता खोई। दूसरा वाक्य यह है कि राम का ऐसा प्रताप छा गया पूरे राम राज्य में कि विषमता खत्म हो गई, सब जगह समता, समदर्शिता, समरसता। केवल मनुष्यों में ही नहीं, उन्होंने बताया कि रहे एक संग गज पंचानन, हाथी और शेर जिनमें प्राकृतिक वैर होता है वो भी साथ साथ रहने लग गए। तो जब पशुओं पक्षियों में इतनी एकता आ जाए तो मनुष्य के क्या कहने। आप जाओ। एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे समाज का, जो आधा हिस्सा है, आधी आबादी जिसको कहते हैं नारी, उस नारी शक्ति को किसने कितना महत्व दिया, उसके बीच संगठन पैदा करना या एकता पैदा करने का क्या प्रयास किया। इन कवियों में प्रायः आरोप किया जाता है कि नारी निंदक थे, पर आप इस अर्ध सत्य को समझने की कोशिश कीजिए, सबके सब निंदक नहीं थे। जैसे गुरु नानक के काव्य में एक पंक्ति नहीं पाएंगे नारी निंदा से जुड़ी। ऐसे ही एक बड़े महत्वपूर्ण कवि थे जम्भो जी, मैंने कहा विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक। वे कहते हैं नारी शक्ति है। आज जिस आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको 17वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं, तब उन्होंने यह नारा दिया था कि ये शक्ति है, जब तक इस शक्ति का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप किए जाते हैं, वे नारी की स्थिति को देखते हुए उनके इस कथन पर विचार कीजिए। वो कहते हैं कि कतबिद सजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। कैसे विधाता ने इस नारी की सृष्टि की, बेचारी पराधीन, सपने में भी इसको सुख नहीं मिलता। गहरी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। जो निंदनीय नारी पात्र है उनकी निंदा करने के अलावा
छुटपुट कुछ कथन कह देने के बावजूद आप देखें किसी भी वर्णनीय या सराहनीय नारी पात्र की उन्होंने निंदा नहीं की है, बल्कि जो राक्षस पात्रियां हैं जैसे सुलोचना है, मंदोदरी है, जैसे तारा जो बाल की पत्नी है, इनको उन्होंने सती का दर्जा दिया है। और जो उनके आदर्श पात्र हैं, सीता तो उद्भव स्थिति संहार कारणीम जगत धारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, उनको तो उन्होंने आदि शक्ति का रूप दिया है, परमात्मा का रूप दिया है। स्त्री को अगर जगन्माता किसी ने बनाया है तो अकेले गोस्वामी तुलसीदास ने पूज्य स्तर पर अगर बैठाया, देवी का रूप दिया है। यही स्थिति सूरदास की है। आप उनके काव्य में पाएंगे कि जैसी आधुनिक नारी की कल्पना सूरदास ने की है, आधी रात में कृष्ण की वंशी बजती है और सब लोग लाज छोड़ करके, पुत्र और पति की चिंता छोड़ करके कृष्ण के रासलीला में जा उपस्थित होती हैं। आज भी इतनी स्वच्छंदता हमारे समाज में नारी को प्राप्त नहीं है जितनी इस सूर समाज में, गोप समाज में सूरदास ने जिसका वर्णन किया है। तो उनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यही स्थिति समाज के उस वर्ग को लेकर है जिसको हम दलित कहते हैं। उसमें श्रमजीवी भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं। इस समाज के प्रति इन कवियों ने जो आदर भाव प्रकट किया है, राम का सारा जो वनगमन है, 14 वर्षों का जीवन, उन किसके साथ रहते हैं? उसमें कोल है, भील है, निषाद हैं, शबर है, बानर हैं, ऋक्ष है। इन्हीं सब की सहायता से राक्षस राज रावण का वो वध करते हैं, उनको परास्त करते हैं। तो आज से अंत तक उनका संबंध इन तमाम लोगों के साथ जो रहा, रास्ते में जाते हुए आपने राम कथा में पढ़ा होगा कि निषाद राज मिलते हैं, गुह मिलते हैं, ये सब पिछड़ी जातियों के हैं। इनको बड़ा संकोच हो रहा है कि राजपुत्र है, हम इनसे कैसे मिलें, लेकिन उनको जो आदर देते हैं, मैत्री भाव से जिस तरह उनको रखते हैं, वो सब सचमुच सामाजिक समरसता का एक बड़ा विलक्षण उदाहरण है, सामाजिक सद्भाव का एक अपूर्व उदाहरण है, बशर्ते सहज भाव से उसको ग्रहण किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भगत इवंत्यति नीचहु प्राणी, कितनी भी नीच जाति का हो लेकिन अगर भक्त है तो सबसे ऊपर है। तुलसी स्वपच भलो कही जो बरने दिन रान, जो राम की भक्ति करता है भले ही स्वपच हो, चंडाल हो, तो भी वो आदरणीय है और पूज्य है। और ऊंचे कुल किस काम का, और भले ही ब्राह्मण हो, ऊंचे कुल का हो, लेकिन किस काम का है वो जिसके मुंह से राम नाम नहीं निकलता। तो उनके हिसाब से छोटा और बड़ा राम की भक्ति के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर होना चाहिए। तो भक्ति को उन्होंने कहा कि यही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, वो स्वतंत्र किसी शास्त्र से शासित नहीं है। और सकल गुण खानी, जितनी विशेषताएं हो सकती हैं सब उसके भीतर प्राप्त होती है। इसलिए इस भक्ति का अगर कोई पालन करता है, और इतनी छूट दे दी अपने भक्तों को, कहा कि भाव कुभाव अनख आलसहु, आप मन से भक्ति करो या कुभाव दुर्भाव को लेकर करो, जागते हुए करो या सोते या खाते हुए ऊँघते हुए करो, किसी तरह से मुंह से राम नाम निकल जाए। इन भक्त कवियों ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। कहा अजामिल नाम का एक दुष्ट था, डकैत की, जो चोरी डकैती का करता था, एक बार पकड़ा गया, मारा पीटा गया। धोखे से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था, तो मरते समय वो नारायण नारायण पुकारने लग गया। उसके पापों को देखकर वहां यमदूत आए उसको ले जाने के लिए नरक, लेकिन जब नारायण उसके मुंह से निकल गया तो वहां विष्णु के दूत पहुंच गए, उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। ऐसे ही गणिका थी जो एक तोते को राम नाम पढ़ा रही थी गणिका देह व्यापार का काम करती थी, लेकिन उसके सारे पापों को माफ कर दिया क्योंकि एक बार उन्होंने धोखे से राम नाम ले लिया था। तो ऐसे ऐसे पात्रों की कल्पना की, ऐसी ऐसी घटनाएं दी हैं। मतलब यह है कि किसी तरह से भक्ति का भाव प्रकट हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। इन लोगों ने क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके बात की है। मैंने कहा ना, क्षेत्रीयता आज की राजनीति में तो आप देख रहे हैं बहुत विषम भूमिका होती है उसकी, लेकिन भक्ति की कोई क्षेत्रीय भूमिका नहीं है। भक्ति स्वयं अपना परिचय देती हुई कहती है कि मैं, जैसे एक हिंदी दोहे में बहुत लोक प्रचलित कथन है, भक्ति उजरी द्रावड़ी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने, उसी तरह से वो अपने मूल रूप में कहती है उत्पन्न द्राविणे माहम, मैं द्रविड़ प्रदेश में पैदा हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता,
जब कर्नाटक गई तो वहां बढ़ गई, महाराष्ट्र में जाकर कुछ जीर्ण हुई और गुर्जर प्रदेश में आकर के मैं वृद्ध हो गई। लेकिन बाद में जब वृंदावन पहुंची तो मैं फिर से युवती हो गई हूँ। इसमें आप देखें कितने सारे क्षेत्र हैं। पूरे भारत का सर्वे कवि ने इसके अंदर कर लिया। उसी से पूर्वोत्तर में जो गई, अभी शंकर देव की, माधव देव की चर्चा आप असम साहित्य के संदर्भ में सुन रहे थे। बंगाल में की चर्चा जो भक्ति के संदर्भ में की गई उसे वाकिफ है। तो ऐसे ही ये भारत पूरा का पूरा भक्तिमय हो गया। अब आप विचार करें कि पंजाब के गुरु नानक देव और वहां का जितना सिख समाज है ये सब भक्ति से प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर हुए, तुकाराम हुए, नामराज हुए, रामादास हुए, ये सब भक्ति की धारा से जुड़े हुए। गुजरात में चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे अखा हो, ये सब भक्ति से जुड़े हुए। बंगाल में चंडीदास हैं, चैतन्य हैं, कृतिवास हैं, जयदेव हैं, ये सब भक्तिमय है। पूर्वांचल में असम प्रदेश में माधव और उसके साथ शंकर देव है, ये सब भक्तिमय है। दक्षिण में आप जाते हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिल प्रदेश में, वहां आप पाएंगे कि जितने ये अलग अलग भक्त हुए हैं, कहीं न कहीं एक धारा जुड़े हुए। चाहे तिरुवल्लुवर हो, तिरुवल्लुवर तमिल प्रदेश से जुड़े हुए, वेमना है, पोतना है, तेलुगु से त्यागराज हैं, अन्नमाचार्य हैं जिन्होंने 32,000 पद भक्ति के लिखे हैं। वीरशैव परंपरा और जो लिंगायत परंपरा है कर्नाटक की, उससे जुड़े हुए हैं। सारला दास, जगन्नाथ दास उड़िया के जुड़े हुए विद्वान हैं। जयदेव, चैतन्य, चंडीदास, कृतिवास, ये सब बंगाल के कवि रहे हैं। नानक और बुल्ला साहब, वारी साहब की चर्चा मैंने अभी की, ये पंजाब से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ज्ञानेश्वर और तुकाराम, ऐसे ही प्राणनाथ हो, ये सिद्ध प्रदेश के रहने वाले थे। अखा और नरसिंह मेहता ये गुजरात के रहने वाले थे। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि जितने प्रकार के मध्यकालीन कवि हैं सब कहीं न कहीं भक्ति से प्रभावित है और पूरे देश का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें कई जातियों के लोग हैं, कई वर्गों के लोग हैं, कई लिंगों के लोग हैं, कई विचारधाराओं के लोग हैं, अनेक संप्रदायों के लोग हैं, लेकिन सब मिलाकर के भक्त है। भक्ति ही एकता का बल है, ये उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से सिद्ध किया। और इन कवियों ने जोर डाला कि इस एकता की भावना को प्रबल करने के लिए बहुत आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थाटन किया जाए। एक तीर्थ संस्कृति विकसित की। उस तीर्थ संस्कृति में सुदूर उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम तक, जैसे अभी कुंभ मेले में आपने देखा, न जाने कितनी विचारधाराओं वाले लोग, कितने क्षेत्रों से, कितने वर्गों से, सब एक जगह एकाकार हो जाते और कहीं कोई अपने पराये का भेद नहीं रह जाता, छोटे बड़े का अंतर नहीं रह जाता। यही तीर्थ संस्कृति की विशेषता रही। चाहे वो वृंदावन हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे दक्षिण के तीर्थ हो, इन सब में समवेत होकर वे केवल मनुष्य रह जाते हैं। जाति, धर्म, वर्ग इन सबसे निरपेक्ष होकर के ये भक्ति आंदोलन की बहुत बड़ी देन रही। इसमें मूर्ति पूजा का जो रूप आया वो ऐश्वर्य विधान वाला रूप है। वैष्णवों के जो ईश्वर है, ये ऐश्वर्य शब्द ही ईश्वरता से आया। ईश्वर का जो भाव वही ऐश्वर्य है। तो उन्होंने ऐश्वर्य भोग का ऐसा रूप दिखाया जिसको देखकर दर्शक सम्मोहित हो। जैसे आप नाथ द्वारा में जाएं, वहां आपको दिखाई देगा सोने और चांदी की चक्कियां हैं, घी के तेल बने हुए, 36 व्यंजन है और 56 भंडारे लगते हैं। उसको देख करके उस वैभव का पता चलता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं और उनका प्रसाद पाकशाला विशेष रूप से देखते हैं तो उनके ऐश्वर्य का आभास होता है। दयनीय बनकर आप महत्वपूर्ण नहीं माने जाएंगे, कहीं न कहीं महनीय भी दिखाना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने तीर्थाटन में उत्सव धर्मिता को महत्व दिया। अभी थोड़े दिनों में आप दिखाई देगा आपको वृंदावन में होली का महोत्सव शुरू होगा, बहुत दिनों तक चलेगा। तो अलग अलग अवसरों पर, यहाँ तो 365 दिन है और 370 त्योहार होते हैं। हर त्योहार पर अलग अलग तीर्थों में जो चहल पहल दिखाई देती है वो उत्सव धर्मिता है। कहीं रासलीला हो रही, कहीं रामलीला हो रही, संगीत का अच्छा से अच्छा प्रदर्शन आपको उसमें दिखाई देता है। कहीं रसिया हो रहा है, कहीं रास पंचाध्यायी हो रही है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं, वहाँ सेवा भावना देखने को मिलती है। किस तरह एक दूसरे के लिए अन्न क्षेत्र खोलते हैं। हर तीर्थ में आपको अन्न क्षेत्र मिलेगा, भोज भंडारा, वैष्णवों का बड़ा जोर रहा उसके ऊपर। तो इस तरह की सेवा और सहायता मनुष्य की आदिम आवश्यकता है, इनकी आप पूर्ति कर देते हैं तो धर्म का प्रचार प्रसार होता चला जाता है। और इसके साथ ही साथ किस तरह प्रतिरोध करना चाहिए,
इस्लाम की कुटिल चाल को कैसे रोका जा सकता है, कैसे लोगों को सम्मोहित किया जाए कृष्ण भक्ति से, राम के उदात्त चरित्र से। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरी ओर लीला पुरुषोत्तम है। और आवश्यकता पड़ जाए तो शक्ति का आह्वान करो, शिव जी के रुद्र रूप का ध्यान करो, परशुराम का ध्यान करो, नृसिंह का ध्यान करो। ये जो अवतार हुए हैं, कोई ओज के प्रतीक है, कोई वीर रस के प्रतीक है, और कोई बाल रूप में आपकी कन्हैया की गोदी में खेल रहे हैं, आपके आंगन में खेल रहे हैं। तो इस तरह से मानव जीवन के जितने व्यापार है, जितने क्षेत्र हैं, जिस तरह से आपके हृदय को प्रभावित और प्रेरित किया जाए, सबको मिला करके इन्होंने भक्ति आंदोलन बनाया और सिद्ध कर दिया कि सचमुच एकता में बहुत बड़ा बल होता है। धन्यवाद। जरूर समझे तो धन्यवाद देगी। So this discussion on love, peace, social cohesion, unity, and the transformative power of Bhakti poetry has deepened our understanding of how this literary tradition transcended boundaries and brought people together. We can't thank enough our esteemed chair, Sri Surya Prasad Dikshit ji, along with all the distinguished speakers. And we also thank all the participants among the audience. Thank you. With that, we wind up this session, and we will meet you at 4:30 for our fourth and the final session of today. Thank you.
Indian literature, highlighting their struggles, resilience, and creative expression. We are honored to have amongst us Srimati Mala Sri Lal, who will be chairing this session along with the other distinguished speakers. माला श्री लाल जी प्रख्यात अंग्रेजी लेखिका, विदुषी और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं. She has 16 books to her credit. Her specialization is literature, women, and gender studies. She was a senior consultant to the Ministry of Culture and has served on International Book Award juries. Presently, she is the convener of English Advisory Board, Sahitya Academy. May I request you to kindly join us on the dais? Mala Shri Lalji, who will be chairing this session. We'll also be joined by Srivastava, Professor, Center of Indian Languages, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Specialization is Women in Conflict Areas with special reference to Eastern Europe. 70 से अधिक शोध लेखों के अतिरिक्त आपकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं. बोस्निया हर्जगोविना के युद्ध क्षेत्र पर आधारित आपकी डायरी देह ही देश का कई क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है. Welcome, Garima ji. Joy Saha is also joining us. She is assistant professor in the Department of Sanskrit at Tripura University, Agartala. Her area of research is language, culture, and translations in Sanskrit and modern Indian languages. She has also specialization in cultural study of Sanskrit texts composed in Northeast and Bengal with reference to Shaktaism. She has participated in various national and international seminars with her research output in the area and also has publications to her credit. We have Joy here with us on the days. And last but not the least, joining us is Srimati M.S. Asha Devi, a prominent feminist thinker and a Kannada literary critic. She wrote the popular Narikela literary column for the prestigious Prajavani publication. At present, she is teaching in Maharani's Cluster University, Bangalore. She has published 20 books. Ashaji has co-edited an anthology of Kannada women's poetry, her poems, edited collected works of Dr. D.R. Nagaraj. Welcome, Asha Devi ji. And without any further ado, I give the days to Mala Shri Lalji, esteemed chair of the session. Namaste. Good evening. It's a great honor and a privilege to be chairing this session. And as the stage in charge just explained, the scope of this session is very wide. The overall subject is Nari Chetanam, and that's women's empowerment. But when we are looking all the way from ancient Indian literature to modern Indian literature, this is the subject of an encyclopedic quantity, quality, and value than 3 papers for which we have time today. Nevertheless, it's a great privilege to be here, and I'm very keen to hear all the listeners. Because one or two opening remarks that I do want to make is that we are very fortunate in India that we are surrounded by a living tradition. There has never been ruptures, breaks, gaps between one kind of cultural understanding of women sliding into another. There has never been a loss of language. All of you will be speaking perhaps in different languages, maybe English, Hindi, maybe you refer to some other languages also. That when we are looking at the whole expanse of literature about women from ancient times to now, this the living quality of the discussion
the ongoing dialogues with society and culture that have marked the growth of women's presence in literature is entirely significant. As compared to many Western communities, I think we're very lucky because Greek and Latin literature may have had those interruptions and disruptions between ancient and modern. But in India, it is possible to trace, as I'm sure all of you will do, the continuities. And if there have been disjunctions, they have been very creative disjunctions. It's been a discussion, dialogue, alternative positions, or I would say the multilingual, multicultural base of what is understood as women's empowerment. That is my second point, that the enormous richness of multicultural India, multilingual India, is perhaps nowhere else available in the world. And I'm delighted to have a panel of speakers who will be looking at women's empowerment, ya Nari Chetanam, from different angles and at different times. So, what we are getting in this session is a kind of matrix. We're looking at the chronology of ancient, medieval, and modern, but we're also looking at the cross sections that happen between one and another. So I look forward very much to the papers and may have some observations to make between your presentations and afterwards. So I would suggest that each speaker takes about 20 minutes to begin with, and then we can always come round because when I listen to each of you speak, I have questions in my mind, and we have a wonderful audience which will also have questions in their mind. So it's good to allow time for that dialogue, that discussion to develop based on the papers that you are presenting. So our first paper is on modern, or let's just check. Sorry, I have it here on my this thing. The first paper is Garima Srivastav, Women's Writing in Indian Languages in the Modern Period. So we're going from now to the past. Actually, it is in the last. Yours is the last. But after morning, you can call here. Is that all right? Okay. I think that makes sense. Yes. Over to you, Garima. Thank you. Thank you, Professor Malashri. And it is an absolute honor and privilege to invite me to this esteemed session. Unfortunately, Professor Asha Devi is here, who has been my inspiration when I started working on autobiographies, especially in Kannada. So she helped me out, and I could get so many insights while having conversations over phone. And I'm fortunate enough that this is the first time I'm meeting her in person. Thank you, Professor Malashri and my co-panelists. मेरा जो काम है या जो मुझे विषय दिया गया है, वो हमारा आज का जो समय है, इस समय में हम पूरे भारतीय परिदृश्य पर स्त्री लेखन को कैसे देखते हैं। जो समय हम छोड़कर आए हैं, उस समय में पूरे साहित्य इतिहास में और आलोचकों द्वारा स्त्रियों के लिखे हुए की उपेक्षा की गई है, और इसके विभिन्न बिंदु हमें मिलते हैं। मैरी स्कॉट ने जब द फीमेल एडवोकेट लिखी थी, तो उसकी लोकप्रियता स्त्रियों के बीच में बहुत हुई थी, क्योंकि उसमें मैरी स्कॉट ने उन लोगों की प्रशंसा की थी जो उस समय लिख रही थी और प्रकाशित हो रही थी। वर्जीनिया वुल्फ ने
अ रूम ऑफ वंस ओन जब लिखी थी, तो जब हाल के वर्षों में इंटरसेक्शनैलिटी पर विचार किया गया, जैसे लीला दुबे ने विचार किया, तो हाशिए पर पड़ी हुई अस्मिताओं, विशेष करके स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों पर ध्यान गया हमारा और बड़े पैमाने पर लेखन शुरू हुआ। पिछले 2.5 दशकों में मुझे स्त्री लेखन के नजरिए से एक बहुत बड़ा मेकशिफ्ट नजर आता है। इन स्त्रियों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिख करके पूरे स्त्री लेखन के परिदृश्य को और स्त्री लेखन के प्रति आलोचकों और पाठकों के नजरिए को बदल डाला है। अब ये स्त्रियां सिर्फ परिवार, पति, संतान के मुद्दों को लेकर नहीं लिख रही, साथ ही वे साहित्य में अपनी स्थिति के प्रति सचेतन दिखाई पड़ती हैं। उनके विषय भी बदले हैं और विषय के प्रति उनका ट्रीटमेंट भी। सभ्यता विमर्श में ये स्त्रियां अपनी पूरी रचनात्मक करवट के साथ हमारे सामने उपस्थित हैं। जो पारंपरिक लेखन, जिसमें उपन्यास, कविता, निबंध, पत्रकारिता से संबंधित लेखन थे, ये स्त्रियां बहुत सारे विधागत प्रयोगों के साथ हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं इस पर बात करूंगी कि वे विधागत प्रयोग कैसे हैं। समाज में जब स्त्रियों के साथ सामाजिक इकाइयों का संबंध बदलता है, वैसे वैसे स्त्रियां भी अपना लेखन बदल रही हैं। ये बात दूसरी है और ये बात सोचने की है कि इसके बावजूद जो आलोचक हैं, खास करके पुरुष आलोचक, उनको किस तरह से उपेक्षित या इग्नोर करते हैं और इस तरह से पूरे पितृसत्तात्मक वर्चस्व को ये स्त्रियां लिखकर चुनौती दे रही हैं। अधिकतर प्रकाशकों द्वारा जब स्त्रियों का लेखन छापा जाता है, तो उसे स्त्री लेखन के वर्ग के अंतर्गत कैटेगराइज करके और उस दायरे तक सीमित करके छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये बात सच है, बावजूद इसके कुछ स्त्रीवादी विचारक और आलोचक स्त्रियों को बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में रख करके देखने के पक्षधर नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में ये है कि ये औरत है, ये क्या खाकर लिखेगी, क्या खाकर पढ़ाएगी और क्या खाकर इसका साहित्य इतिहास में इसकी कोई जगह होगी। हमारे समकाल में जिन स्त्रियों ने लिख करके अपनी पहचान बनाई है, उनमें अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आप जानते हैं, अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, किरण देसाई, शशि देशपांडे। मैं इन लोगों की सिर्फ नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे 20 मिनट का समय दिया गया है और मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ। ये वे स्त्रियां हैं जो कि भारत में हैं और अंग्रेजी में लिख रही हैं और इस तरह से वो वैश्विक परिदृश्य पर अपनी पहचान बना रही हैं अंग्रेजी के द्वारा। कमला मार्कंडे, भारती मुखर्जी, नयनतारा सहगल और हमारे बीच में मालाश्री लाल और आशा देवी जैसे आलोचक और लेखक हैं जो कि सन 60 के आसपास या सन 60 के बाद पैदा होते हैं और इन्होंने पुरुष लेखकों के बीच में अपनी अभिव्यक्ति के लिए कहानी, कविता जैसी विधाओं को अपर्याप्त समझा है। इन्होंने कई नवीन विधाओं को अपनाया है, जैसे कि सन 70 के दशक में स्त्रियों के नैरेटिव्स हमें बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं और कई विधाओं का सम्मिलन और टकराहटें स्त्री लेखन में हमें दिखाई पड़ती हैं। इसमें एक सन 70 के आसपास जो नैरेटिव्स का एक नया दौर आया, उसमें रूथ प्रवर झाबवाला का हीट एंड डस्ट, जिसको कि 1975 का बुकर पुरस्कार मिला था, और इस किताब ने स्त्री अस्मिता को केंद्र में रख करके लेखन करने की एक तरह से शुरुआत की।
और इन स्त्रियों ने यानी सन 75 के बाद और 80 के लगभग हिंदी में मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती जैसी स्त्रियां आपके सामने आती हैं और इन्होंने स्त्रियों के लेखन के लिए बने बनाए जो खांचे थे, वो चौखटे थे, उनमें बदलाव लाने की कोशिश की। गीता हरिहरन के साथ मृदुला गर्ग को देखा जा सकता है, जो कि इस दौर में स्त्री अस्तित्व और प्रेम और अस्मिता में से किसी एक के चुनाव पर बात करती हैं, जैसे मृदुला गर्ग का उपन्यास उसके हिस्से की धूप। ये वही समय है जबकि स्त्रियां नाटक लेखन के क्षेत्र में उतर रही हैं। जैसे आपको याद होगा मन्नू भंडारी का नाटक महाभोज, जो एक तरह का राजनैतिक नाटक है और जो कि आपातकाल की स्थिति को केंद्र में रख करके लिखा गया। इसके साथ ही हमारे सामने गिरीश रस्तोगी जैसी स्त्री आती हैं, जो कि नाट्यालोचक के रूप में अपनी पहचान बनाती हैं और नए तरह की नाट्य समीक्षाओं का दौर शुरू होता है। ये वो समय है जबकि महादेवी वर्मा और सिमोन दो बोवार को लोग पढ़ चुके थे और ये 90 का दशक शुरू हो रहा है जहां पर आत्म से संवाद की बात शुरू हो रही है और स्त्री लेखन का जो पूरा दौर है, वो दौर इस तरह का है कि स्त्रियां ऐसे विषयों पर लिख रही हैं जिसमें राजनीति, सांप्रदायिकता, आपसी सामाजिक इकाइयों की टकराहटें, ये सब उनकी चिंता का केंद्र बिंदु बन रही हैं। शशि देशपांडे ने इस दौर में एक उपन्यास लिखा था, अ मैटर ऑफ टाइम, जहां से स्त्री अस्मिता और स्त्री इच्छा की बात को केंद्र में रखकर देखा जा सकता है। ठीक यहीं पर कृष्णा सोबती हमें याद आती हैं, जो कि मित्रो मरजानी लिख करके ये बता रही हैं कि स्त्री अपनी यौनिकता के लिए, यानी स्त्री अपनी यौनेच्छा के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है और जब वो अपनी यौनेच्छा की अभिव्यक्ति करती है, अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करती है, तो समाज और परिवार उसको किस तरह से मरजानी का खिताब देता है। इस्मत चुगताई की कहानी दिल्ली की सैर, जो कि रशीद जहां की तर्ज पर लिखी गई, और इसके साथ ही इसके ठीक बाद हमारे सामने रमणिका गुप्ता आती हैं, जो जिनके लेखन की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके लेखन पर यदि हम ध्यान दें तो वो बहुत मुखरता से अपनी यौनिकता की अभिव्यक्ति करने वाली स्त्री की वकालत करती हैं। इस दौर के बाद दिलो दानिश एक उपन्यास आता है कृष्णा सोबती का। दिलो दानिश एक ऐसा उपन्यास है जिसमें कि ढहती हुई सामंती व्यवस्था और उस व्यवस्था के भीतर अपनी जगह बनाती हुई स्त्री महक बानो के बारे में लिखा गया है। महक बानो, जिसे आप कॉन्क्यूबाइन कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एक वकील साहब उनका केस देखते हैं और उनके साथ उनके संबंध हो जाते हैं। उनका एक अंश मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। दिलो दानिश। महक ने वकील साहब को बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देखा जो वकील साहब कृपा साहब न हो, मिसल हो, बस्ता हो, मिसलों का गट्ठर हो। बोली, ना साहिब, कानून के मुताबिक जिसे कत्ल करार दिया जाए, भला आप क्यों वैसी वारदात में फंसने लगे? कत्ल तो हमारी अम्मी ने किया है, ना सही बात? खुद पर ही इल्जाम आ जाए, ऐसी ताकत और ऐसी बुद्धि किस काम की? ये जो व्यंग्य है वकील साहब पर, ये एक नए तरीके का चरित्र इस उपन्यास के माध्यम से कृष्णा सोबती उभारती हैं और वो ये बताती हैं कि बिना किसी शोर शराबे के,
जो आम जीवन की स्त्रियां हैं, वो आम जीवन की स्त्रियां किस तरह से अपनी यौनिकता के साथ पुरुष को अच्छी तरह समझते हुए उस पर व्यंग्य करने की ताकत कैसे वो अटेन कर रही हैं। ये इसके बाद एक दौर आया, ये दौर है आत्मगल्प का, जिसे हम ऑटो फिक्शन कहते हैं। जूलियन सर्ज डुब्रोवस्की ने अपने उपन्यास फिल्स में इसका जिक्र सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसको हम ऑटो फिक्शन कहते हैं। तमिल में चारू निवेदिता ने 0 डिग्री नाम का ये एक उपन्यास लिखा। ये चारू निवेदिता उनका एक तरह से निक नेम है, और उन्होंने ये बताया कि ये ऑटो फिक्शन है क्या। ध्यान देने की बात है कि पिछले 24-25 वर्षों में पूरे भारतीय परिदृश्य पर ये ऑटो फिक्शन लगभग हर भारतीय भाषा में लिखा जा रहा है। ये जो विधागत प्रयोग हैं, ये स्त्रियां सबसे ज्यादा कर रही हैं। हमारी समझ के लिए ऑटो फिक्शन है क्या? ऑटो फिक्शन है ऐसा फिक्शन जिसमें लेखक अपने चारों ओर अपने कुछ मित्रों को, जीवन के कुछ अहम अनुभवों को, उन अनुभवों की स्वानुभूति, मनन, मंथन करने के लिए या तो पत्र लिखता है या अपने बारे में बताता है। और इस तरह वह लेखक अपने जीवन के कई रहस्यों तक जाने के लिए रास्ते का पता बताता है या बताती है। वह लिखने की प्रक्रिया में फैसला सुनाने से अधिक उन किरदारों की ज़हनी रुग्णताओं की तह में जाने का प्रयास करता है जो वास्तविक समस्या को रिक्रिएट करते हैं। ये जो विधागत प्रयोग हैं, इनका एक और बहुत बढ़िया नमूना हमें तमिल और कुछ जगह हिंदी में भी दिखाई पड़ता है, जहां पर कि स्त्रियां लिख रही हैं ऑटोबायोग्राफी, लेकिन दरअसल वो है टेस्टिमोनियो। जैसे वामा फ्यूस्टीना मेरी नाम की एक स्त्री जो कि तमिल में लिखती हैं, उनकी आत्मकथा है करक्कू, लेकिन वे इस आत्मकथा को सामुदायिक कथा का नाम देती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये सिर्फ मेरी कथा नहीं है, बल्कि ये कथा है उन सब की जो मेरी तरह मेरे समुदाय में है। इसलिए ये जो आत्म से संवाद की जो प्रक्रिया चल रही थी, इस प्रक्रिया को बहुत तेजी मिलती है सन 90 के बाद। बड़े पैमाने पर प्रकाशकों का आना, और आप उसके बाद देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का आविर्भाव और प्रचार, इसने आम स्त्री को, साधारण कही जाने वाली स्त्री को आत्माभिव्यक्ति के बहुत सारे अवसर दिए। स्त्रियां ब्लॉग भी लिख रही हैं, स्त्रियां टेस्टिमोनीज भी लिख रही हैं, स्त्रियां यात्रा वृतांत भी लिख रही हैं और डायरी भी लिख रही हैं। आश्चर्य की बात है कि कई विधाओं का सम्मिलन और टकराहटें पूरे भारतीय परिदृश्य पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि कन्नड़ में आत्मकथा लेखन की पूरी परंपरा हमें दिखाई पड़ रही है, जो परंपरा फिल्म और रंगमंच से जुड़ी हुई अधिकांश स्त्रियों ने इस ऑटोबायोग्राफी को अपनी विधा के रूप में चुना है। इसी तरह हिंदी में बड़े पैमाने पर पिछले 3 साल में 7 आत्मकथाएं आई हैं दलित स्त्रियों की, जो कि पूरे परिदृश्य को बताने के लिए एक मुकम्मल ढांचा प्रस्तुत करती हैं कि एक स्त्री जो लिंग भेद की शिकार है, एक स्त्री जो कि जाति भेद की शिकार है,
और एक स्त्री जो यदि विकलांग है या उसको वो गरीब है या उसके पास और भी तरह की कोई असुविधा है, तो ये इन सब का जो इन सब का जो कह लीजिए कि अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति वो ऐसे कर रही है जिससे कि जेंडर की विभिन्न छवियां आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। जो परंपरागत अर्थ में जेंडर का विभेद था, जेंडर का विमर्श था, वो स्त्रियां इनको लेकर के इस पूरे जेंडर के विमर्श को बदलने में सक्षम है। इसके साथ ही भाषा, भाषा में आप ये देखिए कि बहुत सारे अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ये स्त्रियां कर रही हैं और वे अपनी आत्माभिव्यक्ति में गुरेज नहीं कर रही। जैसे आपको आपको ऐसी आत्मकथाएं मिलती हैं जो कि जिसे ना आप डायरी कह सकते हैं पूरी तरह से, ना आत्मकथा कह सकते हैं, ना ही संस्मरण कह सकते हैं, ना ही उपन्यास कह सकते हैं। लेकिन इन सबका मिला जुला रूप वे स्त्रियां अपने लेखन में प्रस्तुत कर रही हैं। इसका ये मतलब है कि नई से नई चुनौती और आत्माभिव्यक्ति के साथ साथ बढ़ते सामाजिक सरोकारों के अनुकूल भाषा को ग्रहण करना और उसे अभिव्यक्त करना इन स्त्रियों ने सीख लिया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन स्त्रियों को का लिखा हुआ गंभीरता से आलोचक पढ़ें और समूचे साहित्य इतिहास में इन स्त्रियों के वजूद को पहचाना जाए और साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए। धन्यवाद। Garima Srivastava, that was an excellent presentation. Thank you very much. You covered an enormous ground of modern writing all the way from 1970s to blog writing today and named some of my favorite writers. So, but nonetheless, some important points do come out of here, because as we move from the modern to the past, these issues will come up. One question that Garima handled beautifully is the switch from writing about domesticity. It's assumed that women will write about domesticity and motherhood and things like that. How the modern woman in many languages has broken out of that assumption. There's also an assumption that she will not be able to handle the new technology. She will not be able to play all kinds of uh, interesting and technical, what should I say, technical play with the language. And you have shown how beautifully the linguistic play is now available on our digital sites. And I think very significantly, we are getting literature from, uh, I don't want to call them marginal, I want to call them very powerful segments of women in society who write differently and whose experience is different, such as women from a Dalit background, such as women from transgender backgrounds, certain women who come from other neglected communities. They didn't have a voice or a publisher or an audience until perhaps modern times, when technology has made it possible for us to reach out. Thank you very much for that excellent presentation. And from that, we will move to women's writing in medieval Indian literature, and this is by Dr. M.S. Asha Devi. Of course, you've already been introduced to her excellent work. Look forward to your paper in about 20 minutes. Thank you. Namaskara. Okay. Friends, let me not make a presentation of history, because this is the age of rehistory. This is the age of rehistory, especially when it comes to women and Dalit. What do we mean by rehistory? When we say rehistory, it means you can't change the history, but you can definitely change your perspectives on history.
so that it will change the entire canvas of history. I have titled my paper as I'm the ultimate proof. I'm the ultimate parameter. In Kannada, one of our very important medieval poet, her name is Neelamma. She says this, Nane Pramano. I'm the ultimate proof. No one can question it. No one has to dictate it. Okay. And there is also a tagline for this paper that is a revolution within a revolution. A revolution within a revolution. Why I have titled this paper as Revolution Within a Revolution is whenever we talk about medieval women poets, we always try to place them as beneficiaries, mere beneficiaries. See, I'm not questioning or I'm not denying the coexistence, co-participation of men and women, but at the same time, I'm very sure that the women's writing, the women's movement in that medieval period has got the strength of its own, autonomous, independent revolutions structure. That is what I mean by rehistory. Let's begin with a very fundamental question of medieval movement. It says, bhakti, devotion is everything. And to become a devotee or to become a bhakta or a bhakte, we need to lose our ego, we need to shed our self, isn't it? Only then, that this is the first step to become a bhakta. But when it comes to women, where is the self and which self we need to surrender? No, women has been shattered in too many roles, in multiple roles. She plays the role of a mother, she plays the role of a daughter, daughter-in-law, so many other things, so many other roles. So patriarchy has got a role fixation when it comes to women. About all these roles, which role she should surrender to become a bhakta? In all these roles, there is no self when it comes to women. She's that, she's this, she's the other thing, but she's no self. No self when it comes to women. So, when it comes to men, it is a question of losing their identity, losing their aham, losing their self. But when it comes to women and Dalit, the first process was to gain an identity, to lose it. In order to lose it, we need to gain our identity. So it's a two-way process when it comes to women and Dalit in medieval literature. They involve themselves in two different processes. One is to gain and the other one is to lose. I can always, place this into concepts of avahana and visarjana. First one is to avahana. I have to invite, I have to create myself. And the second one is to lose that in order to become bhakta. So, my fundamental question is that when it comes to women, it's a totally different challenges they were facing in medieval period. Though they have got the support of men, it is the battle they have to fight on their own. On their own, they have got the moral support of the men, no doubt about it, but at the end of the day, it is their own battle to gain their identity. And this process itself makes, or this process itself, place these women writers in a different, totally different canvas altogether from that of men. So for the women of medieval period, it is not just the process of becoming bhakta, but it is also the process of becoming bhava. Both worlds were, existed for them. One is bhava and the other one is bhakta. Bhava processes, according to me, they try to gain their identity. It's a purely a worldly process, it's a socio-cultural process, it's a political battle they were fighting.
at the one end. On the other end, they try to become bhaktas also, that is unworldly or alaukika or bhakta or paramarthika sector. So, when it comes to contemporary world, I'm sure this first part of their battle, first part of their struggle, first part of their whole expression, their experiments, all those things, that makes sense to this contemporary world. We are in need of those aspects. Garima, my friend, she was talking about the modern women writers of India, but I tell you, I may look, I may sound little ambitious, but I'm sure, I'm convinced with that. These medieval women writers are the most modern writers. They are the most modern writers, and I have no doubts about it. Why they are the most modern? And I want to place it on record in this session that these medieval women writers are the torch bearers even to this day. They are the torch bearers for our contemporary world. At this juncture of contemporary world, we are trying to place, we are trying to focus on the fact that feminism is becoming a global epistemology. After socialism, after Marxism, after so many other theoretical positions, now it is the turn of feminism to lead the world, to lead the civilization. At this crucial juncture, I'm sure these medieval women writers paved the path. We look into them, we look forward to them, or look up to them as our torch bearers. Not only the fact that they try to gain women's identity, but also the way they try to gain and the kind of philosophical structures, philosophical positions they can create for themselves is not time bounded. Those theoretical positions or the practical methodology they try to implement in their own life are timeless. Even to this day, I feel they are the most relevant writers and their patterns of struggle. We have got just 20 minutes, so you can stop me after 20 minutes at any point of time, because I have my full length written paper here. I'm sure they have circulated this paper to you people. I will stop it after 20 minutes. Please just give us the main points. I don't want to stop you. Yeah, I'll do that. I'll try to do that. Yeah, I'll try to do that. So let me read out certain important points so that I can cover up everything. This issue was totally different from the challenges facing by men. The way women face these challenges philosophically and practically, their gains and losses, and the very process placed them in a different canvas altogether. And this canvas is the most relevant, important factor. Okay. The cult of devotion put forth a potent possibility before women who ever confronted the duality of choice from which role their search for identity was to begin, with their multiple roles and dynamism from one role to another due to the changing of roles. They don't know where to stop, where to begin, because her character itself, her personality was totally fragmented. One of our Kannada women poet from medieval period, she exclaims, after the touch of enlightenment, after the touch of enlightenment, everything was changed. Everything was changed for me and to the world as well. She says, vestiges should be erased to realize. Vestiges should be erased to realize. She tries to, avoid, she tries to escape, she tries to, you know, mm, give it a final goodbye to all the marks, all the female marks, which was imposed on her by patriarchy. There were only two roles assigned to women. One is that of Madhubanda,
and the other one is of Tanu Vistara. Madhubanda is, her whole body is there to give, not to receive. That is Madhubanda when it comes to her sexuality. And Tanu Vistare, when we say Tanu Vistare, she need to give birth to children so that she can expand her body and she can give birth to child. These are the only two duties, only two roles assigned to women. But the women of medieval period, they try to give away these kind of imposed personality marks. They try to go far away from all those things. The effort made by the women of the medieval period to liberate women from the established star jacket may be perceived also as an odyssey towards deliverance. It's a odyssey, it's a Mahaprayana. The medieval women, they started a Mahaprayana towards liberation. It's a Mahaprayana towards, what can I say, from Bahishkara to Svikara. Her body was a mere parikara, it was a mere instrument. But whereas in medieval period, they try to look at the body of the women as a receiving source, as a akara. From parikara to akara, they made a journey. They worked out this historical revolution from three elements. This is a broad classification. I'm sure we can go into all other details, but broadly, I have classified three elements. I have recognized three elements through which they try to create a self. They try to create a self of women. First is the element of body. Second one is the element of nature, and the third one is the element of language. The effort of Akka, Andal, Akka means Akka Mahadevi from Karnataka, Andal from Tamil Nadu, Meera, as you know, from Rajasthan, and Lalla from Kashmir. The efforts of Akka, Andal, Meera, and Lalla and others appears to be an extraordinary attempt to construct the body language into women's language. When I say body language, it's not in modern terms body language. No, it is the language of women. The language of personality I'm talking about. The affliction caused by the body, it's shaking them, that appear to be an endless excitement and celebration, encountering them as wanted and unwanted, should not be viewed merely as the inevitable moments in the process of becoming devotees. It should be perceived also as an ideology and as the treatise of offering body language to resist patriarchy and as a movement to shatter gender politics and to demolish the pyramid of hierarchy. It's become it became a self exploration as well. Their body itself turned out to be an issue of excitement. The intensity of their perception of their body is evident in the sensual symbols used by them. I do admit that this cannot be generalized and it does not apply to all. They narrate their body as an integral part of eternal nature, also to the fact that they had a maiden opportunity to speak in a soliloquy about themselves. A few among them reach their mystical path through the exploration of their body, and this appears to be an exciting journey not merely in women's discourse but in the larger exploration of human civilization. If the dynamism of male mystics is from the perspective that liberation from the body and sexuality is the ultimate route to the realization of God to Daiva Sakshatkara, Meera, Andal, Akka, and Lalla seem to be longing for Daiva Sakshatkara in the very intensity of the exploration of the body and to win both worldly and otherworldly simultaneously. See, this makes them categorically different from men writers of medieval period. They try to reject body, they try to reject family, they try to reject everything else, men, whereas women, they try to include everything. Their basic quality, their basic nature is inclusiveness. The body treatise of these female mystics is interesting for another reason as well.
The pictures of struggling for liberation from the bondage of the body or rejecting and deploring the body are very few among these. They tread the heroic path of taming the body. They never rejected body, but they try to tame the body. The body treatise has cultural and political significance too. While calling it a movement, they are apparently proposing social issues to undergo change as part of the objectives of the movement. These are not to be viewed as precise base of a concrete movement, but as the footsteps of the abstract movement women have been conducting from time immemorial. The nakedness of many of those strikes to be distinct even today. We have maintained a safe distance by securing them under the blanket of devotion or bhakti. But actually, these symbolize the extreme constraints faced by these women in their lonely struggle against the world or the patriarchy. The anxieties confronted by them must have been ferocious, considering the dignity with which those women encountered the challenges, and it is hard even today to imagine such a possibility despite our faith that they had a conductive environment. Akka Mahadevi says, what does she who, shameless, wearing Lord Mallikarjuna's dan, oh to dress and clothes crazy. Such position and words can emerge only in the presence of extraordinary spiritual strength. In many of the poems of these women, we see the description of the beauty of her body, vigor, its mysterious spots, the joy it may yield to men as well as to herself, natural love, pride, obsession, anxiety for this body, an abode of such joy. The dilemma as to whether it should be shed in the process of devotion or to attain ecstasy through it. They yearn for companionship that can erase, that can care her gently, can sense her and give her while receiving from her, instead of the rude male ego that uses her for a rapturous moment to push her aside after the use. Lalla says in one of her poems, breath and soul, that's all I have learned. Breath and soul, that's all I have learned. Worship your body. Worship your body. It seems like nothing, a body in worship. That's no way to bliss, but it gave me a taste for saying, I am He. I am He. I gave myself to Him, body and soul, become a bell that the clear note of Him rang through. Thoughts fixed on Him, I flew through the sky and unlocked the mysteries of heaven and hell. This is also from Andal. Sorry, from Lalla. Let me quote a poem from Andal. O Kama, O Kama, look, I have shown on that wall your ancestry and flags of fish, horse, women, and white fly whisks, and a bow made of sugar cane. From childhood, I have dedicated my surging breasts, ever fond of him, to the Lord of Dwaraka alone. Join my destiny quickly with him. Join my destiny quickly with him. This aspect of seldom seen among male mystics. They do not have inevitability to consider their body and sexuality anew. There is, after all, a journey towards losing it. This dual dimension of gaining and losing places these female mystics in an entirely distinct context. Yeah. You want me to sum up? Okay. You can read out my paper. There are two other elements, element of nature and element of, what is that, language, which I consider is the most important factor. But let me stop here. But at the end, let me quote one important thing, that is their perspectives on family, their perspectives on marriage is totally different from that of men. But in contrast to this, it may be observed that the women mystics try to insistently extend their concept and circumference of family and realize this very pursuit and journey to be the path of God realization. They wish to embrace and involve the whole world as a family. Vishwa Samsara and Samsara Vishwa. Earlier we used to say when it comes to women, it is Samsara Vishwa.
Samsara is a world for them. But in this medieval period, they try to embrace the world as their samsara. It is Vishwa Samsara. Okay, at the end, so let me repeat, at a time when we trust that the occasion of presenting feminism as a universal ideology has arrived, we bow with reverence to those female pioneers who commenced the construction of that discourse. Thank you. Thank you very much, Asha Devi. That was a fascinating paper, and I'm sure we will read all of it and be enriched by it. But one of the very, very promising paradigms that has emerged is the difference between the medieval and the modern. You've drawn it at the line of the Bhakta women poets, and how these women poets actually gave up the household, gave up the assumptions of a patriarchal setup and moved away. And they used their body as a mode of protest. And that creates, in between these two papers, a certain kind of a dialogic, which is very, very fascinating. Because the modern women have tried to integrate this and saying, why should we give up anything? Right? So, with that, let's move to the third paper. And this is by Jaya Shah, and it's called Women Writing in Ancient Indian Literature. देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य. Respected and honorable chairperson of this very distinguished panel and my distinguished panelists, I can't thank enough Sahitya Academy for giving me this opportunity to share this podium with you. It's more than it's there are many reasons for this, because you as a student and ideas. The ideas that you churn in your mind, you feel an urge to share those ideas with people who lived a considerable period of time uh, with those ideas. So it's like, I don't know why this analogy came in my mind, but it is like Sita, coming to the hermit of Anasuya and sharing her feelings with a co-sisterhood of a shared co-sisterhood. So in the present paper, an effort has been made to peep into the world of female authors and poets who are also makers of ancient Indian literature, with an analysis of texts available in old Indo-Aryan language, that is the Vedic literature. I thought initially to incorporate the classical Sanskrit literature and the Prakrit literature as well. But then when I started writing, the the material that I was dealing with the Vedic period was so overwhelming that I thought to give up that idea and be specific to the Vedic period. And thank you for moving this journey from present to past, because though my job has been made easier, because those issues, the first panelist came out as the the tension between the domestic and the public life of women, and and the and the medieval period of women, how they addressed that. Actually, some of I will share, the same language which ma'am has shared. The experiences are same, but yes, there are very important difference, because as ma'am said, that perhaps this ancient woman, they hold on an idea that where the home and the domestic life played a very central role to their identity, and they were not ready to give that up. And
I don't know whether it is the feminist interpretation that that inspired ma'am to think it differently, but I will differ with her. As per my experience of dealing the material of the ancient Indian literature. So let me read some of the passages of my writing. The amount of available women's writings can be assumed as far less than what have been now lost. The reasons are more than one. First, it was, and it is true for our time as well, that men are the keepers of the institution of writing. Women either don't feel empowered or perhaps don't feel interested to participate in. An important part of ancient literature available to us is formal, methodical, or scientific in nature, and hence reflects the preference of men in its creation and preservation. The oldest specimen of ancient Indian literature available to us has been written by ascetic monks for ascetic monks only. The Vedas are primarily philosophical and religious texts. Though women's participation as seers and poets, their agency and identity as reflected in the literature are unique and unparalleled in the world, yet it is undeniable that this is not the genre of women's forte, or a genre that interested the women authors widely. There are some internal evidences which indicate that the feminine idea of an aesthetic life or life and moral values in general perhaps differed from their male counterpart. In fact, the departure of women and refusal from participating in a world essentially created by men, both materially and linguistically, is a recurring theme of female authors that pops up throughout Indian literature till very recently. As a result, it will not be unrealistic to assume that majority of women's compositions, which were created for co-women or for children, their all-time favorite and faithful listeners, could not travel the vast timeline of a few millenniums and reach their descendants. Yet, women's representations in Vedic literature is of paramount importance as it still preserves some extraordinary evidences of women's authority and acceptance in the world of philosophy and thought. It is also no less important a source to understand early feminine contours of ideals and choices, their influences and social ecology, which blossomed in later period in full glory because the literature, though intellectual in nature, is not disconnected to common people. That is why it is a discerning fact that on some pretext or the other, the woman's voice, consciously included or unconsciously, surface up. There is no denying of the fact that in Vedic period there were no dearth of educated women who were also composers of poetic and philosophical literature. Panini talked about female educators as acharyas and upadhyayas. Patanjali mentioned the names of Apishala and Audhamedha, who were grammarians, and Kashika, commentators mentioning one Kashakritsna Brahmani as inceptor of a school of grammarians. Nothing about their works could, however, be known. Apart from the two female philosophers, Gargi and Maitreyi, to whom we will return shortly, other names of women philosophers can also be found mentioned in Vedic literature. In Aitareya Brahmana, we find a woman named as Kumari, a trained priest and knower of ritualistic affairs of the Aryans, to whom the priests went with a difficult question related to ritualistic performances after mutual disagreement and accepted her solution. In the context of the in this context, the name of Vishwavara may be mentioned, who is the seer of the 28th Shukta of the 5th Mandala of Rigveda and asserts her name within the mantra. Her description of dawn, of morning rays of celestial fire, that is sun, and her procession with fire pot towards the east evokes a deeply moving feeling. In Brihadaranyaka Upanishad, we find a list. In Brihad Devata, we find a list, and in Arshanukramani, one comes across names of no less than 27 female seers from the Rig Veda who were the seers of different themes. But I will not take my time in reading those names because I have important things to say here. It is evident from women's compositions that relationships remain the central theme.
If we take the composition of Ghosha, for instance, who is a prominent seer and has composed devotional passages in melodious tongue for Ashwins, what we see is her longing for social acceptance, her desire for marriage and family, which she could not gain because of her skin disease. Her composition is a direct dialogue with the gods and is filled with true poetic strength in delineating her pathos. The same is with Apala, who is the seer of the 91st Shukta of the 8th Mandala. She is rejected by her husband because of excessive hair in her skin. And with the blessings of Indra, she frees herself from that, quote unquote disease and reunites with her husband. While in Ghosha we hear the pronounced desire of a lady to be united with a male, in Apala we see the desire to transform into an attractive woman for the male gaze and also her desire for fertility. At the same time, we see Indra purifying not only her body but her soul and takes Soma, the symbol of deathlessness from her. The hymn of Apala are must not be read only in the material sense, but the spiritual symbolism included in her austerity and her journey towards pure knowledge can also be read in this hymn. The Lopamudra Agastha dialogue of Rigveda is particularly interesting in this regard. Here in the 179th Sukta of the first mandala, she encourages her husband Agastha to give up the life of a hermit and seduces him towards her. She says, "Many years have I been serving you delightfully, both day and night, and through mornings, bringing me an old age. Decay now impairs the beauty of my body. What therefore is now? Let husbands approach their wife. Samunu patnyur vrishabhir jagamyu." Her earnest desire of intimacy may not be interpreted as only seductive, but is loaded with assertion and sensuality of feminine sexuality, which opens a dialogue with the male who ignores it. She pictures the place of woman and her role in a female dominated ecology, which finds resemblance even this day. This hymn is important for many different reasons, as it also opens a debate between men's idea of renunciation, which abandons the world and the worldly responsibilities, and female idea of renunciation, which embraces the body feminine, the sexuality, the world and its enjoyments, and yet accomplishes the same truth at the end. Lopamudra is a very prominent figure of Tantra who co authored Lalita Sahasranama, and perhaps the philosophy of divinity in feminine sexuality and the path of Prabritti of Tantra have its seeds in this dialogue that Lopamudra initiates with her husband. Here, her erotic desire is expressed with ease. Nadasya ma rudhatah kama aganita ajato amutah kutaschit. Desire, either from this cause or from there, has come upon me whilst engaged in prayer and suppression of passion. Let Lopamudra approach her husband. The unsteady feminine embraces the firm and resolute man. The language, which is not less than 4,000 years before our time, shows a profound measure and expertise in choosing words for expressing erotica. That the playful, creative energy of the cosmos is essentially feminine in nature and is one with the masculine energy, which is restful and witness, and together makes the ultimate truth of Brahman, is pronounced by a woman seer, Bagambrini, in the famous Vaksukta of the 10th mandala of the Rig Veda. This is the first such pronunciation in the Veda where the meditator attains the state of Brahman and composes a hymn from that level of deep consciousness. It can be a matter of debate whether Bagambrini is a historical person or personification of speech or not, but that the Veda as a text shows a female as a seer and poet of this stunning composition, which later on becomes the foundation of the philosophy of Shakta Tantra, is significant in many sense. Ahameva swayam idam vadami jushtam devebhi rutamanushebi yang kamaye tang tamugram tang brahmanam tam rishing tam sumedham. One may note the presence of the word kama here, which is said to be the cause of the cosmos in the Veda elsewhere. This word occurs in Lopamudra's dialogue as well. One may also note the hymn of Yami, which is a very early period and talks about an incestuous taboo of sexual relationship between siblings. While the hymn reaffirms the prohibition,
Yet, the innocence and intensity of sexual desire, which is asserted in this hymn, speaks about a time when it was not considered a sin or shame for women to express their sexuality. The Catholicity of the compiler of the Rig Veda in including this potentially slanderous composition also speaks volume of their liberal sensibilities. On the other hand, assertion of feminine sexuality, fertility, and the idea of feminine all seem united in the idea of female in the Vedic mind. These compositions together, if analyzed carefully, display a strong similarity with folk love songs of many of Indian languages. The innocence and vulgarity are elements that are common in folk domain of women's compositions. These songs have reminiscence still in the love songs, marriage songs, which are probably known as ladies' Sangeet in northern India. The playful, sexually free, innocent early woman gave way to a more refined, responsible, and domestic lot who desired to make homes, motherhood, and embrace motherhood and become queens of their home in the Rig Veda itself. The 10th sukta of the 10th mandala, seen by Surya, must be mentioned here. This is a famous marriage song where not only we get vivid description of early Vedic marriages, the rituals and symbolism, but also see the ideal of a household from the perspective of woman in a more patriarchal setup. She desires to be mother of sons and queen of her in-laws' house. She's taken to her husband's place with gifts. The opening of the hymn unfolds, however, the opening of the hymn unfolds a highly spiritual statement. It is truth that upholds the earth, sun, the sky, and laws uphold the Adityas in the sky, and Soma is seated under these influences. This mantra reminds us the first mantra of Prithvi Sukta of Atharva Veda, where earth is worshipped as the mother. This hymn with 47 couplets is probably a very popular marriage song which could make a place even in the rituals of marriage and sets an ideal for women which is far away from men's ideal and purpose but are smeared with wisdom and simplicity. Blessings and advices of older maidens to a newly wedded girl forms the body of the couplets, which seem so near to our time that the gap of a few thousand years vanishes in between. It if we come to the period of the Upanishads, in more philosophical writings, the Brahmavadinis show a deep understanding of spirituality and the purpose of human life, which rejects material well being and embraces pain and patience as fundamental to woman's life and journey. We can see many names of sadhikas, sannyasinis, philosophers who remained single and engaged in philosophical and spiritual accomplishments. In Mahabharata, we get to know about Sulabha, with whom Janaka had a long conversation on Yoga Shastra. Uh, Yagyavalka and Gargi Samvad, I have given some thought over it. Yagyavalka silences the method of reasoning and inference. Gargi was making an inquiry about the nature of the universe, and her method was like rational. So she was trying to infer. So Yagyavalka answered him for some time, and at the end he stops her. Yagyavalka silences the method of reasoning and inference in the quest of truth which Gargi adopted. As to him, Brahman is not an object to reason about, but only to be known through realization. This silencing of Gargi can be taken apparently as a male voice overpowering the female, but perhaps there is more metaphor lying in it. Gargi represents an epistemological position where inference is the central method of inquiry. In Yagyavalka Maitreyi dialogue as well, Maitreyi asks questions which are answered by Yagyavalka, to which the central theme is realization of the transitional nature of the experienced reality. Maitreyi here is put in opposite with the other wife of Yagyavalka, who is Katyayani, who perhaps represents a woman deeply attached to worldly affairs. This dichotomy is interesting. As we have seen, spirited women in the early Vedic stage were highly assertive and also deeply argumentative about the prabritti marga, about desiring in life,
a life full of material abundance. Maitreyi is a vivid contrast to this early woman seers on the one and on the other hand shows the futility who on the other hand shows the futility and transient nature of the world and advocates a nivritti marga. In later period, we can witness these two paths developed in two different streams of Vedic and Tantric philosophy. In both these two systems, however, we come across powerful women who spoke and philosophized matters. However, still there is no denying of the fact that it is the Tantra which could accommodate woman along with all her innate tones of sexuality far more flexibly than the Nigama tradition where women are largely remained in the margin. The apparent contradiction of Prabhritti and Nivritti finds a vivid place in the dialogues of Shikhidwaja and Chudala, which is there in the Yoga Vashishta chapter 11. Chudala is a princess of extraordinary physical charm, attained the position of a Jivan Mukta by her sadhana and wisdom with the knowledge of the scriptures, despite remaining within a marriage and fulfilling all her marital duties. She philosophizes the idea of Tantric Advaitavada and teaches Shikhidwaja, who is shown in that context as distracted by the material glory of the transitional world. Chudala says, quote unquote, having abandoned this universe, which is both Rupa and Arupa, I attended the mighty and the incomparable one, which survives the destruction of all things in the universe. Hence, the radiant Tejas is in my body. One important thing is Tejas is always, many times have been uh, a word used with the same meaning of calm in the and birya in the yes ma'am. This debate of prabhritti and nivritti, or this debate that whether a woman can be a householder, whether a householder while performing her duties can he or she uh, whether she can attain that highest liberation or not. So woman not only in many times this debate was recurring, and every time women took a strong position in favor that woman is a living example. The woman, the feminine, the Indian feminine, is a living example of this, that yes, that can be attained. So in the Vyadha Gita, you come across with a woman who never studied any scriptures. She was attaining her ailing husband, and then she attains Brahma Jnana, and then later teaches Kaushika of all of Brahma Jnana. And then you come with Sulabha and yes, ma'am, Sulabha and Janaka dialogue, which also reinforces this idea. So yes, the narrowness of women's writings, their home and family, it's almost always tiring, and uh, but uh, but I think in Mahabharata at least there are heroic tales of war and things, but women always kept their focus on the inner world of their listeners and then themselves, and the conflicts of women's life in their home were no less important or serious than the wars and other things. So there were people who talked about wars, but where are those who talked about the struggle of women in their home? So they have spoken throughout the ages, but where do we have that ear to listen to them? That's the question. Thank you. Wonderful. Thank you very much for a very informative paper and very well argued. And I want to sort of link the three papers in a minute or two to refer to Asha Devi's term where she talked about her story, the rehistory. She talked about rehistory, and that is what this particular session has done. It is rehistoricized by visiting a very large range of women's writing
And whereas the modern period showed how women have gone into, whether we call it infiltration or invading or capturing, it depends on whatever vocabulary we want, as we heard from Garima, that women are writing about every subject and are available in every form. Here we had from Jay the information about how much of the writing by women or the pronouncements of women are lost. And it's scholars like you who are working very hard to bring it back. Why it was lost is partly, as you rightly said, that the document keepers and the memory keepers were male. And second is also because so much of it was oral history. So when we are talking about rehistory, how do we regain material that is orally lost? And if we go into the chants and the mantras that have come to us through the patriarchal tradition, then once again the woman is left out. So I think this has been a absolutely wonderful session in opening up the area, and I'm glad that we have 15 minutes for questions from the floor. Please, I would request you to keep them brief so that everybody gets a chance to answer it briefly and we get lots of voices into the polyphony that women's writing, women's studies has always promoted. Please go ahead. There's a mic going around and I'm sure there are questions. How can you not have questions? Come on, go ahead. Let's pass the mic around. Yes, please. There's a question here. You want to take one of these? But then we have only one. Battery नहीं थी लगा। अच्छा तब तक दे दीजिए इनको। कौन पूछ रहा है question? Would you like to ask any questions of each other? Go ahead. Let me frame those. So as you said now, that is the way. I'm not comfortable. Achha. But then they can't hear you. Please. Yes. Ma'am, as you say that modern women writers, they No, loudly. Modern female writers, they are questioning this their gender role of even in the sphere of writing, where they were confined on writing on domestic issues, on family, and now they have become a lot more ambitious in writing in different other areas. So do you think that the confinement, do you really think that it was a confinement when women were writing on issues of private and intimate issues and not in public life? Was it an imposed boundary, or do you think that there were some agency of women also? Yeah. Do you think so? हाँ, धन्यवाद आपने ये सवाल पूछा और इससे मुझे उन मुद्दों पर बात करने की सुविधा मिल गई जो मुद्दे छूट गए थे। जैसे जो आपने पूछा इसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगी कि सन 1882 1882 में एक किताब आई जिसे कि हिंदी की पहली आत्मकथा कहा गया, सीमंतनी उपदेश। सीमंतनी उपदेश की भूमिका में लेखिका के नाम के बजाय वहां पर लिखा था एक अज्ञात हिंदू औरत, और बहुत सालों तक इसकी खोज नहीं की गई कि वो एक स्त्री जिसने ये किताब लिखी उसने अपने नाम के आगे एक अज्ञात हिंदू औरत लिखना क्यों चाहा, क्या वो लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, और इसके बारे में तरह तरह के कयास लगाए गए।
डॉक्टर धर्मवीर ने इसको एडिट किया, मतलब 21वीं शताब्दी में ही, और उन्होंने एडिट करके ये बताया कि ये किन्हीं राजेंद्र बाला घोष की किताब थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि दरअसल ये किताब किसी पुरुष ने लिखी थी और वो स्त्रियों के बारे में इतना बोल्ड लेखन अगर करते तो लोग उन पर डाउट करते, इसलिए किसी पुरुष की लिखी हुई थी। बहुत सालों के बाद अभी हाल फिलहाल में ये पता चला उस किताब की भाषा शैली से कि ये किताब श्रीमती हरदेवी रोशनलाल ने लिखी थी, जो कि लाहौर से लंदन जाने वाली पहली स्त्री थी, पढ़ने के लिए लंदन जाने वाली पहली स्त्री थी, जो कि 1886-87 के दौरान वो लंदन गई थी और उसने अपने 2 ट्रैवलॉग भी लिखे थे। लेकिन वो 2 ट्रैवलॉग हमें मिलते भी नहीं थे और उसके बारे में चर्चा भी नहीं की जाती थी। भाषा को देख करके ये हमने अंदाजा लगाया कि ये दरअसल उस स्त्री की कृति है जिस स्त्री पर पितृसत्तात्मक दबावों के कारण उनके पिता नहीं चाहते थे, और उनके पिता एक आर्किटेक्ट थे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं चाहा कि ये किताब उनकी बेटी के नाम से छपे। और इतनी महत्वपूर्ण किताब, सीमंतनी उपदेश जैसी महत्वपूर्ण किताब, जिसमें उन स्त्रियों का आह्वान किया गया जो अशिक्षित रह जाती हैं, उनको कहा गया कि तुम जहालत में मत फंसो, सिर्फ गहने, कपड़े और आपसी चुगलखोरी और एक दूसरे का नुकसान करना, इन पर मत सोचो, बल्कि तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए। इस बात का आह्वान करती है पूरी किताब, और ये पूरी किताब हमारे सामने जब आती है तब हम उसकी लेखिका के बारे में जानना चाहते हैं या जानना पसंद करते हैं। ऐसे न जाने कितनी लेखिकाएं हैं जो अपने नाम से नहीं छपी। हाल के जितने शोध हुए और अध्ययन हुए, उनमें लगभग 126 ऐसी कवयित्रियां मिली जो कि रीतिकाल के दौरान लिखती थी। उनमें से अधिकांश वो कवयित्रियां हैं जो कि लगातार लिख रही थी, लेकिन उनके लिखने का पैटर्न बिल्कुल पुरुषों जैसा है। पुरुष जिन मुद्दों पर लिखते थे, जैसे दरबारी कविता लिखते थे, प्रेम की कविता लिखते थे, राधा कृष्ण के संयोग श्रृंगार की कविताएं लिखते थे, उन मुद्दों पर वो कविताएं लिखती हैं। यानी कि वे ऐसी कविताएं लिखना चाहती हैं जो उनके उनके पुरुषों ने जिस पैटर्न की कविताएं उनको सिखाई हैं। इसी तरह से कई मुसलमान औरतें ऐसी हैं जो कि जिसमें नवाब फैजुन्निसा का नाम आता है, जिन्होंने बंगला में पयर छंद का पहला उपन्यास लिखा, रूप जलाल। और रूप जलाल की भूमिका में उन्होंने बताया कि ये जो उपन्यास है ये आत्मकथात्मक है, और उपन्यास में उन्होंने अपना पूरा जीवन बताते हुए भी अंत में एक स्त्री किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करती है अपने पति के साथ, उसकी उसकी दूसरी पत्नी के साथ, ये दिखाया। जबकि वास्तविक जीवन में नवाब फैजुन्निसा बेगम वो थी जिसने बंगाल में फैजुन लाइब्रेरी की स्थापना की थी, और उसने छपने के लिए कि उसको उसके लेख छपें, इसलिए उसने ईश वंदना की थी। तो एक ये तरह की स्ट्रेटजी भी स्त्रियां अपना रही थी कि वो ऐसी चीजें लिखें जिनको समाज में एक्सेप्टेंस मिले, नहीं तो उनको प्रकाशक नहीं मिलते। थैंक यू। थैंक यू, दैट्स वेरी वेरी यूजफुल। आप कुछ पूछिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोर? हाँ प्लीज, यू गेटिंग माइक देयर। मैम, मेरा गरिमा मैम से सवाल है कि कुछ पुरुष आलोचकों का ये मानना है कि जो रमिका गुप्ता जी का जो लेखन है वो बेसिकली वो समाज को कुछ दे नहीं रहा है, वो इंटरटेनमेंट करने के लिए लिखा जा रहा है। तो जो यौनी अभिव्यक्ति की जो सवाल अभी मैम ने अपने वक्तव्य के दौरान दिया, या कितना उनके द्वारा जो आक्षेप लगाया जा रहा है या उनके द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है, ये कितना तर्कसंगत है, एज अ यूथ में पूछना चाह रहा हूँ। रमणिका गुप्ता ने आप हुदरी लिखी, और उन्होंने हाथ से भी आत्मकथा लिखी। और उस देखिए, आत्मकथा में
जो स्त्री है उसका स्टैंड पॉइंट ये है कि बरसों से उन्हें बोलने को नहीं दी छूट नहीं दी जा रही। ऐसे में वे जो लिखें उसी को सच माना जाए। जब मैं आत्मकथाओं पर काम कर रही थी तो मैंने हिंदी की आत्मकथाओं को के विश्लेषण को उस अपने शोध से अलग रखा, क्योंकि मैनेजर पांडे ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हिंदुस्तान में खासकर हिंदी पट्टी में स्त्रियों ने आत्मकथा क्यों नहीं लिखी और आत्मकथा लेखन इतना कम क्यों हुआ। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि आत्मकथा इसलिए कम लिखी गई कि स्त्रियों को सच बोलने दिया नहीं जाता और पुरुषों को सच बोलने की आदत नहीं है। हाँ जी बोलिए। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी मैम ने बताया कि री हिस्ट्री की बात की जा रही है, तो जब जी मैम, तो जब री हिस्ट्री की बात की जा रही है तो जब स्त्रीवादी इतिहास लेखन किया जाएगा तो हम देखते हैं कि हमारे पास जब भक्ति मूवमेंट के बाद ही हम देखते हैं कि कुछ स्त्रियां मतलब जैसे अंडाल मिलती हैं, दक्षिण में महादेवी मिलती हैं, मीरा मिलती हैं। तो भक्ति काल के बाद से तो दिखता है कि हाँ स्त्रियां मतलब आगे आके या फिर भक्ति मूवमेंट से लेके कुछ मिल मिल रहे हैं, उनके लेखन है, तो उसके हिसाब से हमें समाज में उन स्त्रियों का स्थान पता चल रहा है। मैम समझ पा रही हैं आप? या तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उसके उस भक्ति काल के पहले से अगर हम देखें वैदिक पीरियड में, तो हमारे पास मतलब गार्गी जैसी लोपामुद्रा घोषा, तो अगर हम वैदिक पीरियड में जाएं तो गार्गी लोपामुद्रा घोषा जो भी स्त्रियां हैं उनके आधार पे देखा जाए तो वो एक एलिट क्लास से आती थी, अगर हम उनको आधार बनाएंगे इतिहास लेखन का अपने तो। जबकि हमारे पास जो और स्त्रियों को मिलना चाहिए मतलब और समाज के और भी जो स्त्रियां थी वो उनके आधार पे कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है। तो अगर इतिहास लिखा जाएगा तो वो बेस क्या होगा, यही प्रश्न है। Huh. When I say rehistory, I said we need to change the perspectives on history. Okay, you were talking about elite women of Vedic period. Okay, in medieval period, we have got writers from all sorts of classes. You know, irrespective of caste and class, those women, no, they have written it. Hmm? Yeah, that's why the thing is, we need to look at them with new perspectives, isn't it? It is in that age, they could speak about their body, about their sexuality, about their feelings, about their identity. So, in rehistory, we are not looking at them only as bhaktas, we are looking at them as revolutionaries. No, it's a struggle for identity, and that struggle for identity is still going on even to this day. That's why we are connecting with them, isn't it? This is what I mean by rehistory. So thank you very much to all the panelists. It's been a very enriching session. The couple of points that we are taking away from here is the need for rehistoricizing the women in their context, the need for research in ancient Indian writing, the requirement of going back to medieval literature in order to look at the meaning of bhakt and what has been left out and why it has been left out and denied. And you're quite right in talking about the autobiography of women. Why did women not write enough autobiographies, or why did they adopt pseudonyms, or why did they pretend to be rather generic, like written by a Hindu woman, rather than give their names? And let us say here, because I see many members in the audience from other departments also, that this is not only peculiar to the history of Indian women's writing, it's also what has happened to women's writing all over the world, that women have been encouraged to suppress their identity rather than bring it out. And today, thanks to the proliferation of women's studies programs and women's literature courses, that veil is being removed. And as we dig deeper, we are finding the resources and the research that all of you have presented today to the advantage of not only the university scholars, but for the general public. And it is very important that the message that women have a history, identity, voice, conviction, a world outside domesticity, all of this has to spread to the
ordinary collective reader. It cannot stay within university research, PhD, etc. So with that kind of a summarizing, which I hope is acceptable to all my three wonderful panelists and to this very attentive audience here, let's go ahead and say give all our good wishes to Stri Shakti. Thank you so much for such an enriching session. Your perspectives have shed light on the rich and diverse voices of women writers, highlighting their influence on literary traditions and cultural narratives. So, our heartfelt gratitude to our esteemed chair, Malashri Lalji, and Garimaji, Joy, and Asha Devi ji for their insightful presentations on women's contributions to Indian literature across different periods and languages. With that, we also would like to thank all the members of audience for partaking in this session. And tomorrow is the third and the concluding day of our national seminar on Indian literary traditions, heritage, and evolution. So we begin at 10 in the morning. Do join us for the same. Thank you so much. Thank you. I'll ask them to.